I'll tell you. See, when usually we are used to meditating in a sitting posture, and we enjoy the meditation, we feel at the end of the meditation, feel love, joy. But जैसे ही हम ध्यान करके वापस उठते हैं, the moment you get up from meditation, you go back to the world around you, right? And whichever is the world around you, your same house, family, office, work environment, traffic jam, whatever, it pushes the same emotional buttons. We have an emotional attachment to everything, we are uh, emotionally connected with everything around you, even the objects, right? So when you go back to the same environment, most of the times we go back, we again lose our alignment. We again, it pushes the same emotional buttons and we go back to our past. है ना? वही लोग को देखते हैं, वही वही जगह रहते हैं, वही लोगों से, वही चीजों से, वही काम करते हैं, तो वापस से we go back to our past. So the thing is, how do we maintain that alignment throughout the day, right? Even while walking, even while the eyes wide awake. नहीं तो होता क्या है, सुबह ध्यान बहुत अच्छे से होता है, हम पटरी पे चढ़ते हैं, शाम आते आते वापस पटरी से उतर जाते हैं. सुबह ध्यान वापस नेक्स्ट डे अच्छा होता है, फिर शाम आते आते पटरी से उतर जाते हैं. But what is important is how to maintain that alignment, how to maintain that awareness throughout the day, right? So this meditation is a practice to how even in the walking stage, even with the wide opens, we can be aligned with the vision of our future. कि क्या हम हमारा क्या पर्पस है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, right? So this meditation is the name of the meditation is mindfulness walking meditation. So every walk is mindful. You're aware of every step, every walk. You're walking with feelingly, walk feelingly, right? Every walk, you're listening to the guidance and you are trying to imbibe that emotion, right? So this is also a very mindful walk, a very emotional walk, right? With full of emotions, right? So you have to embody the one you want to become in future, है ना? So this is a mindful walking meditation, your date with destiny, right? So this is like your date with your destiny. आपके भाग्य से आपकी भेंट होने वाली है. Right? This is your meeting, your future. So there'll be five. So this is why, and once you know this, then you understand after the end of the walk, you'll know कि yes, अरे walking ऐसे भी हो सकता है क्या? Even with eyes open, can we be aligned with the vision of future? Can we be aware of who we really are, right? What our true nature is, what our true self is. So there are 5 steps to this meditation. First, we'll do brain coherence, heart coherence, sitting here. यहीं बैठे बैठे करना है. During the meditation, I may say you may stand up now, but don't stand up right now. During the first 18 minutes, हम brain coherence, heart coherence करेंगे. Exactly what we did yesterday. है ना? तो वो बैठे बैठे करेंगे. और उसके बाद then I'll tell you now, slowly open your eyes. It will be all guided in your guidance only. Slowly open your eyes, look around, and then I'll tell you to gently start to walk. So when you're walking, you'll go out and take left. This is the direction. Some वहाँ सब boards लगे हुए हैं, volunteers will be there. So you have to take left and then take a right. You will be taking full circle. So there is one short circle, one long circle, right? You can take whichever you want, right? If you take a long circle, you'll get enlightenment. If you take a short circle, you'll get self-realization. दो बार enlightenment हो जाएगा. And this is your walk. This is
even though we are doing it in a group, but this is your journey, this is like a journey of life, right? Others can walk with you, but no one can walk for you. So even though you'll meet, this is completely be like in a trance, in your zone. You're not, oh hi, you're not talking to anybody, you know. It's completely, you're not disturbing anybody, and nobody is disturbing you. Yes, totally, you are in your zone. You're only aligned with the vision of your future, right? You're listening to my guidance, and just you're changing your energy, you're changing your vibration. That's how you'll meet your destiny, right? So first we'll start with brain coherence, heart coherence, and then first जो walk होगा, there are two walks. First walk is a little slow walk, right? It's like a walk with compassion, walk with more awareness. Little slow walk. Music will be also like that, little slow walk. And then after maybe around 10 minutes, 15 minutes, I'll tell you to stop wherever you are. So जहां भी आप खड़े रहें, जहां भी आप रहेंगे वहीं खड़े हो जाएं. अब चाहिए चाहिए आप चाहें तो कहीं बैठ भी सकते हैं. There are some chairs around, or any place. If you want to sit, even if you want to sit, you can sit on the ground if you want to sit. Otherwise you can do it standing. And then I'll tell you to close your eyes, and फिर again keeping your eyes closed, just follow my guidance. ठीक है? After again 10-15 minutes, again I'll tell you, now you can open your eyes, and now again start to walk. Right? Now the second walk, you're already in the zone now. You're fully energized, fully charged, fully aligned. Now this is the walk with passion, right? With like you're meeting your destiny, आपकी मंजिल सामने. You're walking with passion, पूरे पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ चल रहे हैं. ठीक है? So this is the second walk we'll do, and after then again I'll tell you to stop wherever you are, or you may choose to sit down, and then again you have to close your eyes, follow my guidance, and then that's how we'll end the meditation for again 10-15 minutes, and that's how we'll end the meditation. Okay? So total duration will be, I think, 1 hour, I think 22 minutes. Okay? Total 1 घंटा 20 मिनट है, starting from brain coherence, heart coherence. Anybody has any questions? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. All set? No, actually, if you don't want to walk, just sit and do it. Don't need to walk. When you're listening to the music, you have the headsets. Acha, okay. I'll give you the headset. So when you're listening to the music, when I tell you to walk, just imagine you're walking. So anybody who cannot walk can just sit and do. And when I tell you to open your eyes and walk, so just imagine, even in your eyes closed only, you can imagine that you are walking. Okay? So, और किसी कोई प्रश्न, कोई question? Yeah, once you finish, we all come back here. We all meet here, okay? Yeah. With your headsets. It's a recorded meditation. You downloaded the recording, right? And so just put on your headsets. So please make sure nobody is putting it on speaker mode, right? Because then I see that then it's you're disturbing others. So make sure everybody's headsets. If you don't have, we have few extras. You can borrow from there. There's a help desk there. आप वहां से headset ले सकते हैं, और and then you can start to walk. किसी का headset नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो help desk can help you. और अगर सब आगे चले भी गए, तो anyways it's your own meditation with your own journey. You can join later also. It's fine, right? Okay. हाँ. नहीं, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है.
है ना. हम हार्ट कोहेरेंस, ब्रेन कोहेरेंस हार्ट कोहेरेंस से चालू करेंगे यहाँ पे करीब 18 मिनट. उसके बाद फर्स्ट मैं बोलूंगा आंखें खोलें और और वॉक करना चालू करें. तो आप सर्कल लेंगे, जहां सब जा रहे हैं फॉलो करेंगे. और फर्स्ट फर्स्ट स्लो वॉक करना है, आराम से भावपूर्वक वॉक करना है, ध्यान पूर्वक वॉक करना है. उसके बाद मैं बोलूंगा रुक जाएं, थम जाएं. फिर अगेन मेडिटेटिव स्टेट में आंख बंद करके जहां है वहां खड़े होके या बैठ के आपको जस्ट फॉलो द गाइडेंस को फॉलो करना है. उसके बाद अगेन मैं आपको कहूंगा अब वापस चलना चालू करिए. तब पूरे जोश पूर्वक चलना है ना. एंड उसके सम टाइम बाद उसके बाद अगेन मैं बोलूंगा कि अब जहां हैं वापस वहीं रुक जाएं, खड़े हो जाएं और आंखें बंद कर लें. फिर वहीं पे आप खड़े होके वापस ध्यान में चले जाएंगे. एंड दैट्स हाउ विल एंड द मेडिटेशन, है ना. ठीक है, क्लियर. नहीं, पानी नहीं पी सकते, बियर पी सकते हैं. Of course you can have water. Yeah. All right. Yes. नहीं, actually one is the short 4 minutes वाला introduction. Ignore that. Only do that 1 hour 22 minutes वाला, है ना. Yeah. Yeah. Date with destiny. Ignore the introduction part. Actually 4 minute का एक introduction part है that introduce. That was just for you to listen and come prepared so that you know what we are going to do. But now I've already explained you, so you can ignore that. Okay. All right. We are ready. So what I'll do is I'll tell you to all put on your headsets, get ready, and I'll tell you 5, 4, 3, 2, 1, start. At the when the moment I say start, you press the start. You start the meditation. Okay, with eyes closed here. Okay. All right. You ready? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, start. Greetings, friends. This is Shreans Daga here. Thank you for your time. I would like to take a moment to personally welcome you to an energizing, experiential walking meditation that will open the door to the future you, to the empowered you, to the invincible you. Let's do this. Let's step into your new destiny, your new future, your new life. Standing up straight and eyes closed.
Notice the sensation of the air as it moves in and out of your nostrils. Let not a single breath slip by without your awareness. Shift your awareness from the world around you to the world inside you. In breath and out breath. Just become one with your breath. It's time to become nobody, no one, no thing, nowhere, and no time. Become pure consciousness in the void. And as an awareness, aware that you're aware in this endless, vast space, and lose yourself in nothing to become everything.
And now, take a moment and center yourself by lovingly placing your hands over your beautiful heart, the seat of your soul, acknowledging the divine within you. This is the sacred place where we create from. And as you shift your awareness to the sacred center, allow your breath to move in and out of this center. And for a moment, turn your love inward. Tune in to the power of this love and feel it within you. Breathe in more deeply, more soundly, and more completely. With every breath, you infuse more vital life force into the center by giving it your attention. As where your attention goes, energy flows. Moment by moment, with each breath, you awaken your heart. With each breath, allow your heart to speak and open up furthermore. With every breath, you activate the center of creation. As you tune in to the energy of the center, it's time to feel gratitude. Appreciation, the joy of existence.
fall in love with your life, a new life, all of life. The divine is within you and all around you. Can you feel immense kindness, care, and humility? Feel true appreciation to be alive in this moment. And express gratitude for this beautiful gift of life. Breathe. Feel from your heart. And now radiate that feeling beyond your body. Feel empowered to create as a consciousness with coherent energy, radiating that feeling into space. Allow the song of your soul to be heard and to be felt by all. And let the energy of love be broadcasted beyond your body into the space for the greatest good of all. Breathe. Feel. Radiate. And now you're ready to move towards your new destiny. Who do you want to be when you open your eyes? You have to become the person of your future. To live in that future now. By the end of this walk, you will merge with your destiny. Merge to emerge. Let the divine in you awaken. Slowly open your eyes.
and fix your gaze upon the horizon. And allow your body and brain to go into a trance. And at the same time, open your focus and become aware of the space beyond your body. Stare upon the vastness of nature in front of you while you sense the space around you. Now, let's start to walk. Take your body for a walk into a new future. Here we go. Walk with a passion for a new life. Feel it with your body. Embody it. You cannot have what you want to have unless you are willing to embody vibrationally. With each step, you're walking away from your past. Give up your old story and embrace your true glory. Let's walk into the future, declaring who you are. Empowering your destiny. Become that person in your future now. Come on, walk with purpose, walk with intention. Acknowledging your precious body. Let your body be drawn to that future. Become aware of your connection to Mother Earth. Time to change your energy and move into a new state of being. Walk with a clear intention and an elevated emotion, broadcasting a signature into the quantum field.
Come on now, feel it. How would you walk? How will you breathe? How will you move? If all your dreams have come true. What is your posture? Come on, feel it in your body. Embody your future now. Come on, feel it. Let the images come. They are the memories of your future. Come on, remember your future. Let your body respond to a new mind. Come on, feel the energy of your future. Embody your future. Come on, feel it. Wear it. Bring it alive. Come on, let your past go and move yourself into a new state of being. Become your future self now. Mind, body, and soul. Thoughts, feelings, and wisdom. Invest in your future. Come on, walk in the energy of your future. Become more of it. Feel it. Surrender to it. Feel empowered. Be lifted. Feel inspired. Feel invincible. Come on, feel it. Walk, remembering it has already happened. Feel it. Fall in love with your future. Feel it with all your heart and be moved by a love of life. You are loving your future into life. Come on, trust it. Know it.
Enjoy it and feel it with all your heart. Destiny. And now, stop moving for a moment. Stand still and poised, and close your eyes. It's time to change your energy even more. And now, can you rest your attention on your heart? The center of creation. Allow your breath to move in and out of this center. Breathing in more deeply, more soundly, and more completely. Activate this creative center and feel unlimited. For in order to create the unlimited, you must become unlimited. For in order to emulate the divine, you must feel divine. Breathe. Feel. For in order to create the magnificence, you must feel magnificent. Breathe. Feel. And move into a new state of being. And as you breathe from this center, feel immense joy, immense gratitude, and immense love. And radiate that energy beyond your body.
Remember your intention, your vision, your future, and combine it with this elevated feeling, broadcasting a signature into the quantum field. As the thoughts send the signal out and the feelings draw the event back. And the longer your consciousness lingers in this energy, the more you're calling your future to you. Creating reality from a higher dimension. Open up and be worthy of receiving all that you've created in this moment. And feel deeply. Feel profoundly. And allow yourself to fall in love with life. The universe gives you what you are worthy of receiving. It's time now. Affirm who you are in this present moment and become your future now, radiating this information into the field. You are a unique expression of the divine. Start by the affirmation, I am. And feel it, embody it, and move to the next. Who are you? Feel it. Embody it. And radiate it into the field. And it's time to move to the next. And affirm who you are. Feel it. Feel it with your heart.
Tune in to the power of love. Feel it within you and all around you. Become the vortex of love. Fifth dimensional creation. Tune in to the energy of awe and wonder. Be mystified by the unknown. As you change your energy, you change your life. Awaken. You can do anything. A new life. Feel it. Be moved by it. Be humbled by it. Be empowered by it. Be overjoyed by it. As you embody a new life, feel it within you and all around you. Feel the wholeness. Standing in this moment, feel the divine who lives within you and all around you. Become more of it and less of you. Feel more of it and less of you. Experience it. Surrender to it. And enjoy it. And it's time to walk into that future. What do you want to be when you open your eyes? Walk in passion for a new future to be awakened within you. Let the love of a new future live in you. Let that experience be alive in you. Slowly open your eyes. It's time to wake up. Come on, wake up in that future and let's start to walk. Take your body for a walk into a new destiny. Tune in to the energy within you and all around you.
Sense it. Stay connected to it. And move with the trance. Walk into the destiny you are creating now. Come on, feel it. Walk as a victor, not a victim. Walk with passion. Let that passion arouse in you. Let the life force move in you. Let the creative energy rise in you. Come on. Let your body be lifted to a new energy, to a new mind. Walk in wholeness. Walk in gratitude. As you walk with an attitude of gratitude, it's time to tune in to the mind of the sage, the wise one. Tune in to the mind of the genius. Feel that energy within you and all around you. Come on, tune in to the energy of the miraculous. Tune in to that mind. Become it. You can do the uncommon. You have done the uncommon. You are the uncommon. When you feel you can do anything, miracles happen. Walk in that energy. Come on, let your body respond to your mind. Tune in to the energy of freedom. Liberate yourself. Free yourself.
Tune in to the mind of the mystic that lives in you and all around you. Tune into that frequency and become the mystic. Be mystified. You are the mystical. Tune in to the mind of the healer that lives in you and all around you. Tune in. Feel. Tune in to the mind of abundance. Be worthy to receive. Feel it in your heart. Tune in to the energy of life. Feel the passion for life. Enjoy this feeling. Tune in to the power of love. Fall in love with life. Take a chance and see how life loves you back. Sense it. Notice it. Surrender to it. Tune in to the energy of wholeness. Become that mind connected to the energy of all things. Come on. Unify your mind to the mind of life. Tune in to the greatest potential within you. Experience it. Stay connected to it. Tune in to the energy of new life. Walk in invincibility. Nothing between you and your destiny and reaching it. Come on, walk purposefully. Feel your power, your true glory.
Tune into it. Become supernatural. Be unlimited. Be magnificent. Come on, walk into the unknown. For the unknown is a field of imagine, wonder, walk in harmony, feel it. Walk in freedom. Embody the freedom. Walk worthy. Feel worthy and be worthy to receive the gift as the master of your life. And now, stop moving for a moment. Stand still and poised, or you may choose to sit down and close your eyes. Feel the vibrations running through your whole body. This is the energy of the future. Allow it to integrate into your consciousness. And now, Divine One, Creator of Destiny, Sentient Being, center yourself by placing your hands over your blessed heart. Your soul, acknowledging the sacred place that all things are created from. Acknowledging the divine within you. The power within you. As you rest your awareness in the center, breathe through it. Allow your breath to relax your body. Allow your breath
to become enriched and deeper and more complete. Feel your inner power. Feel your connection to the source energy. As your source is your ultimate resource. Feel it. Sense it. Experience it. And now, I want you to bless your body, the temple of your being. Bless your soul. Bless the divine within you as it moves through you and all around you. And to bless your life, let your life be an extension of the divine. And to bless your future so that it never be your past. And to bless your past that it turns into wisdom. And to bless the adversities in your life so that it initiates you into greatness. Feel the divine grace and blessings being showered on you and your loved ones. Feel the gratitude to be accepted, to be embraced, and the blessing to know that we all have a place called home. And now, Divine One, it's time to give thanks for a new life. To open your heart and feel immense gratitude for all that you have created. And the longer you carry this attitude of gratitude, the more you draw your new life to you. For the emotional signature of gratitude means it has already happened. Gratitude is the ultimate state of receivership. A grateful heart is a magnet for miracles. Breathe. Feel.
open your heart and receive that energy as it moves into your being, and know that you are worthy to receive in this moment. Be thankful for a new life. Be truly thankful. Let the power within you continue to unfold in you and move around you and show evidence in your life that is real, and that life is filled with unexpected wonder and for the joy of existence. Breathe, feel, smile, and radiate your love into life. And breathe, feel, and receive the love from all of life. Be lifted by your dream. Be sincere, willing, and uncompromising to your dream. With the passion to grow and a sincerity to overcome and overcome till you become. A joy in a new life, a heart that is open and activated in awe and wonderment of this new life. To fall in love with you, let you merge with the greater you. Feel the celebration for life as life celebrates you. A blessing for new life when life blesses you. True thankfulness for life when life thanks you. And a true love for life when life loves you unto life. A new life that you pray to be more wiser, more aware, and more conscious. And that we feel more whole and feel less lack. And the mysteries be revealed to us, and the doors of life may open in a way that you least expect. Focus on the best version of yourself and others, and truly believe in it.
what you sincerely believe as true of yourself shall be awakened within you. So believe in yourself. Believe that you are limitless. Believe in the power of your goodness. Believe in the power of your divinity. Believe in miracles. Believe you are miraculous. Believe that you are destined for absolute greatness. Believe you deserve it. If you believe it, the universe will serve it. Believe you are magical. Believe in your kindness. Believe you are vibrating at your highest frequency. Come on. Feel it. Feel it in every cell of your body. Come on. Believe it. Affirm it. Believe in the power of grace. Believe in your power of peace. Believe in your power of surrender. Believe in the power of gratitude, generosity, and compassion. And believe in your power of truth everlasting. Believe in your power to connect to your new life and stepping towards your new destiny. Believe in your power to become your new future. Now, remembering that it has already happened. Believe and achieve. Believe, and therefore anything is possible. Trust it. Know it. Experience it. And feel it with all your heart. Now, with this overwhelming feeling of joy and gratitude, give thanks for a new you, to a new life.
Remember this feeling deep in your heart. Breathe. Feel. Smile. Memorize this feeling. Anchor this feeling. Relish this feeling. Treasure this feeling and remember it by heart. Breathe. Feel. And radiate your love into life and receive the love from all of life. Slowly come back. Slowly bring your awareness back to a new consciousness. To your new mind. To your new body. In a whole new world. In a whole new time. Take your time and slowly come back. And whenever you're ready, you may gently rub your palms and place them over your beautiful eyes. Feel the warmth on your eyes. Feel the love in your heart. Five, 4, 3, 2, 1. And now, with a smile on your face, and from this feeling of unlimited being and bliss flowing through your body, gently open your eyes and come back to the three-dimensional world, where you get to experience everything you created. I express my gratitude to you for giving me the privilege to share these special moments with you. It is no coincidence that you chose to be a part of this at this moment in time on your journey of life.
You've attracted this moment as you're in the process of awakening. Thank you for trusting me to guide you on your date with destiny. Immense love and appreciation from the divine in me to the divine in you. Wish you a glorious, abundant, and joyful life. Make your life a masterpiece. Go in peace. Go in peace. Go in peace. हाउस द जोश, हाउस द जोश. मैंने बोला वेरी गुड मॉर्निंग, आपका वेरी गुड मॉर्निंग. मैं बोलूं हाउस द जोश. यस, हाउस द जोश गोइंग. आज का एक्सपीरियंस कैसा था? डिवाइन फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच गए हम सब, है ना? इसी को हमको मेंटेन करके रखना है. एंड वी आर ऑल गेटिंग दीज टैग्स ना अपने ऊपर. ये इंटेंशन कार्ड्स हैं. इंटेंशन का कि मेरा आज का संकल्प है कि मैं संपन्न बिहेव करूंगी, मैं कृतज्ञ बिहेव रहूंगी, कृतज्ञता में रहूंगी, मैं संपन्नता में रहूंगी. मतलब मुझे अगर थोड़ा सा भी कंप्लेन आता है कि मेरे पास इस चीज का कमी है, मेरी एबिलिटी में कमी है, मेरे प्यार में कमी है, मुझे रिसीव करने में कमी है, नहीं, कहीं नहीं कमी है. मैं हमेशा हर चीज में हमेशा संपन्न हूँ, हमेशा कृतज्ञ हूँ. सो दीज आर माई इंटेंशन कार्ड्स, राइट? तो जो जो हमें मिलता है हम अपने आप को कोशिश करेंगे उसमें मेंटेन करने के लिए एवरी डे. दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी शंकर सर को. शंकर सर यहाँ के
पूरे करता धरता है, हमारे पिरामिड वैली के मैनेजर हैं। और ये हमने जो इतना एक्सपीरियंस पाया है पिछले 4 दिनों में, आज हमारा चौथा दिन है, और एक एक चीज़ में खाना पीना लेकर हमारा पिरामिड के अंदर में रहना, पिरामिड के बाहर हमने जो आज का मेडिटेशन किया या टैग मैनिफेस्टेशन, एम्फी थिएटर, तपस्थली, सबकी देख रेख करने वाला, कुछ सबको सबसे हर तरह के काम करवाने के लिए एक हेड चाहिए होता है, वो हमारे शंकर सर हैं। और आज हमको हमारी पिरामिड वाली के बारे में वो कुछ और बताएंगे। प्लीज टेक ओवर शंकर सर। थैंक यू। थैंक यू चेतना मैडम। नमस्ते। आपका आवाज सुनाई नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सभी के लिए आत्मवंदन। पिरामिड वैली इंटरनेशनल, a thought, the concept, I think already heard by Shreans sir in his journey. It started in 2003, April. The same thought of same mindset people came together, created a wonderful marvel, the world's best meditation place. The dream has took from there and it started. At that time, the concept itself, ये पिरामिड के बारे में सोचना भी एक अलग सोच था। हम सब लोग पढ़े हैं पिरामिड मतलब इजिप्ट में है, जो मम्मीज को रखा है, उसका अर्थ ऐसा नहीं था जैसा हम आज देख रहे, हम आज सोच रहे, उसका मीनिंग अलग ही था। वैसा कॉन्सेप्ट को इधर in 2008, such a big pyramid was completed. It took 5 years to complete, and many people have contributed, including Shreyan sir. He has a bigger hand in that. It took a lot of difficulty time and money wise also. We had a struggle. 5 years it was. We thought of completing in 1-2 years, but it took around 5 years. आप समझ सकते हैं क्या क्या डिफिकल्टी आया होगा वो टाइम में। हेलो, सॉरी सर। या वो टाइम ऐसा था, तब से ये सोच चलते गया। एक ही उद्देश्य था, सिर्फ एक ही उद्देश्य, ध्यान करना है, ध्यान का स्प्रेड होना चाहिए, सबको ध्यान इजीली मिलना चाहिए। ये उद्देश्य, ये पूरा प्रोजेक्ट चालू हो गया था। और साथ में मेगा पिरामिड में और ऐसा बड़ा पिरामिड में किया तो एनर्जी एम्पलीफाई होता है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट के साथ हम चालू किया, लोग धीरे 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 आने लगा। केशव, जब धीरे धीरे आने लगा लोग, इधर वेरी डिफिकल्ट है, आप देखा होगा सिटी से बहुत दूर है, इट्स नॉट इजी। एट दैट टाइम रोड भी बहुत छोटा था, इतना छोटा रोड था, इधर आना भी मुश्किल हो जाता था। किसी को कभी कभी हाफ डे लगता था आने के लिए। अभी हाईवे आ गया, आप फास्ट आ रहे, बट वो टाइम वैसा टाइम था 2008 में। वो आते थे इधर, खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। फिर गुरुजी सोचा, पत्री सर, इधर एक अन्नदासो होना चाहिए। कोई भी ध्यान के लिए आता है उसको भूखे नहीं रहना चाहिए, उसको खाना मिले। तब अन्नदाना स्टार्ट हो गया। ऐसा करते करते हम पिरामिड चलते गया, बट बेसिक जो फंडामेंटल है इधर वो ध्यान है। आप लोग अलग अलग गुरु से देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। हम इधर प्रैक्टिस करते आनापानासति ध्यान। ये बहुत सिंपल ध्यान है, इसमें कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें वेरी सिंपल ये रहेगा, आपके सांस के साथ आप रहेगा, आनापानासति।
इन ब्रेथ आउट ब्रेथ एंड बी विथ ब्रेथ। ये सिंपल जो चीज़ है सबको सीखना है, उसको लेके आगे जाना है, ताकि कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई पूजा कुछ नहीं है इसमें, ये सभी के लिए है। इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं जो लोग बाहर बोलते रहते हैं, मे बी मैनी गुरुज और बाबा जी। इसलिए ये एक अच्छा चीज़ होता है। इधर आप देखा होगा हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियस प्रैक्टिशनर आता है इधर, क्योंकि इधर कोई सिंबॉलिक नहीं रखा। आओ ध्यान करो, ध्यान करके आप आपका एनलाइटमेंट की तरफ चले जाओ। केशव, आप सभी को पता है, जैसा मैं बोल रहा था, हम स्कूल में पढ़ा है, कोई भी चीज़ पिरामिड के अंदर रखता है तो उसका अनुभव अलग अलग होता है। हमारा गुरुजी पत्री सर, ही हैज स्पेंड मेनी मंथ्स इन इजिप्ट। उसको एक बार एक पुस्तक मिला था, ये पावर ऑफ पिरामिड करके। वो पुस्तक पढ़ने के बाद उसको ये ऐसा लगा एक बार मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ मेरे तरफ। तब वो ध्यान करता था 1970 के टाइम में। इजिप्ट गया, 2-3 महीने उधर रहा। उसके बाद उसको समझ में आया मेडिटेशन अंडर पिरामिड करते तो कितना होता है, बाहर करते तो कितना होता है। हम और गुरुजी बोलते थे 3 टाइम्स इट एम्पलीफाइज देन आउटसाइड। अब बाहर में ध्यान कर रहे हैं और अंदर कर रहे हैं तो बहुत फर्क है। आपको लगता है पहला बार भी ध्यान कर रहे हैं आप, बस सडनली आपको लगता है इतना डीप आप चले जाते हैं ध्यान में। उसका एक ही कारण हो सकता है, ये पिरामिड। पिरामिड का मीनिंग यही है, एक ग्रीक वर्ड है पिरामिड। उसमें पिरामिड मतलब प्रिया इज फायर। आप लोग एक्सपीरियंस किया, इधर बहुत गर्मी होता है। इवन द आउटसाइड इट इज कूल, इनसाइड इट इज वेरी हॉट। मिड सेंटर, वो जो किंग्स चेंबर है, मेन जगह वो है। ये पूरा सेंटर का मेन जगह वो है। इधर इतना गर्मी पैदा होता है, you will not bear some time. People who sit there, they sweat like anything. Outside nothing is there, but inside sweating is there. What is this? This is a energy, pyramid ka energy. That energy itself makes you become more concentrate for to go towards your the meditation and become a more deeper practitioner. इसलिए हम सबको सजेस्ट करते, आपका जो भी जगह है नियर बाय पिरामिड है तो उधर जाके ध्यान करिए। उसमें बहुत आपको जल्दी से जल्दी ध्यान लगेगा कंपेयर टू आउटसाइड। या नेक्स्ट, पहला आप लोगों को पता है हमारा जो समीकरण जो है समाज का, ध्यान करना कुछ ही लोग के लिए था, सबके लिए नहीं था। अभी द स्पिरिचुअलिटी इट्स नॉट फॉर वन कैटेगरी ऑफ पीपल, इट्स फॉर एवरीबडी, सबके लिए है। ये रिलीजन से नहीं है, कास्ट से नहीं है, और एज से नहीं है, और कोई जेंडर से भी नहीं है। इधर कोई भी आके कोई भी कर सकता है। इट्स फॉर एवरीवन। हमारा मेन मकसद ये है, सब लोग जो आएगा इधर, दे शुड बिकम अ बुद्धा। दे बिकम बुद्धा व्हेन दे लुक एट देमसेल्व्स और द गॉडलीनेस इनसाइड। हमारे पास सबके पास एक दैवी गुण है, देव गुण है, उसको जगाना पड़ेगा। वो जब हम बनते दैवी गुण से, तब हम बनेंगे बढ़िया बुद्ध। किसी को, किसी टाइम को, किसी पक्षी प्राणी को कहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम बुद्ध जैसा रहेंगे, आराम से रहेंगे, सबको रहने के लिए भी देंगे। या और ये होने के लिए, बुद्ध होने इजी नहीं है, लगता है हमने 1 घंटे के लिए बैठते हमको तकलीफ होने लगता जगह में, क्योंकि आजू बाजू लोग हैं, समाज है, प्रेस्टिजियस है, फाइनेंस है, सोशल रिलेशन, सो मेनी थिंग्स है। इसके अंदर हमको एक बुद्ध तो लेने बहुत इजी काम नहीं। हम मानव हैं, फाइनली हम मानव हैं। हमारा अंदर भी जो जो होते रहते हैं अप्स एंड डाउन, उसकी वजह से हम कभी बुद्ध नहीं बनते। और जब आप ध्यान करते, रेगुलरली ध्यान करते, रेगुलरली साधना करते हैं, रेगुलरली आप एक सत्संग में रहते हैं, ऐसा सेम गुण जैसा लोग के साथ, धीरे 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 आने वाले कुछ टाइम में हमारा मन भी चेंज होगा, हमारा दैवी गुण एक्टिवेशन हो जाएगा। विद इन बुद्धा विल स्टार्ट बिकम थिंकिंग अबाउट बुद्धा, बीइंग ऑफ बुद्धा। हम मास्टर बन जाएंगे। हम बिलीव करते इधर कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य भी नहीं है। देयर इज नो टीचर, देयर इज नो स्टूडेंट हियर।
आप लोग समझ लीजिए आपका लाइफ बाय डूइंग मेडिटेशन यू बिकम अ मास्टर ऑफ योर ओन। आप जब मास्टर बनते हैं ताकि आप 10 लोग को बोल सकते हैं, वो 10 लोग 10 मास्टर हो जाएगा। गुरुजी में क्या होता है, हमेशा गुरु गुरु रहता है, स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है। ऐसा नहीं है, मास्टर बन जाए सब लोग ताकि ये नॉलेज सबके पास चले जाएगा, इजीली चले जाएगा विदाउट एनी कल्ट। वही हमारा है, सब लोग मास्टर बनना चाहिए, ध्यान में मास्टर बनना चाहिए, बुद्धत्व लेके जाना चाहिए आगे। और वो इजी नहीं है, बुद्धत्व रहने में इजी नहीं, कुछ चीज हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप सबको पता है, हम पहला अहिंसा में रहेंगे। अहिंसा बहुत जरूरी है। एक विचार से हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, आप सबको पता है। जो लिविंग बीइंग है हमारे साथ, किसी को हर्ट ना हो। हम कभी कभी शब्द से भी गलत कर सकते हैं, वो हर्ट कर सकते हैं। वो हर्ट करने का हमको कम से कम रखना है। उसलिए हम बोलते हैं यू हैव टू बी वेजिटेरियन। कुछ अच्छा पुस्तक वगैरह पढ़िए ताकि आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा, जल्दी हमारा कॉन्शियस और अच्छे के तरफ चले जाएगा। ये होते होते देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बीइंग इन बुद्धिज्म, द बुद्धिस्ट तत्व। और नेक्स्ट सात्विक लिविंग, आप सबको पता ही होगा। सात्विक मतलब कुछ नहीं है, सत्व के साथ रहना। हमारा सत्व जो अंदर का जो गुण है, दैवी गुण, उसको जगा के रखना है। हमारे पास दो गुण होता है, एक दैवी गुण होता है, एक राक्षस गुण होता है। हमेशा दोनों खेलते रहता है। कभी हम गुस्सा होता है ना, हम दैवत में नहीं रहेंगे, तब तब हम बहुत एंग्री रहेंगे तो राक्षस जैसा एक्टिंग करेंगे, काट देंगे, मार देंगे। दैट एटीट्यूड सडनली कम्स। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमको पता ये नहीं करना है, फिर भी सडनली आ जाता है बिकॉज ऑफ आवर पैटर्न और सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हमको ये दैवी गुण में रहना बहुत जरूरी है। हम सात्विक जीवन चलाना बहुत जरूरी है। आपका वेजिटेरियनिज्म हो, आपका अहिंसा पद्धति हो, जनजावर के साथ आप कितना अच्छे से रह सकते, लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते, वो हमको बेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट, मैं पहला ही बोला था आपको, जब भी हम चीज सेलेक्ट करते हैं, ऐसे ही रैंडमली हम सेलेक्ट करने करेंगे। जो भारत में आप सबको पता है, भारत में बहुत अच्छा विजडम है, जो फिलॉसफी है हमारा पूर्वजों ने बना के रखा है। वो विजडम के साथ थोड़ा साइंटिफिक टेम्परमेंट हम लगा के, जो सही है आज का दिन के लिए, वैसा साइंस हम यूज करके हमारा कॉन्शियस और फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाना चाहिए। इसलिए वी शुड हैव दैट टेम्परमेंट ऑफ साइंस एंड आल्सो आवर कल्चर एंड हेरिटेज, सो दैट हमारा लिविंग बहुत आसान से रहे, बहुत सालों तक रहे, सब लोग आनंद से जिए। नेक्स्ट, आप लोग आया है लगभग 350 लोग हैं इधर ये प्रोग्राम में। आप लोग कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट किए होगा। ये जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं इधर, आपको लगता है प्रोग्राम बहुत कम होता है इधर, मंथ में एक बार होता है बड़ा प्रोग्राम, वीकली छोटा छोटा प्रोग्राम होता है। जो पार्टिसिपेंट होके आता है, जो इधर स्टे करता है, ये लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। एक कंट्रीब्यूशन ने क्या होगा, ये पिरामिड वैली पूरा रन होने के लिए एक रास्ता बनेगा। 2003 से अभी तक लाखों लोग इधर कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि ये नॉलेज सबको मिले। सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब सबको ये नॉलेज मिलता है, आगे जाता है, तो उसके लिए एक सपोर्ट होता है, एक सपोर्टिंग हैंड होता है। वो सपोर्टिंग हैंड आप लोग बनना चाहिए। हमारा इधर गौशाला है, अन्नदाना है, और ये इतना बड़ा पिरामिड और पूरा कैंपस को मेंटेन करने के लिए हमके बहुत सारे, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। आई विश, आई रिक्वेस्ट you to have your great kindness towards Pyramid Valley. We have authorized ATG certified people, and you can donate. You will get your tax exemption also. Along with that, पिरामिड वैली में ऐसा भी चीज़ है, हम बहुत बड़े हॉल्स वगैरह है। आप लोग खुद प्रैक्टिशनर है, कुछ प्रोग्राम हम लेते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम होगा और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, आप इधर ले सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा,
आप इधर करने से लोगों को एक ध्यान के बारे में अवेयरनेस आएगा, दूसरा आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं इतना अच्छा ग्रीनरी के साथ। ऐसा बोलते हुए मेरा लास्ट पार्ट में आ जाता हूँ। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए और पिरामिड वैली को आगे तक लेके जाएंगे। अभी तक हम लगभग 3 मिलियन लोग को ध्यान सिखाया है। हमारा टारगेट है पूरा यूनिवर्स, पूरा प्लैनेट। हमारे गुरुजी बोलते थे पूरा प्लैनेट ध्यान करना चाहिए। वैसा एक प्रोजेक्ट में हम सब शामिल हो जाएंगे, सब काम कर लेंगे। ऐसा बोलते हुए मेरा 2 बात इधर खत्म करता हूँ। आपको कोई भी कुछ कंसर्न है रिगार्डिंग योर accommodation or anything, you can call me anytime. I'll be here to take your things. Thank you so much for morning time आप मेरे को दिया। आप लोग आइए, आपके फैमिली के साथ आइए, you conduct your programs and please look into our website also. We have a website pyramidvalley.org. There we have lots of programs which are published. You can register, you stay with us. There are a lot of pre-programs also. Not only paid, pre-programs also are there. You can be a part of that also. Thank you. Thank you so much. Huh? Yeah, that is a part of contribution. We are planning to have another mega building here, around 150 rooms. The people comes here because they need a rooms. That rooms will take a lot of things. And I can just, you can go through our website. You will have a detail. You can contribute to that, so that you will become a member of Pyramid Valley. In a year, particular days, you will get to stay here. Yeah. I think we'll take a question there. Okay. Thank you. Thank you so much. Smiling, they are just emitting their emotion. All I feel and observe is peace, positivity. I mean, people are smiling, they are just emitting their emotions out. It feels just so awesome. मेरा रिलेशंस जो था मेरे फैमिली में वो completely बदल गया and I'm just enjoying this journey of my life. Honestly, we thought retreat is not for everybody, but I feel like you should definitely experience this because there's so much more than just meditation. एक बहुत अच्छा माहौल इस पिरामिड का, इस पूरे एनवायरनमेंट का, प्रकृति का, ये सब ऐड करता है पूरे एक एक्सपीरियंस के लिए। ये रिट्रीट में सेलिब्रेशन है, बट along with celebration, evolution है, transformation है। The ambience, the environment is so peaceful and calming. So the first time you enter the place, you feel already relaxed. This woman had been struggling to walk for years. At the retreat, something extraordinary happened during our healing circle meditation. मैं आई तो थी यहाँ मम्मी को मदद करने के लिए, तो मेरी मम्मी चल नहीं पा रही है। कल तो मेरे को सुबह मेडिटेशन से ही मेरे को लगने लग गया था कि मेरे से अंदर से जैसे आवाज आ रही थी, तुम चलो, तुम चलो, तुम चल पाओगी। उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप खड़े हो जाओ, और मैं फट से खड़ी हो गई बिना किसी सपोर्ट के, और चलने भी लगी। कल हीलिंग के बाद वो अपने आप सारी सीढ़ियाँ उतरी है। आज सुबह जब हम वापस मेडिटेशन के लिए गई हैं, वो खुद सीढ़ियाँ चढ़कर गई हैं। यहाँ आने से माइंड चेंज होता है और सब कुछ पॉजिटिव होता है, और बहुत खुश हूँ मैं यहाँ के। इररिस्पेक्टिव आपके हेल्थ के कोई भी इश्यूज हो, प्लीज आए और इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस ले। Join us for the upcoming retreat and experience our healing circle meditation, a powerful inner process designed to reconnect you with the wholeness within, so healing can naturally begin to overflow into others.
I would like to invite अभीप्सा जी now. वो हमें सितंबर के मंथ में उड़ीसा महायोग ध्यान कुंभ होने वाला है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगी. अभीप्सा जी, can you please come here and let us know what is it about? Thank you. नमस्कार सभी मास्टर्स को आत्मवंदन. कल मेरा एक अलग पहचान था. जैसे एक लड़की की पहचान माँ, बेटी, बहन, भाभी, कितने सारे रिश्ते होते हैं. कल आप अलग परिचय से देखे थे, आज मैं एक अलग परिचय लेकर आई हूँ. उड़ीसा में बलभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र है और उसकी मैं एक ट्रस्टी हूँ. हमारा ध्यान योग ट्रस्ट है और उसके तहत हम हर दिन हमारे सेंटर में ध्यान होता है और वहाँ रोज लोग आते हैं और ध्यान करते हैं. और साल भर हम अनेक कार्यक्रम हाथ में लेते हैं. पूर्णिमा ध्यान और अमावस्या ध्यान को विशेष रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं और कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे प्रमुख और अहम कार्यक्रम है वो है उड़ीसा ध्यान महायज्ञ. पिछले 4 सालों से हम इसे 3 सालों से करते आ रहे हैं एंड दिस इज द 4th ईयर. और आप सबको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये कार्यक्रम हम पुरी में करते हैं. आप सबको पता है 4 धामों में से एक धाम है पुरी धाम, जहाँ के प्रभु हैं जगन्नाथ, जिन्हें महाप्रभु कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ महा है. महा मतलब विशाल, अनलिमिटेड. तो महाबाहु जिनके हैं, जिनका दांडो, बाहर का जो आंगन कहते हैं बड़ो दांडो कहा जाता है. बड़ो मीन्स बिग, द लार्जेस्ट वन. तो वो बड़ो दांडो वहां पे है, महाबाहु हैं. उनका प्रसाद जो है महाप्रसाद कहलाता है. महाप्रसाद, महाबाहु, चौका आखी, उनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है. और उस पावन धरा में आप सबको मैं स्वागत करने आई हूँ. ये कार्यक्रम हमारा है सितंबर 25th, 26th और 27th को. आप सबको मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब हमसे जुड़े. आप सबके ऊर्जा से हम और अधिक ऊर्जावान होंगे. तो हम अपने स्वार्थ के लिए आप सबको निमंत्रित कर रहे हैं. तो आइएगा आप सब. यहाँ पे हमारे इंडिया के बाहर के कई सारे मास्टर्स हमारे साथ हर साल जुड़ते हैं और वो हमें कई सेशन हमारा लेते हैं और उनसे जुड़कर हमें और अच्छा और ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है. और एक जो विशेष बात मैं बताना चाहूँगी कि पुरी में समंदर है और हमारा ये 3 दिन के कार्यक्रम में से 1 दिन का कार्यक्रम जो है हम पूरी सी बीच में रखते हैं. और वो एक्सपीरियंस में बताते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि समंदर किनारे बालू में आप रेत में बैठे होंगे. एक तरफ समंदर का जो तरंगों की, लहरों की गूंजन आपके कानों में पड़ रही होगी और दूसरी तरफ लाइव म्यूजिक चल रहा होगा. और उस दोहरे जुगलबंदी में जब आप लोग ध्यान का आनंद लेंगे, वो कुछ निराला होगा, वो कुछ अनोखा होगा और उसे हम हर साल महसूस करते हैं. तो इस साल भी श्रेयांश सर हमारे साथ हर साल जुड़े हैं. हमारे कई सारे कार्यक्रमों में वो हमारे साथ रहते आए हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि इस साल भी श्रेयांश जी हमें अपने अनुमति प्रदान किए हैं कि ही विल जॉइन अस. सो ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे आमंत्रित करते हैं. थैंक यू सो मच. आपसे फिर से अनुग्रह करूंगी कि आप सब जरूर आए और पूरी के महान पावन भूमि में आप सब पूरी भूमि का आनंद ले, ध्यान का आनंद ले. इस महाकुंभ को आप सबकी
आगमन से वो कार्यक्रम और अच्छा और अधिक सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. We'll share the registration link on the WhatsApp group. यस, इट्स अ फ्री रजिस्ट्रेशन, तो वो डिटेल बाद में करेंगे। WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देंगे। हाँ केशव, अगर वीडियो थोड़ा चला दे। हाँ। ये है पतित पावन, जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते वो बाहर से भी प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. All right, friends. So, shall we start with meditation? आइए, तो हम आज चक्रा ध्यान करेंगे, चक्रा मेडिटेशन। इट विल बी फॉर 1 hour। जो लोग हिंदी में करना चाहें वो अपना हेडसेट लगा सकते हैं। विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, ताकि आपको मालूम रहे एग्जैक्टली कैसे करना है। तो हम जो है मैं आपको गाइड करूंगा और आपको हर चक्र के ऊपर हम अपना ध्यान देंगे, राइट? किशोर कैन चेक द चक्रा स्लाइड है ना? और आई गो अप और नीचे। हम सब जानते हैं, कमिंग फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, राइट? वी ऑल नो दैट. So these are the energy junctions. These are like the balls of energy. These are like 7 suns in our 7 सूर्य हमारे शरीर के अंदर है, और सबका अपना अपना बहुत प्रोमिनेंट रोल है. ऐसा नहीं है कि अरे लोअर चक्र है तो वो दे आर लेस इंपॉर्टेंट एंड इट इज अबाउट ओनली अबाउट नेगेटिव इमोशंस, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. All chakras have a very prominent role in our life, and as we grow, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम लाइफ चैलेंजेस से गुजरते हैं, नेगेटिव इमोशन, सर्वाइवल बेस्ड, फियर बेस्ड इमोशन से गुजरते हैं, तो हमारे चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं, है ना? चक्रास कई चक्रास ब्लॉक होने लगते हैं. और जब हम ये जो ध्यान है, जब हम उसको चक्र को वापस ओपन करते हैं, जब वापस से वो एनर्जी का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह अगर प्रॉपर बहने लगता है, तो इट हील्स अस एट ऑल लेवल्स, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हर स्तर पे हमारी हीलिंग होती है. एंड टुडे, आज हम लोग शाम को हीलिंग मेडिटेशन भी करने वाले हैं, रात को हीलिंग मेडिटेशन भी करने वाले हैं. सो all the more I thought today is a good day to do this, start this day with this meditation. And generally lower chakra doesn't mean lower. Actually, even though it is vertical, it should be looked like horizontal. It should be seen as a horizontal. क्योंकि ऐसा नहीं कि अरे higher chakra means this is of higher importance or is better. Actually, all are equally important. All has its prominent role for our spiritual growth, right? So we'll meditate on each chakras, and I'll be guiding you. So जब हम chakra meditate करेंगे, मतलब you'll breathe from that chakra. You'll bring your attention to that. Suppose if I'm talking about मूलधारा चक्र, base चक्र, तो आप अपना ध्यान वहां केंद्रित करेंगे. जहां भी आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा जाती है, right? Wherever your thought goes, energy flows. And just think that you are breathing from that chakra. It is not about physical breath. It is about the pranic energy flowing from that
right? From that chakra. So when your attention, जब आप अपना ध्यान वहां केंद्रित करते हैं, तो अपने आप आपकी प्राण ऊर्जा पूरी वहां से प्रवाहित होने लगती है ना, starts flowing from there and it activates the chakra, it opens up the chakra. ठीक है? So हमारी जितने भी जो नाड़ी मंडल जो पूरी नाड़ी मंडल की शुद्धि हो जाती है इससे. जितने भी हमारी नाड़ियां हैं उन सब का जंक्शन यही चक्रास है. These 7 chakras. The nadis are the energy tubes in our body, which they all meet these 7 junctions. And when that energy flow is proper, then our whole body goes into the state of healing and growth and repair mode. ठीक है? तो आइए शुरू करें. जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं अपना हेडसेट लगा लें. राइट? So let's begin. Let's start. आंखें बंद, हाथों में हाथ, पाँव में पाँव. Can wear your meditation mask if you want to. And let's begin. Let's start. Yes, phones, please put your phones on silent mode. Take a comfortable position. Sit up straight. Clasp your hands. Cross your legs. Eyes closed. Today, our intention is to balance and harmonize all the chakras of our body. Harmonize our energy body and reach a state of complete inner alignment. Our chakras are the energy centers in our body. Chakras are wheels of information, energy, and frequencies. So today we are going to combine music, certain tones and frequencies, harmonics, and our intention to harmonize and balance these energy centers. Allow the sound to do its job. Let it flow to your energy center. The process of this meditation is simple and is a great way to move from your old self to a new self. The first stage of meditation is brain coherence, where you make your mind empty, lose your identity, drop all resistance, and raise your vibrations. Then we move to the second stage, where we'll put awareness to each and every chakra one by one, starting from your root chakra,
till your crown chakra. And then we'll move to the final stage where you express your gratitude for this healing journey, and we'll end by a beautiful song. So I welcome you, dear friends, to participate in this powerful healing process. I hope you enjoy it. And now, gently shift your awareness to your nostrils. Take one deep breath in through your nostrils, and as you breathe out, relax. And one more slow, steady breath in, and as you exhale, let your whole body relax. Shift your awareness from the world around you to the world inside you. At this moment of time, nothing else exists but your breath. Just be with your breath. Normal, natural, simple, easy, relaxed breathing. At this moment of time, completely drop your identity, your personality self, your ego, your analytical mind, which is the extension of your ego. Just drop it all and become pure consciousness. Withdraw your attention from all people, places, things, time and event, and just be with your in-breath and out-breath. And as you observe each and every breath coming in and out of your nostrils, sense the temperature in your nostrils. Is it warm or is it cooler? Sense it. Are you breathing deep or shallow? Observe. Each and every breath
is keenly observed. Let not a single breath slip by without your awareness. On this energy center, breathe from this energy center. With every breath, you breathe in more life to the center with your intention, with your attention on this center. And now, mentally repeat with me. I am safe, supported, and nurtured in this world. I am safe, supported, and nurtured in this world. Feel it as you breathe from your root center.
And now, move your awareness to your sacral chakra, the Swadhisthana chakra, located in your sexual organs. This chakra represents element water in our body. Breathe in and breathe out from this energy center. With every breath, you are balancing and harmonizing this center. With every breath, you infuse more life to this center. And as you breathe in and breathe out from the center, mentally repeat with me. I am a sensual being and joyous in my relationships. I am a sensual being and joyous in my relationships. Feel it.
Now, move your awareness further up to your third center. Your solar plexus. Manipura chakra. Just above your navel. This chakra represents the element of fire in your body. Breathe in and breathe out from this center. With every breath, you add more life to the center with your attention. As you breathe in and breathe out from the center. Mentally repeat with me. I am confident and powerfully centered in my purpose. I am confident and powerfully centered in my purpose. This is the center for energy and vitality. And now shift your attention further up to your fourth chakra, your heart center, the Anahata chakra.
This chakra represents the element air in your body. This is the sacred center where we create from. As you breathe from the center, with every breath, you add more life to the center. With every breath, feel the opening of your heart. Every breath, feel the expansion in your heart. And mentally repeat after me. I am a vehicle of giving and receiving love in perfect balance. I am a vehicle of giving and receiving love in perfect balance. Feel the gratitude, the appreciation for all that you have, all that is given to you. And now shift your awareness further up to your fifth center, your throat chakra, your Vishuddhi chakra. This center represents sound, communication, poetry, knowledge. Breathe in and breathe out from your throat.
every breath, you balance and harmonize the center. With every breath, you balance and harmonize the center. Every breath, you bring in more life to the center with your attention. And now, mentally repeat with me. I am a speaker of truth. I am heard, acknowledged, and appreciated. I am a speaker of truth. I am heard, acknowledged, and appreciated. Feel it. And now, move your awareness further up to the sixth center, the Ajna Chakra, the third eye. This center represents light. This center represents your ability to dream, imagine, remember, and see beyond. Breathe in and breathe out from the center. With every breath, you pour in more life to the center.
every breath from this center, you activate the center. And now, mentally repeat with me. I am an intuitive vessel, and I honor the wisdom and guidance that I receive. I am an intuitive vessel, and I honor the wisdom and guidance that I receive. And now, shift your attention further up to your seventh chakra, the crown chakra, the Sahasrara, the chakra with 1,000 lotus petals. This is the jewel of consciousness. Breathe in and breathe out from this center. And as you breathe in,
and breathe out from the center. You open up the center and connect to your higher self, to your own divinity. As you breathe in from the center, connect to the higher intelligence, to the source energy. With every breath, feel your connection to the divine. And now, mentally repeat with me. I am connected to the source, to all that is. I am connected to the source, to all that is. I am aligned to the fullest potential of my spiritual essence. I am aligned to the fullest potential of my spiritual essence. Feel it. Feel your connection to the divine. And now, all your energy centers are in perfect harmony and in alignment with each other. Feel the flow of energy and information flowing freely from your root chakra to your sacral chakra, to your solar plexus, to your heart, to your throat chakra, to your third eye, and to your crown. Feel it. And finally, bring your awareness back to your heart center. Your heart, your soul. This is the sacred place where you create from. Now, Divine One, sentient being, center yourself.
as you breathe in and breathe out from the center, feel your connection to the source energy. Knowing that your source is your best resource. It's always available to you. Feel the gratitude and thankfulness for what you have created today, for your alignment with your source. Feel divine. Feel unlimited as you lift your life. As you lift your life in love. Feel immense love. Feel immense gratitude. And remember this feeling. Remember it by heart. And know that you are the creator. We are all co-creators. Be a light unto yourself. Acknowledge the divine within you. The power within you. And now, I want you to bring both your hands on your beautiful heart. Lift the light in your heart. You may move your body. Center yourself. Remember this feeling. Make this feeling memorable. I have chosen to be here, awakened at this time. I bring my breath upon my journey from my mind. I step out of my way and into my life. I will live, I will die, I will laugh and I will cry. I will live my life. Rejoice in every chance. I will live my life in love. Today, you'll be in inner alignment with your source energy. I am here to shine this light.
gonna share my sacred gifts. Embrace the essence of I am. I stepped out of my way and into my life. I will live, I will die, I will laugh and I will cry. I will live my life of love. I will sing, I will dance, I'll rejoice in every chance. I will live my life in love. It's time for me to live. Gonna lift my light up higher. It's time for you to live. Meet the eagle in his flight. It's time for us to live. I'm gonna lift it even higher. Dance with each star in the night. I will live, I will die, I will laugh and I will cry. I will live my life of love. I will sing, I will dance, I'll rejoice in every chance. I will live my life in love. I will live, I will die, I will laugh and I will cry. I will live my life of love. I will sing, I will dance, I'll rejoice in every chance. I will live my life in love. I lift my life. I will lift my life. I will lift my life in Now, whenever you're ready, you can slowly come back. Slowly come back to your new body in a whole new world and a whole new time. Take your time, and whenever you're ready, you can gently rub both your hands and place it over your beautiful eyes. Five, four, three, two, one. And you slowly open your eyes and come back to this three-dimensional reality of senses. Feeling love, joy, and inspired. Take your time as you slowly come back. Thank you, thank you, thank you. Thank you, friends. Thank you so much. We can take few sharings. Anybody would like to share for the morning meditation or this meditation? Walking meditation. Yeah. Hello.
I had a very divine. Just say your name, where are you from, and yeah. I am Himani. Have come from Chandigarh. In the morning, I had a very divine realization. I felt हम सब निराकार हैं. जो भी हम देखते हैं वो सब हमारी परसेप्शन है. बट हम सब निराकार हैं. हमारा कोई आकार नहीं है. हम पंच तत्वों से बने हैं. जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश. अगर हम इन सबको देखते हैं तो हमें इनका कोई आकार नहीं दिखता है. सो हम भी सब निराकार हैं. When we look at the sun, we see a ball. But when go closer and closer to it, it's just a chemical reaction of some gases. हम जिस चीज से जितना दूर होते जाते हैं हम उसे उसका आकार देख पाते हैं. जितना पास आते हैं तो हमें कोई आकार नहीं दिखता है उसका. So I felt we all are energy. We are nothing. Just the reaction of some chemical. With your permission, can I ask them to put that kaleidoscope we were watching in the morning? Kaleidoscope video. Yeah, but let's. If you're done, then we can go to others also. Yeah, sure. Yeah. Actually, that made more clarity to me. Right. Kaleidoscope. In the meantime, we can go to others. Yeah, sure. That came. Yeah. When I looked at it, I felt that we all are like this only. Right. We don't have any body. We don't have any shape. We are just like this. Yes. The chemical reactions taking place. We are breathing in oxygen and getting out the carbon dioxide. That's it. And thank you for such realizations you brought to us. I feel like you were saying ki drop your identity. I feel that we are all just the vibrations. Like you are a very high vibration soul. We can connect with each other with the vibrations and not the identities. Right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Good morning. I'm Saurabh Ram Sisaria from Vishakhapatnam. Today the day was very blissful. The morning meditation was absolutely very new experience to me. I would like to share a real life-saving experience which I've experienced. I have a driver, and he had a daughter, 16 years old, and somehow the daughter was facing some medical problem. The parents have already utilized all their life savings on the treatment, but somehow the doctor were not able to diagnose what they were going through. So randomly one day he was depressed, my driver. So I asked him what is the matter. He told me the whole story. I said, just download the Soul app and just do the heal your body meditation. And even if your daughter is not able to meditate, just listen to the music.
And I just gave him the suggestion and let him do the work. Randomly, after 1.5 months, I asked him what is the real health of the daughter, and then he said that she's perfectly fine, and she. I would like to also say that she was earlier feeling suicidal, and once she has attempted once also, but God's grace she was saved, and that was the. So all your meditations, sir, they are world class. Even the music, it is truly healing. It gives us solace, and somehow all your meditation, they also on a lighter note improve my English. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you. We'll take one last sharing and then either. Hello. Yeah. Sir. Sir, back. Oh, yeah. Okay. Okay. Good morning, sir. Good morning. This is Khushbu Saras this side. I'm come from Delhi. Sir, as I shared with you yesterday, with my leg, I was struggling and a lot of Yes. pain was there. Right. So this yesterday after the last meditation, I told my husband, tomorrow is walking meditation. I'm not going to walk. I'll sit in the pyramid with my legs up and you go for the walking. Don't wait for me. So he was like, but it's walking meditation. So मैंने कहा, so yes, I'll sit and do. I'll not go with you. So बोले, okay, as you like. So this morning when I got up, I said, ki I've come so far, so I have to do it. So I saw my leg. So I said, it's paining. I said, forget the pain. Just go for it. Let me see what happens over there. Let's walk. So the walking started. I started walking. I came a very long way with your guidance, but then only one thing came in my mind. All the time my father was with me in the meditation and I was crying. And he was like, why I'm crying so much? But then when you were talking and giving out the guidance, I was like, I should also talk back. If he's talking to me, I should also talk to him. So I continuously was talking to him. So he said, what are you doing, Khushbu? क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? आप देख नहीं रहे, I'm so unwell. I can't walk and ये तो मैं Pyramid Valley में आई हूँ, इसलिए I'm walking so much. So he said, I left you so well. You have spoiled yourself. मैंने कहा, what are you talking? So I said, yes, that's the truth. So मैंने कहा, what shall I do? बोले, you're taking too much of pressure on yourself. Don't take too much load. So I said, but I'm not able to solve whatever is going around me. It's troubling me a lot. So he said, don't have that fear of trouble. Just face them. So I told him, how shall I face? I find nobody with me around. I'm all standing all alone with them. So he said, no, you're not alone. Everybody is standing with you. The only problem is you're not walking. Walk. So I said, I feel very lonely and very upset, but it's a very lonely journey for me. He said, no, even I am with you. But you have to walk for it. मैंने कहा, with this painful leg, how do you suppose that I walk so much? He said, if you'll walk, then only this pain will come out and you will recover very fast. And you have come to the right place. You should attend more of such sessions and yes, you will come out of it. So I told him, okay, I am doing it and I will do it. So Bully, yes, go ahead. Keep doing this and you will come out of it. And these problems are just pass by. They will pass away. And I'm always with you. Don't worry. Sir, I was the
best child of my father. I'm still, but he was the only one who used to tell me, Yes. Khushbu, you're the best. Thank you. Thank you. And whatever you're doing, it's perfect. So he was the only one who used to encourage me so much and loved me like anything. I miss him a lot. But your meditations let me come out of all this. And really, the morning meditation was amazing. I really felt so good after doing the full meditation. And now I'm feeling much better. There's very less pain. And I am sure that I'll come out of it very fast. Thank you so Yes. much, sir. Thank you. Thank you. We'll take one last sharing. Yeah. हेलो सर, मैं प्रेमलता चंडीगढ़ से जब सवेरे मॉर्निंग में मेडिटेशन हो रहा था बैठ करके, तो श्री यंत्र मेरे सामने से आया और मेरी बॉडी में ऑब्जर्व हो गया. मतलब मैं ही श्री यंत्र बन गई थी. और फिर उसके बाद अंदर से आ रहा था क्योंकि मैं बहुत अपने आप को सबके साथ होती हूँ तो भी लोनली महसूस करती हूँ, और अकेली होती हूँ तो होते ही अलग. जब हम वॉकिंग में जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी, देखो तुम वहाँ अकेली नहीं हो, सब कुछ तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ. चलते चलते एक बहुत लंबा सा ट्री था और अंदर से आया, उसको हग करा और धीरे धीरे पूरा मेरा फेस और उसमें देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ. ऐसे आगे तो एक बड़ा स्टोन सा था, तो वहां से भी आवाज आ रही है, देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम कभी भी अकेले नहीं हो और सब में तुम और सब तुम्हारे में है. तो जो फीलिंग था उसके बाद एक ऐसा लग रहा था जैसे पूर्णता से संपूर्णता की मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी. तो बहुत हैप्पीनेस और तो लगा कि सच्चे में है कि हमें लगता है कि भी सब लोग डिफरेंट है और हमारी बात नहीं समझ रहे हैं हम. तो आज की फीलिंग बिल्कुल मतलब फुलफिलमेंट का एक अनुभव हो रहा है अंदर से. बहुत बढ़िया. थैंक यू. बहुत अच्छा. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, yesterday we did the topic manifestation का. We did 5 steps of creation. 5 steps. कल हमने फिर मेडिटेशन भी किया. तो any questions? किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Yes. Can you? Yeah. Yeah. Let go का जो था पोजीशन का. Right. Now ये जो अनुभव पूरा करने का लेट गो का कुछ ना कुछ हम लोग से बीतता हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, और हार के हम लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते और लेट गो कर देते हैं. फिर मैनिफेस्ट करने के लिए बोले तो लेट गो कर दिया तो फिर वही चीज़ वापस मैनिफेस्ट करके आ जाएगी. जब हमने लेट गो कर दिया है उसके ऊपर मतलब हार गए, इसके छोड़ दिया, लेट इट गो आउट. Right. So वॉट एवर वी हैव लॉस्ट आउट, उसके ऊपर फिर मैनिफेस्ट करना, इज इट द राइट थिंग आउट? So let go does not mean कि हम हार गए. Right? Let go मतलब जीत गए. अब we have dropped the attachment to the outcome. Correct. We feel it as if it's already happened. Third step में we visualize, emotionalize. Fourth step में then we surrender, let go. Right? Let go means letting God do it. Yeah. Right? तो फिर हारे कहाँ? तो हमने और ईश्वरी शक्ति और हायर पावर के ऊपर छोड़ दिया उसको होने के लिए, और हुआ, और उस पर पूरी विश्वास है, श्रद्धा है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक. So we have dropped the attachment with the outcome. Right? Actually, true manifest and क्योंकि कई बार क्या होता है, when we are attached with the outcome, then हम ध्यान से तो उठ जाते हैं, और फिर 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, फिर ऐसा लगता है अरे ये चीज हो नहीं रही है. Sometimes there is a gestation time with the universe, और हम देख रहे हैं it's not happening, अरे तो हुआ नहीं, और फिर वो जो नहीं हुआ कि एंजाइटी वो रेजिस्टेंस पैदा कर देती है, एंड फिर वो हमारे वाइब्रेशन लो हो जाते हैं. फिर जो चीज होने वाली भी है फिर वो नहीं हो पाती है. So by letting go,
you are surrendering to the universe, you are surrendering to the higher power, and you believe in that higher power, right? So it helps you to all the more drop resistance or not let the resistance come up. करेक्ट क्योंकि जो ही बोलो हम वापस से मेडिटेशन में तो हम है 5th डायमेंशनल रियलिटी, बट वापस 3 डायमेंशनल रियलिटी में आ जाते हैं, फिर यही कंडीशनिंग वापस से आ जाती है. तो when you surrender, then you know कि I've left it to the universe. It's like sometimes, like जब आप पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में भी जाते हैं या भगवान के सामने माथा टेकते हैं और कुछ मांगते भी हैं, तो lot of time it helps in a way. Why? Because आपको पूरा विश्वास है कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, आपको भगवान पे श्रद्धा है, राइट? और लाइफ में जब चैलेंजेस भी आते हैं तो आपके मन में रहता नहीं भगवान मेरा ख्याल रख लेगा. जरूरी नहीं कि भगवान कुछ कर रहा है, बट आपका बिलीफ सिस्टम, आपका ये कि नहीं भगवान मेरा ख्याल रख लेगा, जो होगा अच्छा ही होगा, मैंने तो भगवान पे छोड़ दिया, तो आप में प्रतिरोध पैदा नहीं होता है, राइट? आप वो चैलेंजेस में, वो विपरीत परिस्थिति में भी आप में वो समान, वो एक फ्रॉम इनसाइड यू आर रिलैक्स, यू आर कूल, है ना? तो आप में प्रतिरोध पैदा नहीं हो, तो फिर वो सिचुएशन भी बहुत जल्दी बदल जाती है, क्योंकि आपके इन स्पाइट ऑफ द चैलेंज आपके वाइब्रेशंस वेर ऑफ वेरी रिलैक्स, पीस, काम, फिर वापस से सिचुएशन आप वैसी अट्रैक्ट करेंगे जो आपके वाइब्रेशन के अनुसार है. तो when you same way, in a way, when you surrender, when you let go, you're letting go, then you're no more looking for the outcome. You're not no more looking. As long you're looking for it, you're separate from it. जब तक कि आप उस चीज को ढूंढ रहे हो, मतलब आप उससे भी अलग हो. अब आप में तो उसे पा चुके हैं, तो हो चुका है. In your mind and your heart, it's already happened. You have felt it, right? So that is the purpose of letting go. I'll rephrase it. By letting go, I achieved mental peace. कि सर मैंने सरेंडर कर दिया, सब चीज़ें, मेंटल पीस हो गया. फिर जब मैनिफेस्ट में बोला कि मीन्स वॉट एवर यू वांट यू कैन मैनिफेस्ट, मेरा जो मतलब ये जो भी मेरे लॉसेस थे ये थी से, तो वो मैनिफेस्ट किया कि मुझे वो मिल गया करके. तो इट्स अगेन क्रिएटिंग ए कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पूरा, कि मैंने लेट गो कर दिया और फिर मैं वो ही मांग रहा हूँ कि क्या है. Don't take it so literally. You know, let go. मान लो आपको बिजनेस में लॉस हुआ, तो यू आर नॉट सेइंग कि मेरे लॉसेस मुझे वापस मिल गए. यू हैव टू विजुअलाइज कि आई एम अबंडेंट. ये नहीं कि मेरा खोया हुई चीज मिल गई. सी, यू हैव टू विजुअलाइज इन अ प्योर पॉजिटिव सेंस, राइट? इट शुड बी गुड, ऑनेस्ट, प्योर एंड पॉजिटिव. आप सोल्यूशन पे फोकस करें. लॉस वाज अ प्रॉब्लम. When you say मेरा लॉस वापस मिल गया, again your energy, you're focusing on the problem. You're focusing on the solution. कि I am abundant, I am wealthy, money is flowing into my life, right? I have all the financial freedom, right, to do whatever I want, wherever I want, whenever I want, right? So ये आपको उस बात पे फोकस करना है. अब now you're already feeling it. Now you surrender to the universe. वो कैसे करना है? How it will happen? I've left it to the universe. That I have surrendered. That I have let go to the universe. Now I am not applying my mind कि अब ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. You understand? So you are focusing on what? How you are letting go. You are letting go you are letting go God. Rather than saying let go, I'll say letting God do it for you. Yeah? थैंक यू. थैंक यू. सी, और ऐसा भी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन ही एक तरीका है कोई चीज को पाने का. सी, दिस इज वन टूल टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड बी फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट, एंड टू प्राइम योर ब्रेन, राइट? जो हमने बोला कल RAS, यू नो, टू प्राइम योर ब्रेन टू बी रेडी फॉर द एक्सपीरियंस, so that when that experience is in your environment, you are able to identify it, you are able to recognize it,
right? So it is not, and it is not कि ये करेंगे तो ही manifestation होगा. See, when you are meditating, anyways you are changing your vibration. Anyway you stay in a love, joy, abundance, संपूर्णता का भाव वैसे भी आ रहा है. तो यूनिवर्स विच इज वॉचिंग योर वाइब्रेशन, सृष्टि जो आपके कंपन को देख रही हो वैसे भी उसे मैच कर ही देगी, राइट? तो देयर आर टू वेज. वन इज दैट बाइबल सेज आस्क एंड इट इज गिवन, आस्क एंड इट इज गिवन, सीक एंड यू शैल फाइंड इट, नॉक एंड द डोर्स विल ओपन. That is, we are doing ask and it is given. Now there's another way also, like which is like how Vedanta says, Advaita Vedanta, or say how what Lao Tzu says, you know, go with the flow. Ask not because it is already yours. Seek not because what you're seeking is already within you. Knock not because the doors have always remained open. है ना? मांगना क्या, ये तो मिला ही हुआ है. खटखटाना क्या, दरवाजा तो खुला ही हुआ है. तो जब तो ये दोनों तरीके हैं. तो दोनों तरीके से आप अपने कंपन को बदल रहे हो, आप अपने वाइब्रेशन को बदल रहे हो. यहाँ क्योंकि हम कई बार हमारी प्रेजेंट रियलिटी से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उससे बहुत बन जाते हैं और उसके चैलेंजेस से घिरे हुए होते हैं. तो और उस टाइम फिर थॉट्स बार बार नेगेटिव चीज पे ही जाता है, वर्स्ट क्या हो सकता है उसी पे जाता है. तो वैसे समय में विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल बिकॉज नाउ यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन, यू आर ट्रेनिंग योर माइंड टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट यू डू नॉट वांट. यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द करंट रियलिटी एंड फोकस ऑन द पॉसिबिलिटी, राइट? एंड चेंज योर वाइब्रेशन इमेजिनिंग दैट पॉसिबिलिटी. But the vibration is changing now because you're feeling it now. You're seeing it as if happening now. और आपके कंपन अभी इस वक्त बदल रहे हैं, राइट? और द यूनिवर्स, तो वो फ्यूचर को देख के आप अपने कंपन आज बदल रहे हैं. और सृष्टि जो आपके कंपन को मैच कर रही है वो कहती कि अच्छा ये आपके कंपन है तो मैं ऐसा ही आपको प्रदान करूंगी. और फिर दैट्स when that imaginal acts become facts. Right? Feeling that state produces that state. फिर वो मन स्थिति आपके जीवन में परिस्थिति बन के उपस्थित हो जाती है ना? थैंक यू. थैंक यू. Any? Yes. Go there. We'll take both of you one by one. Yeah. Hello everyone. Hi Shreans. So my personal goal for self growth, एक चीज we have to master is our emotions. We had a little talk about it yesterday. Yes. So since we all here, we look up to you, we are learning from you. So I want to ask that, have you mastered your emotions and what were the hindrances that you faced? Like what were दिक्कतें क्या आई आपको to do it? So it's a daily process. It's a daily journey. Have I mastered it fully? No. Have I mastered it? Am I work in progress? Yes. Am I growing? Yes. Yeah. When I face some life situations, then I realize कि यार पहले मैं पैनिक हो जाता था, अब नहीं हो रहा हूँ. Now I'm calm, I'm relaxed, I'm confident. Or sometimes when I lose my connection, when I feel, then now there's awareness. पहले सोए हुए थे, पहले used to blame, अरे नहीं इसके कारण ऐसा हो गया, तो अभी I'm justifying my emotions. But now I'm aware कि no, I slipped. Next time, same situation, I'll be better. I'll be more graceful. I will not, rather than reacting, I'll not lose my alignment. I will first take time to find my alignment and then deal with the situation.
So I think it's work in progress. Even though I'm teaching, but I'm also my own student. Thank you. So, सर ये सब मेडिटेशन से हुआ ना आपके साथ? Meditation, awareness throughout the day, and life situations. Then you test. Meditation is the preparation. But life situations, when you get up from meditation, then the true test begins. Yes? That is when you know you're growing or not. That is when you know that you're progressing or not. कि जब again you're met with challenges, adversities, फिर वो situation से घिरे हुए हैं, फिर then you know, oh, now I'm different. I feel different. Somehow I feel I'm free from it. I'm in the world, but not of the world. Right? Yeah, thank you. Yes. Thank you. Yes. Hello. Yeah, we'll take her, then we'll go to the next. Yes. Yeah, hello sir. Good afternoon everyone. तो मेरा क्वेश्चन है कि हार्ट कोहेरेंस में हमको अच्छी फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड, लव, लेकिन वो कब तक सोचना है? क्योंकि जब हम सोचने लगते हैं तो फिर हम विचारों में ही खो जाते हैं. तो जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो हम ब्रेथ पे कंट्रोल कर रहे हैं, हमको सोचना नहीं है. लेकिन जब हम सोच रहे ओके मैं विजुलाइज कर रही हूँ मेरे थॉट्स, तो वो बार बार वो थॉट्स आपके विजुलाइजेशन वाले, अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे प्रोडक्ट कंपनी में जॉब चाहिए, अच्छा ऐसा होगा, तो वो हिंड्रेंस तो नहीं है? मतलब वो कहाँ तक हमको सोचना है और कहाँ पे उसको छोड़ देना है? राइट. सो पहले हम नहीं सोच रहे हैं. क्यों नहीं सोच रहे हैं? ब्रेन कोहेरेंस पहले क्यों कर रहे हैं? ताकि यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर वर्ल्ड, कट ऑफ फ्रॉम योर प्रेजेंट रियलिटी, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, प्रेजेंट सिचुएशंस, राइट, प्रेजेंट चैलेंजेस. तो ताकि ऑल द रेजिस्टेंस गोज अवे. राइट, व्हेन यू ड्रॉप योर रेजिस्टेंस, you are connected, you're in a state of alignment. Now when you go to the heart coherence, now when you are feeling grateful, gratitude, even वो feeling भी पूरी निकलती, क्योंकि अभी कोई resistance नहीं है, right? कोई प्रतिरोध नहीं है, तो वो भावना भी बहुत अच्छे से उभर के आती है, right? बहुत easily उभर जाती है ना? आप उसको अच्छे से महसूस और easily आसानी से उसे महसूस कर सकते हैं. अगर आप नॉर्मली सिचुएशन चैलेंजेस से घिरे हुए हैं और मैं आपको बोलूं विजुलाइज करो कि जो भी आप पॉजिटिव विजुलाइज करना चाहते हैं, एक तो विजुलाइजेशन भी चैलेंजिंग हो जाएगा, और अगर कर भी लेंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो परिस्थिति से अभी ये चल रहा है, मैं ऐसे कैसे अच्छा महसूस करूं, मैं पैनिक में हूं और आप बोल रहे हो नहीं रिलैक्स महसूस करो, कैसे होगा? So that's why we start with brain coherence. ताकि first you cut off from the environment. First you become nobody, nothing, nowhere, no place, no time. And that's why these are the 5 steps. Then it becomes powerful. Okay, so heart coherence में जैसे वो 4 steps बताए थे आपने, तो हम लोग को consciously सोचना है that. Take it easy. Just follow the guidance. Basically, be in a positive emotional framework. It could be love, it could be joy, it could be gratitude. You know, it could be at ease. It could be just in a state of lightheartedness. Right? Acceptance of the present moment. In appreciation of whatever you have in your life. Right? Content. Yeah. So feelings के बाद you have to let go also somewhere. I think after this. Fourth step, na? Third step is visualization, and fourth step is heart coherence में फिर like we don't have to think basically वो then you're thinking, then you're shifting to in heart coherence, you're thinking about what you are grateful for, what you appreciate in your life. You're thinking. Now you're back to your thinking mode. Okay. But which is generating positive vibration. Now third, you're thinking of what you want, and in anticipation as if it's already happened, again you're generating positive vibration, positive emotion. And that's how it shifts your vibration. Okay. But this process is only during the manifestation meditation. Otherwise, we are just focusing on our breath. Is that so? In other meditations. Yes, because even that is also okay. Because even that is changing your vibration. Like जो हम आनापानसति किए first day, that itself is changing the vibration. तो वो फिर बिन मांगे वैसे भी आपके कंपन के अनुरूप आप जो चाहिए वैसे भी आपको मिल ही जाएगा.
आप पा ही लेंगे, क्योंकि वही आप आकर्षित करेंगे. दैट इज व्हाट यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ. I have one more question. I think reference to that breath work. तो breath work में जो हा साउंड होता है वो सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट्स करना है या उसको पूरा 25 मिनट कर सकते हैं हम? नहीं, हा साउंड, ये जो 25 मिनट टेक्निक वाला डिफरेंट था, जो लॉन्गर ब्रेथ वर्क, उसमें कोई हा साउंड था ही नहीं. You inhale from your nose, exhale from your mouth without making ha sound. Right? ऐसा नहीं है ये. वो जो फर्स्ट डे जो 10 मिनट्स वो ब्रेथ वर्क टेक्निक में यहां तो सिर्फ गहरी सांस लेना और आप सिर्फ नॉर्मल सांस बाहर छोड़ रहे हो. या थ्रोट से नहीं ले रहे हो आप, यहाँ पेट से बाहर सांस छोड़ रहे हो. ठीक है? Okay. Both are two different techniques. Okay. Thank you. Yes. Yeah. Yeah. So, mic closer. I'm Neelam Mehta, young lady, 75 years old, from Lovely. Jaipur. And today, a new Neelam. And 3 दिन से मेरा manifestation हो गया, and I'm raising my hand, but manifest नहीं हो रहा. But today I determined कि करना ही है. चेतना और केशव ने कहा just raise your hand, leave it to the universe, and I got the turn. मेरे को 2024 में जॉइंटिस हो गया at the age of 73. और डॉक्टर्स ने कहा कि इस एज में जॉइंटिस होता नहीं है, पर हो सकता है गॉल ब्लैडर वगैरह में कोई स्टोन हो या क्या, पर कुछ भी नहीं निकला. लेकिन जॉइंटिस जो है वो थोड़ा बढ़ रहा था, बिलोरुबिन बढ़ रहा था बहुत सारा. एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, फिर बहुत लंबा हो जाएगा. तो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया. असाइटिस भी हो गया एक बार, और उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बट इट वाज वेरी टफ ट्रीटमेंट. तो बहुत सारी दवाइयों का बैग भर के, और हर वीक में टेस्ट होते थे, और इतना ब्लड लिया उन्होंने. एक दिन मैंने डिटर्मिन किया कि बस बहुत हो गया ये, अब मैं ये ब्लड जो है ये देना नहीं चाहती. तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, और 25 जून में हम लोग यहाँ आए थे. तब से आई एम रेगुलर डूइंग मेडिटेशंस. धीरे धीरे सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए. टू द टी आई वाज फॉलोइंग एवरीथिंग, एक्सरसाइज, डाइट, मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग. बिल्कुल कहीं चीटिंग नहीं की, मतलब चीटिंग के लिए कोई स्कोप ही नहीं रखा. और जो मेरा प्रोग्रेस था उससे डॉक्टर बहुत सेटिस्फाइड थे, एंड उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली आपका ठीक हो जाएगा. लेकिन मेरा बायोप्सी भी हुआ, वो भी नॉर्मल. मेरे पैरामीटर्स सारे अलग थे, सिम्टम्स अलग थे, और बीमारी अलग थी. तो ये यूनिवर्स ने ही कोई प्लेट में ऐसी चीज दी थी जो आप ना खा सकते हो ना फेंक सकते हो, यू हैव टू कीप. लेकिन यूनिवर्स और भी बहुत कुछ देता है. थ्रू मेडिटेशन आई वाज विजुअलाइजिंग कि डॉक्टर चाहे जो भी कहे, मुझे इसको ठीक करना है. मैं थोड़ा शुरू से जो डिस्पेंसर की भी करती थी मेडिटेशन. तो क्या हुआ श्रेयांश की मेरा जयपुर में ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था. तो मेरी डॉटर जो है वो मुझे ILBS दिल्ली ले गई, डॉक्टर शिव सरीन के पास. वो भी मिस्टेक था कि वहाँ लाइन लगी होती है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता. मिस्टेकली उन्हीं के सिस्टर के थ्रू हमें VIP अपॉइंटमेंट मिल गया. एंड वहाँ मेरा जो उनके जूनियर थे असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके जो जूनियर थे असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने सारे सिनॉप्सिस तैयार करके, सारे जितने टेस्ट वगैरह थे उनके बारे में सब, हमारा डॉक्टर सरीन से जब वो मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि 5 दिन के लिए एडमिट करेंगे आपको. जो डॉक्टर थे असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि मैं इनसे कहीं मिली हुई हूँ, जबकि कभी नहीं मिले थे. फिर जब मुझे एडमिट कर लिया, वो मेरे रूम में आए तो उन्होंने कहा दिस इज द केस ऑफ ट्रांसप्लांट, बट आप 75 के हो और आपका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, आपको दवाइयों से ही ठीक करेंगे.
and he himself said, somehow I am feeling connected with you. तो मेरे को बड़ा ही हैरानी हुई कि कैसे, मतलब मेरे को भी लग रहा है और उनको भी लग रहा है, तो कोई यूनिवर्स से ही कनेक्शन आया होगा। फिर मेरा उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और ग्रेजुअली मेरा सब कुछ ठीक होता जा रहा था, लेकिन लिवर सिरोसिस वाज देयर। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होता है, ये कॉम्प्रोमाइज होगा, और धीरे धीरे वो बेटर होने लग गए। मेरा अभी लेटेस्ट जो फाइब्रो स्कैन है वो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग सिरोसिस इट वाज 79, अब 16 पे आ गया है। वाह। और जब ब्रेथवर्क आप करवा रहे थे श्रेयांश, मैंने ब्रेथवर्क ऑलमोस्ट आई एम डूइंग रेगुलरली, लेकिन जो ये ब्रेथवर्क था 2 दिन पहले वाला, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पूरे ब्रेथवर्क में एक भी सांस मेरी वेस्ट नहीं जा रही थी, और मेरी बॉडी के अंदर आई कैन विजुअलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। इस लिवर से मैं रोज सुबह उठ के माफी मांगती हूँ कि मैंने केयर नहीं की, उसके लिए वेरी सॉरी। यू आर माई बेबी, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ यू। बात करती हूँ उससे, तो उस दिन मुझे यहाँ पर कोई अजीब सी वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, और ऐसे लगा कि कुछ शिफ्ट हो रहा है, एंड मेरा लिवर मुझसे कह रहा था कि मैं ठीक हो गया हूँ। और मेरे जो बॉडी के सेल्स हैं सारे, दे वर डांसिंग, आई कैन विजुअलाइज दैट। ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे वो। एक मैंने मूवी देखी थी, डू यू ब्लीप, व्हाट द ब्लीप डू, हाँ, व्हाट द ब्लीप डू यू नो, डू वी नो, हाँ हाँ, डू यू नो, सॉरी सर, 20-25 साल पहले देखी थी। तो उसमें यही दिखाया था कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड पॉजिटिव, हाउ योर सेल्स स्पार्कल। तो वही मुझे दिखाई दे रहा था, और लिवर मुझे बार बार ये कह रहा था, डोंट वरी, आई एम ओके। फिर मैंने यूनिवर्स से कहा कि मुझे कोई सिग्नल दो, मुझे साइन चाहिए कि इट इज डन। तो शिव सरीन, डॉक्टर शिव सरीन, हु इज द बेस्ट डॉक्टर फॉर लिवर, he was clapping for me standing. That was the sign. So I don't need any evidence, but I'm sure cirrhosis is reversed. Beautiful, lovely, awesome, Thank awesome, you. awesome, awesome. Thank you, thank you. We'll take one last question and then we can end the session. Shreans? Yeah. Sorry, where are you? Shreans here. Shreans here. Yeah, okay, yeah. Hi Shreans, this is Meena here from Bangalore. So first of all, a great big gratitude to you to help me to find that we can also bless our divine souls. This is the first time I felt the nature is also blessing my soul. I couldn't, I don't have any words to tell. We bless people, we give affirmations to people. But first time when we are blessing our soul, it's an extraordinary feeling. So first, thanks for that. So my question is, the world's best swimmer, Michael Phelps, he was diagnosed with ADHD at a very young age. So his coach, Bob, he was training him for this swimming with using the visualizations and all this. So in this, I see that he used to visualize the splash of water when he goes in, and then, before itself in a mind like a movie which happens. But it's on the other side, he was also ready to take in if something happens during the swimming, like if he misses something, or if his glasses fall off, or if he is left little behind, he was also ready to get visualized with that. But that doesn't mean that it's a negative thing that he's thinking. He was also ready to take in those situations in mind and go forward. So in which way does this fit? Because we are here manifesting for positive things, everything.
sometimes we also come across some of the things which we wouldn't have anticipated, but our mind should be in a position to take it and move forward in life rather than attaching the emotions. So how does this emotion on a positive as well as taking it forward on other way happens in life? So can you please let me know about that? Right. See, this journey is not really much about manifestation. It's more about transformation. Right? आप ये प्रैक्टिस करते करते अभी थर्ड स्टेप जाना है तो पहले ब्रेन कोहेरेंस करना पड़ेगा, हार्ट कोहेरेंस करना पड़ेगा, राइट? तो यू उस चक्कर में ही आप में ही रूपांतरण आ जाता है, आप में ही बदलाव आ जाता है. You only get transformed. You're completely emotionally transformed, right? So, and you think equal to your emotions. You're wired differently now, right? तो अब वही challenges होंगे सेम अगर और चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो जाए, but now you have a resilience, you have a different perception to it. You realize that, oh, it's a role I am playing. You do not attach to those situations, right? You realize that, oh, this is only my role. And it's a temporary role I am playing. You know, I am a visitor on this planet. Because when you tune into your consciousness, when you rest in your consciousness, then you realize, oh, this is what I am. And in that state, you feel so liberated, so free. And then you know, अरे ये मेरी actual अवस्था है. This is my real nature. And then when you come back differently. Your whole view is very, very holistic. Now you're not just seeing from a surface eye, you are seeing things from a much deeper eye. So बात ये नहीं कि situation बदल रही है, but more than the situation, वो situation को देखने का नजरिया बदल रहा है, right? Now how you're perceiving that situation, that has changed, right? Because anyways, because you don't see things as they are, you see things as you are. क्योंकि आप बदल गए, तो आपको देखने का नजरिया बदल गया, और जैसा नजरिया वैसा नजारा, right? जब the way you look at things, the things will actually alter to become like that. फिर अब आप प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन देख रहे हो, प्रॉब्लम में भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, right? Because you have changed. And that is the whole goal, that you are transformed in the whole process. And then any challenges, any adversities, you are ready to face it, ready to meet with grace. In fact, it's the other way. Sometimes you feel, this challenge was not great enough. This was like a breeze. Give me more. It's okay. I can take anything. Right? Because now you have no fear. You are completely fearless. Why do we get anxiety when we are going through any challenges? You know? Because many times our happiness is dependent outside, on outside condition. But when the equation is reversed, when your happiness is dependent on your consciousness, on your eternal being, right? When that is the source, and when you are connected to that source, then you know that you don't need to outsource, right? So then, अब वो है तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो भी fine, नहीं हुआ तो भी fine. And because you know, मेरे साथ मेरी consciousness is forever. I am an eternal being. कोई दूसरा साथ छोड़ दे, नहीं छोड़े, कोई परिस्थिति आज विपरीत हो, कल प्रॉपर हो, but doesn't matter. My consciousness is always with me. And whenever I rest in my consciousness, I feel whole, I feel complete, I feel liberated, I feel pure joy, pure abundant, pure love. फिर चिंता क्या? पहले क्या होता, जब इसका अनुभूति नहीं थी, तो हम अगर बाहर कोई चीज विपरीत होगी तो हम अकेले महसूस करते थे कि अब क्या होगा, क्योंकि आपकी भावनाएं उस परिस्थिति पे डिपेंडेंट है, उस पॉजिटिव आउटकम पे डिपेंडेंट है. पर अब जब डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो आपको क्या फर्क पड़ता है?
You know that you always have somebody to back on to take to support you, to guide you. And then you know that is your original self, that is your true nature. Right? You understand that I am not a human being having a spiritual experience. I'm a spiritual being who came here to have a human experience. I'm only a visitor on this planet. So the perception changes, and because the perception changes, the reality changes. Right? Thank you, Shreans. A change of worldview. A change of worldview is a change in world viewed. Right? जब आपने का देखने का नजरिया ही बदल जाएगा तो वो नजारा भी बदल जाएगा. A man is according to the manner you look at him. Right? When you change the way you look at things, the things you look at change. This is how the universe works. Yeah. Thank you. We'll take one last and take a tea break. Yeah. After that, we have a very interesting session by Abha Shah. Abha, can you just stand up? So she's an amazing master, amazing teacher, and we'll have an interesting topic on about our body, how our body is a miracle machine, on epigenetics, just after tea. And before she starts, I'll give a little brief more introduction about her. And we are super excited to hear you. Thank you. Hello, sir. She was going through a lot of other commitments and some challenging situations. And in spite of that, you chose to be here. And you took out time to be here. So thank you, Abha. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, sir. My name is Kriti. So I have just one question. Like at one moment we say that the soul has a journey here and it has come to evolve somehow. So, and next moment we say that we create pain. The sufferings and pain is created by us. But if that soul has a plan to evolve, then that pain that we say that has created by us, then it turn out to be a blessing or good for us in that case. So how do we distinguish between them? Yeah. So as a soul, we plan challenging situations. We plan contrasting situations. No contrasting situations, no challenges, no expansion of consciousness. So like we hear so many people, we went through some life challenges. Because of some challenges, we got into spirituality. Right? Because actually, a lot of time challenges helps you to get a right perspective. If you learn from it. Because then you realize that outside world, my happiness cannot be, you get exhausted. You feel how long can I depend my happiness on things outside? Which is impermanent. Aaj hai, kal nahi hai. So, is there a better way? Is there something more? Because it is a natural urge to be happy. It is a natural urge to be joyful. So, is there some other way? And that is when, rather than looking outward, you look inward. Right? And then you found yourself. So that challenge becomes a blessing. Because of that, you become disillusioned by the world outside. And that's when you looked inside. कबीर दास जी कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई. जब बाहर की चीज सब सुख दे रही है तो फिर आपको अंदर झांकने की जरूरत ही क्या है? Then you never think of going within. And don't realize that there is something far bigger, far better, far greater already there. Right? So that's why challenges are actually, that's why it is for you. It is not against you. That's why as a soul which wants to evolve faster, plan more challenges so it can grow more faster. Right?
So my question is like, if we are creating pain, so how do we distinguish that God has some plan to make us evolve, or is it a miserable condition that we are into? No, we create condition. To pain, to suffer or not to suffer is your choice. Right? Challenges are inevitable. Suffering is optional. Right? Thank you, sir. We don't create pain. We create challenging situations so that we learn how to overcome the challenges without pain. But we go, sometimes we still go through the pain in the beginning, so that we seek, what is a better way to overcome this pain? Right? See, the truth is, we are all swimming in consciousness. But the truth is, because we've been conditioned to believe we are conditioned to know that seeing is believing. We're hypnotized to believe that happiness lies outside of us. So since childhood, we start becoming outward driven all the time. And in the bargain, we forget that the source of happiness is already within us. We are so used to outsourcing it outside. We forget that. We forget that we are pure consciousness, which is untainted, which is unaffected, which is nirakar, nirvikar, nirdosh, nishkalank, which has not been influenced by any of those ups and downs of life, which has still remained absolutely pure, pristine. And we can rest in that anytime. But we forget that. Because it is too good to be true. Something so amazing, how can it be so close to you? It's like we are thirsty it's like a fish thirsty in a water, in the pond, that is irony, right? अगर कोई बोले कि अरे ये मछली प्यासी है, we'll laugh at it. But that is actually our state. We are swimming in consciousness, and yet we are unaware of it. Because it is so close, it is too good to be true. Because we've been trained to work hard. We've been trained in hardship. No pain, no gain. तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. Right? So this is how the social conditioning is. This is what we are conditioned. So that's why we always think like that. And that's why we never believe that, we are pure consciousness. We never believe that, we are that Buddha. We are that Jesus. We are that prophet. We are that Guru Nanak. We don't believe that. That we have the same potential. Right? So, but that's why challenges actually help you to turn inward. Sometimes even depression is a blessing. I've seen so many cases of depression turning into spirituality and life change. For me personally, I went to depression, and then I got TB, and then I got into spirituality. And I said, thank God for the depression. Thank God for the TB. And what was happening during depression? I was disillusioned by everything outside. I was not enjoying any friends, company of any friends, or any dinners outside, or normal party life. I was somehow, that was not giving me joy. So depression is depressed from the compulsion to work. Sometimes depression disillusions you from the outside world. Then there's the only way now is to go within. And then you go within. Right? Because when the student is ready, the teacher, because then there's a deep quest. How can I be happy? What is the way out? When, Rumi said, wound is the place where the light enters you. Right? When the world pushes you down to your knees, it is a perfect time to pray. जब जीवन आपको
आपको घुटने पे लाके टिका देता है, तो प्रार्थना का वही सबसे अच्छा समय है, राइट? So that is the time you have a deep, now you want to go, you have a deeper desire, and then something will, some in form of some teacher, some book, some YouTube podcast or something, some meditation, some things will appear. And you try and you say, yeah, I felt better. Right? And as you keep doing more, lives get better and better and better. And then you live happily ever after. Thank you. All right, friends. So we'll take a break. We'll come back at 1:15. Yeah? Thank you. See you then. Thank you. Thank you. Thank you all. Welcome back, everybody. Please settle in. All right. So now we are going to get into the next part of today's session. And do you all agree that our body is a miracle machine? Yeah. So now Miss Abha Shah is going to shed some light on this. She's going to take us through a talk where we'll understand our body better and how it is a miracle machine. And she's going to speak about epigenetics. Abha Shah's path weaves through finance, fashion, and transformation. As a chartered accountant and founder of a women's fashion label, she brings together precision and creativity in all that she builds. A certified nutritionist and lifelong wellness enthusiast, Abha began her meditating in childhood and completed her first Vipassana retreat at 18. That's very young. Today, she actively studies and applies Dr. Joe Dispenza's teachings on neuroscience and quantum potential. With logic as her compass and consciousness as her calling, Abha bridges the world of strategy and soul. Her grounded yet expansive approach inspires others to live with alignment, awareness, and power. And today she is going to share that with us. So I'd like to welcome Abha on stage. We can give her a louder round of applause. We're welcoming her. Let's do it PVI style. So a little bit more about Abha. I know her since almost more than 20 years. And
she's one person which I've seen that who's really applying spirituality in her personal life, in her day-to-day life, doing, having her own fashion business and family, mother, daughter, in all aspects, but yet growing, applying spirituality in the midst of all challenges. I've always seen her calm, always relaxed, always aligned. And that's when I also, and actually when we started teaching, when I started 8 years back, when I started teaching, we started it together as foundation. So, but then she took a break from teaching, and now I've been requesting her. So finally, in last 6 months, she's again started teaching now. So great to hear you now. Abha, we're looking forward to your session. Thank you. Thank you so much. Shreans is Also- always so kind. Also about, she's from a family of meditators. Her father, Sri Vallabh Bansali, very prominent business figure and very deep into Vipassana. He is the head of Global Vipassana Foundation. And he goes for meditation like 30 days, 40 days, in spite of all the businesses and all the social thing. And I wonder, how does he do that? I've not yet done Vipassana yet. मैं 10 दिन के लिए भी नहीं जा सकता हूँ. And how he person like that goes for 40 days. So it's amazing. And her mother, again, great meditator. They all come from Vipassana meditator. All families into Vipassana meditation. And that's where Abha did her first Vipassana at the age of 18. Her sister Shubha is also here. Even she did her first Vipassana at the age of 18. So it's amazing. So it's in her genes now. We'll talk about genes. Thank you you. so much, Shreans. Thank you, Nirvika. Y'all are so generous with the good words that y'all have, and that's Shreans. I won't be here as much as I give thank you to my family, the family I was born into, because of which I came into this path. Shreans has been a mentor, guide, cheerleader in my journey of 20 years that I've known him. I'm sure you all have all experienced Shreans and the Guru in Shreans and the humility with which Shreans teaches everyone. It's very easy to learn because he lives what he teaches. So thank you Shreans. It's a privilege and an honor. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला ये मंच पे आने का. आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि आप समय निकाल के यहाँ आए और मैं आपसे आज बात कर सकती हूँ. Thank you very much. So let's dive right in. हमारा मनुष्य जीवन जो हमें मिला सबसे सर्वोत्तम क्रिएशन है यूनिवर्स का. सिर्फ यही लाइफ फॉर्म में जब हम ह्यूमन बीइंग्स बन के आते हैं हम इवॉल्व हो सकते हैं, हम मोक्ष पा सकते हैं, एनलाइटन हो सकते हैं. और कोई लाइफ फॉर्म में ये पॉसिबल नहीं है. Only when we are born as humans can we evolve, can we learn, we can grow, we can go to and ultimately reach enlightenment. ये कैसे हो सकता है? How is this possible? Because we have our human bodies. ये जो हमारी बॉडी है ये वेसल है जो हमें ये जर्नी पे ले जाती है. इसके थ्रू हम इवॉल्व हो सकते हैं. पर क्या हम कभी इसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक यू मानते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं? बहुत रेयरली. जैसे नीलम आंटी ने आज कहा मैं मेरे लिवर को रोज थैंक यू सॉरी बोलती हूँ. पर हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक चमत्कार से कम नहीं. इट इज रियली अ मिरेकल मशीन. मैं थोड़े फैक्ट्स शेयर करूंगी. शायद मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी जब मैंने ये सब फैक्ट्स सुने थे. शायद आप भी हो जाएंगे. तो एनीबडी आउट हियर नोज हमारा हार्ट 24 घंटे में, वन डे में कितनी बार धड़कता है? एनीबडी? It beats 100,000 times. 1,00,000 बार हमारा हार्ट बीट करता है एक दिन में. जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 2 गैलन ब्लड पंप करता है और 1 घंटे में 100 गैलन से ज्यादा. और ये जो हमारा खून है 24 घंटे में
60,000 miles. It travels 60,000 miles of blood vessels in 24 hours. मतलब मानो आपने धरती का आधा चक्कर लगा लिया हो. Can you imagine? और ये जो पूरी क्रिया है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वो सिर्फ हमारा शरीर का 3% काम है. 97% दूसरे बहुत सारे काम चल रहे हैं साइड बाय साइड. हमें पता भी नहीं चलता, हम अवेयर भी नहीं है इसके बारे में कि ये सब कुछ हो रहा है. आपके बॉडी में करीबन 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स हैं. 50 लाख से 70 लाख करोड़ सेल्स. और हर एक जो सेल है वो एक सेकंड में 1 लाख से 60 मिलिट्रिलियन काम कर सकता है. इतने सारे काम इतने फास्ट हमारे सेल्स करते हैं. इतना फास्ट होता है, स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट. इतना फास्ट इन लोग के आपस में कम्युनिकेशन चलते हैं, हमें नहीं पता. जो हमारा हर सेल है, हमारी जो हर कोशिका है, इट इज लाइक अ बैटरी. उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एनर्जी जनरेट करता है. Every second it is generating 0.07 volts of energy. I'm sorry I'm giving you numbers because with the numbers and the इतनी electricity हम generate करते हैं. Now multiply 0.07 volts into the 50 trillion cells that we have. We are producing 3.5 trillion tons of energy every second. Every second, that is what our body is producing. But we are not aware. We are not aware. तो ये energy हमारी ऐसे ही खर्च होती जाती है. हर सेकेंड हमारे 2.5 करोड़ सेल्स, 25 मिलियन सेल्स खत्म हो जाते हैं, फिनिश. और उसी सेकेंड 2.5 करोड़ सेल्स नए भी बन जाते हैं. सो हम हर सेकेंड रीजेनरेट हो रहे हैं. पर अगेन वी डोंट नो, वी डोंट पे अटेंशन टू इट. तो ये सब कैसे हो रहा है? There has to be some intelligence that is making all this happen. कुछ तो कोई तो होगा, कुछ चमत्कार होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. So it is the same universal intelligence that makes the universe run, that makes the sun shine, that makes the flowers bloom, जिसके वजह से तारे चमकते हैं. ये जो universal intelligence है, जो हमें चारों तरफ दिखती है, वही intelligence हमारे अंदर भी है, जो हमारा शरीर चलाती है. And all it wants for us is to be happy, healthy, keep growing, evolving. तो जब हम इस एनर्जी के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो हम हमारे बॉडी के पार्टनर्स बन जाते हैं. हम पार्टनरशिप में काम करने लगते हैं. We are not wasting that energy. We are not working against our bodies. So just take a moment to appreciate your body. Understand who we are. When I look in the mirror, who do I see? मैं आभा हूँ. हाँ, मैं आभा हूँ. पर मैं क्या एक आभा हूँ? नहीं. मैं 50 ट्रिलियन सेल्स की एक कलेक्शन हूँ. हर एक सेल अपना काम खूबखू कर रहा है और उसका गवर्निंग बॉडी है मेरा माइंड. And all this is happening on its own. That is the miracle which all of us are. So appreciate your body a little more from today. So we're going to just be watching a short video now. When you were first conceived, you were a double strand of DNA in a fertilized ovum. Dividing 50 times, you had over 100 trillion cells, more than all the stars in the Milky Way. Then you were born into existence. Each of your cells do over 6 trillion things
per second. Just think how a human body knows how to kill germs, digest, make babies, and talk all at the same time. The miracle is you. The miracle is you. Your heart beats 101,000 times per day. During your life, it will beat 300 million times. Each day, you take 23,000 breaths. Your blood travels 60,000 miles per day on its journey through your body. 25 million cells are being produced in your body every second. You blink at least 15,000 times today. The miracle is you. Your brain has about 100 billion nerve cells. If all your DNA was stretched out, it would reach the moon 6,000 times. You shed 600,000 particles of skin each hour. Your bones are 4 times stronger than concrete. Your eyes can distinguish up to 1 million color surfaces and take in more information than the largest telescope in the world. Your lungs inhale over 2 million liters of air daily. The miracle is you. When you touch anything, a message is sent to your brain at 124 miles per hour. Your skin consists of up to 280,000 heat receptors. The length of your blood vessels would circle the globe 2.5 times. You have the ability to distinguish up to 10,000 different smells, and your tongue has over 10,000 taste buds. The miracle is you. The miracle is you. The miracle is you. So listen to the music. Listen to the music deep inside. Listen to the music. Just listen to the music deep inside. There are universes dancing inside your body. There are sunsets shining in your heart. There are symphonies playing in your toes. Rivers of blood effortlessly flows. There is a full moon beaming in your belly button. There is a cold breeze blowing in your lungs. There is a gentle rain that falls from your eyes. There is an army of love in every step. There is lovemaking in your every motion. A body of devotion. The miracle is you. The miracle is you. So realize, visualize, it's all inside a galaxy of amazement. Should you ever forget, just close your eyes and listen to the music. Just listen to the music deep inside. Listen to the music. Listen to the music deep inside. The miracle is you. The miracle is you. So yes, the miracle is you. Today you all know a little more science about your own body. Let's give you some more interesting things. So जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे 2.5 करोड़ सेल्स हैं जो हर सेकंड रीजेनरेट होते हैं, खत्म होते हैं और नए बनते हैं. तो वैसे धीरे धीरे क्या होता है? Your entire body rebuilds itself in less than 2 years. And 90% of it rebuilds itself in 365 days. So धीरे 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 अपने own pace पे cells regenerate होते हैं और
2 साल में हम पूरे के पूरे नए बन जाते हैं। तो अगर हम इतना हमारा रीजनरेशन हो रहा है तो हम हील क्यों नहीं होते? होने चाहिए। तो ये हम समझेंगे एपिजेनेटिक्स में। Every cell in your body eventually dies and is replaced by new cells. Every day is a new opportunity to build a new body. जो आपका डीएनए है हर 2 महीने में रिन्यू हो जाता है। स्किन है 1 महीने में रीबिल्ड हो जाती है। हमारी बॉडी का नेचुरल जो हमें जैसे बनाया गया है, जैसे कुदरत ने हमें बनाया है, हमारी प्रोपेंसिटी है ठीक रहने की, हेल्दी रहने की। तो बॉडी अपना काम करती रहती है हमें हेल्दी रखने का। तो अगर जैसे हमें कभी खरोंच लग जाती है या चोट आ जाती है, हम कुछ नहीं करते हैं तो भी थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, क्लॉट हो जाता है और स्किन हील हो जाती है। तो द बॉडी इज ऑलवेज डूइंग इट्स वर्क इन आवर फेवर। लिवर, your liver rebuilds itself in 6 weeks. Stomach lining, the lining in your stomach rebuilds itself in 5 days. Brain, 1 साल में आपका पूरे सारे ब्रेन सेल्स रिप्लेस होके नए हो जाते हैं। Blood, in 4 months your blood renews itself. Your body builds a whole new skeleton in 3 months. तो 3 महीने में हमें कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर सिर्फ वो बोन्स को अलाइन करके प्लास्टर लगा देते हैं। तो यही साइंस है, क्योंकि वो सेल्स रीजनरेट होती है। 3 महीने में कोई भी फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, वो हड्डी जुड़ जाती है। So yes, so we all know today, you all have been here in the workshop for 3, today's your 4th day. So you all know how powerful we are and how much we are capable of. And our body is our supporting instrument to get where we want to go, to fulfill our dreams, to live better lives, to heal ourselves. So we'll go to a little more science of how our body builds itself. So that is the science of epigenetics. Genetics is the entire gene pool that you inherit from your parents, grandparents, etc. जो हम genes लेके पैदा होते हैं हमारे दादा मामा चाचा पूर्वजों से, that is our genes. और ये जनरली मानता है कि आपके जीन्स में जो बीमारी आती है वो आपको कहीं ना कहीं, हमको बचपन से ही हम सोचने लगते हैं नहीं नहीं फैमिली में शुगर है, तो शुरू से लोग ध्यान रखने लगते हैं कि नहीं नहीं शुगर है, डायबिटीज आगे जाके आ सकता है, कैंसर है तो कैंसर साइंस के लिए कुछ भी होता है, कैंसर तो नहीं है, हार्ट डिसीज है तो आगे जाके तो हार्ट डिसीज होने वाली है। ऑटोमेटिकली ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन होती है, हमको लगता है ये हो जाएगी, पर सिर्फ 1% जो हमारे जीन्स हैं वो हेरिडिटरी है। जो बाकी सब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हम बदल सकते हैं, उसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यही है एपिजेनेटिक्स। एपी मतलब अबव जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स के ऊपर कुछ है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे जीन्स को, जो डिसाइड करता है हमारे कौन से जीन्स ऑन होंगे, कौन से जीन्स ऑफ रहेंगे। और उसको कौन इन्फ्लुएंस करते हैं? हम। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम हमारे जो सेल्यूलर एनवायरनमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल से, इमोशनल मेंटल वेलबींग से, वो हम बाद में डिटेल्स में जाएंगे। पर यस, ये बहुत बहुत ज़रूरी है समझना दैट जीन्स डू नॉट मेक योर डेस्टिनी, यू मेक योर डेस्टिनी। ये समझना कि हमारे जीन्स में कोई बीमारी है तो हमें आएगी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे पहले श्रेयांश ने फ्री विल के बारे में बात की। फ्री विल मतलब हमारे पास चॉइस है, हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं। ऑल दोज आर आवर चॉइसेस एंड दे इन्फ्लुएंस व्हाट आवर information and energy is going to look like, what genes are going to finally be on and stay off. We'll play the Petri disk video. So there was a scientist, Dr. Bruce Lipton. उन्होंने 1970s में एक एक्सपेरिमेंट किया था. He is also known as the father of epigenetics. He's a microbiologist. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या किया, जो हमारे ब्लड में जो स्टेम सेल्स होते हैं जो अपने आप ग्रो करते हैं, उनको पेट्री डिश में रखा. सब स्टेम सेल्स को
पेट्री डिश में रखा, 5 अलग अलग पेट्री डिश में रखा, और हर पेट्री डिश में सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया। तो उन्होंने देखा जो वो स्टेम सेल्स हैं सब एक जैसे ग्रो होने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, वो स्टेम सेल्स लिए, उनको अलग अलग पेट्री डिश में रखा, और हर पेट्री डिश का जो एनवायरनमेंट है उसको अलग कर दिया। In one petri dish, he created an environment of the heart. In one, he created of the liver. In one, he created of the brain. And after some time, he observed कि जैसा जिस पेट्री डिश में जो स्टेम सेल था वो वैसे बनने लगा। जो हार्ट वाला स्टेम सेल था वो हार्ट जैसे बनने लगा, जो लिवर वाला था वो लिवर जैसे बनने लगा। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बाहर आया, मैं आपको बाद में बताती हूँ, एक बार ये वीडियो देखते हैं। तो इससे ये उन्हें समझ में आया कि जो स्टेम सेल्स हैं वो अपने आप डिसाइड नहीं करते कि उन्हें क्या बनना है। उनके आजू बाजू जो सराउंडिंग्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो डिसाइड करते हैं कि वो सेल क्या बनेगा, कैसा बनेगा। तो जो इंफॉर्मेशन और एनर्जी वो स्टेम सेल के आजू बाजू है, वो स्टेम सेल का रूप लेती है। दैट इज व्हाट गिव्स बॉडी टू द स्टेम सेल। As you can see, the stem cells can become anything. The stem cell can become neurons, brain, intestine, etc., etc. जैसे ही हम उनका environment बदलते हैं, वो stem cells बदलने लगते हैं। तो this is a very, very important fact and an important thing to remember, that our cells are also taking information from the environment, and we are influencing the environment. तो जीनोम और एपिजीनोम, जैसे मैंने बताया, हमारा सिर्फ 1% जो हमारा जीन्स है वो हेरिडिटरी होता है, विच इज जीनोम। वो स्टैटिक होता है, वो बदला नहीं जा सकता। जैसे आप मानिए कोई मूवी की स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट है जैसी है वैसी है, तो वैसे ही हमारा जीनोम है वो स्क्रिप्ट है। Epigenome can be altered dynamically. It's rapidly changing. So 99% of our genetic material is like an epigenome. Like आप समझिए जैसे कोई डायरेक्टर है, ओके, वो डिसाइड करता है कि ये स्क्रिप्ट में से कौन सी लाइन कैसे पढ़ी जाएगी, कब पढ़ी जाएगी। तो एपिजीनोम है वो डायरेक्टर है, वो डिसाइड करता है कौन से जीन्स ऑफ होंगे, कौन से जीन्स ऑन होंगे, कौन से जीन्स ऑफ रहेंगे। और इस एपिजीनोम के मालिक हैं हम। और जो फैक्टर्स हैं जो एपिजीनोम को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम वापस बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जो एपिजीनोम है वो ट्रांसजेनरेशनल होते हैं। जैसे मानिए आपके फैमिली में कोई but like through many generations there is a certain way of living which is not very suitable. You at your level, आज आपको जब पता है, आप ज़्यादा अवेयर हैं, आप ये वर्कशॉप आए हैं, आपने चीज़ें सीखी है, तो आप वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है आप आपके लेवल पे चेंज कर सकते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको वो चेंज जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होगी। तो ऐसे ही ये जो बहुत नॉर्मल है, राइट, हमारे फैमिली में जो खाने पीने की प्रथा है, बिहेवियर की प्रथा है, ईगो की प्रथा है, वो पैटर्न्स पिकअप कर लेते हैं, बचपन से ही पिकअप कर लेते हैं। पर जब हम अवेयर हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, हम मेडिटेशन सीख लेते हैं, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हम चेंज करते हैं हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चेंज होने लगती है। एंड वी डू अ ह्यूज फेवर टू द जनरेशंस टू कम। हमारे बॉडी कैसे बनती है? जो सबसे छोटा पार्ट है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी इज एन एटम, यानी परमाणु।
एटम जब ग्रुप करते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स यानी अणु, फिर उनके बीच में सब केमिकल लेन देन होते हैं, रसायन पैदा होता है तो बनता है सेल यानी कोशिका, उससे बनते हैं टिश्यूज, उससे बनता है ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन, और ये जब ऑर्गन्स कलेक्ट होते हैं तो पूरे सिस्टम्स बनते हैं और ऐसे हमारी फुल एंड फाइनल बॉडी बनती है। पर सबसे छोटा पार्ट क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी इज एन एटम. Atom is what is the building brick of our body. और अभी साइंटिफिकली हम सब जानते हैं एटम इज जस्ट 99.99% information and energy and only 0.01% matter. So we are all 99.99% information and energy. आप जो भी चीज यहाँ देख रहे हैं, ये रिमोट, टेबल, स्टेज, 99.99% इंफॉर्मेशन और एनर्जी है, सिर्फ 0.01% मैटर है। पर क्योंकि हम इतनी जल्दी बदल रहे हैं, हमको लगता है कि हम मैटर ही हैं, इतनी जल्दी हमारी ये जो हमने जैसे बताया जनरेशन और रीजनरेशन एवरी सेकंड चल रहा है, तो हम रियलाइज नहीं करते कि हम एक्चुअली इंफॉर्मेशन है और एनर्जी है। और ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एवरी सेकंड बदल रही है, हमारा जो ब्रॉडकास्ट है वो एवरी सेकंड बदल रहा है। जैसे अगर आप एक कैंडल लेंगे, इफ यू सी अ कैंडल व्हिच इज बर्निंग, यू थिंक इट्स द सेम विक व्हिच इज कंटिन्यूइंग, वो सेम लॉ है जो जले जा रही है, पर क्या वो सेम लॉ है? नहीं, वो एवरी सेकेंड नई लॉ चल रही है। तो वैसे ही हम एवरी सेकेंड हमारा जो एनर्जी और इंफॉर्मेशन है वो बदलता जा रहा है। This is a very, very important thing to remember, that whether we are aware or we are not aware, what we are creating just now, we are creating something. So yes, when you become aware, you know what you are creating. We are a soft technology. Each cell of our body stores a record in the nucleus of the chemical transaction that makes the cell. So we are creating, we are constantly creating. That information is getting stored in our cells. And that information is being used to make new cells. तो हम एक सॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, यानी जैसे हम ये जो हमारी बॉडी दिख रही है वो हार्डवेयर है, पर इसको जो अंदर चलाने वाला है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर आप ब्रेन लेंगे तो ब्रेन आपको फिजिकली दिख रहा है, यू कैन सी योर ब्रेन, बट कैन यू सी द थॉट्स? कैन यू सी द विजडम? यू कैन नॉट सी द विजडम। दैट्स द सॉफ्टवेयर विच इज देयर। अगर आप आपका हार्ट लेंगे तो आपको हार्ट दिखता है, अंदर की जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, गुस्सा है, वो नहीं दिखता। तो वैसे ही हार्डवेयर इज ओनली 0.01%. 99.99% is the software that is making our body work. The information and energy that our body is receiving moment to moment, that is our soft technology, which is constantly changing. Our consciousness is changing every second through our thoughts, feelings, lifestyle choices. Our consciousness is changing. The 2.5 crore cells that we are generating every second is using the new information that you're giving it every moment. Each cell of our body stores and retrieves information. So cells, now we know, are made, use the broadcasted information to them to recreate themselves. जो cells के nucleus में हम information भरते हैं, वो cells से हम नए cells बनाते हैं। तो जो ये जैसे आपने देखा कि वो जो स्टेम सेल्स है वो डिसाइड नहीं करते वो क्या बनेंगे, उनका जो इंफॉर्मेशन फील्ड है, जो एनर्जी फील्ड है, उसके हिसाब से वो स्टेम सेल्स चेंज होते हैं। वैसे ही आप लीजिए जैसे कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन की अगर हम एनर्जी और इंफॉर्मेशन फील्ड चेंज कर दें तो वो डायमंड बन जाता है, हीरा बन जाता है। और वही कार्बन की हम इंफॉर्मेशन फील्ड चेंज कर दें तो वो कोयला बन जाता है। करेक्ट है, सेम चीज कार्बन। वैसे ही आप एक वाटर मॉलिक्यूल को लीजिए, H2O। H2O की अगर हम एनर्जी और इंफॉर्मेशन चेंज करके उसको गर्मी में रख दें तो वो भाप बन जाएगा, और अगर वही वाटर मॉलिक्यूल को हम ठंडी में रख दें तो वो बर्फ बन जाएगा। The only thing that is changing is the energy and information that that molecule has. So अगर
हम वैसे ही एज आई सेड हम हर क्षण हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं. तो वो जो एंडोर्फिन्स का जो केमिकल है वो हमारे सेल्स में स्टोर हो जाता है और उससे नए सेल्स बनते हैं. अगर हम बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहते हैं तो बॉडी में कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होता है. कॉर्टिजोल से हमारे नए सेल्स बनते हैं. सो द क्वालिटी ऑफ आवर सेल्स are determined by the information that we are storing in the nucleus of the cells. And that information is dependent on the choices we are making. Each cell of our body uses an antenna to receive and broadcast information. हमारे cells के ऊपर छोटे छोटे antennas होते हैं, जैसे वो सब information grasp करते हैं, store करते हैं और अपने आप को regenerate करते हैं. तो अगर हमें हमारे बॉडी का टेलीकास्ट बदलना है, इफ वी वांट आवर बॉडीज टू लुक डिफरेंट, वी हैव टू चेंज द ब्रॉडकास्ट. करेक्ट? नाउ वी अंडरस्टैंड दैट जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को मिलेगी वही बाहर आएगी, वही हमें दिखेगा. सपोज आप कोई शो देख रहे हैं टीवी पे, हॉरर शो देख रहे हैं, आपको बहुत घबराहट हो रही कि अब मुझे, फिर आप डिसाइड करते हैं मुझे ये शो नहीं देखना, मुझे कुछ फनी देखना है, कॉमेडी शो देखना है. तो आप क्या करते? नया टीवी तो नहीं लाते, आप सिर्फ चैनल चेंज करते हैं. और चैनल चेंज करते ही वो जो एंटेना है उसका ब्रॉडकास्ट जो वो कैच करता है वो चेंज हो जाता है और टेलीकास्ट चेंज हो जाता है. तो अगर हमें हील होना है तो हमें सिर्फ हमारा ब्रॉडकास्ट चेंज करना है. जो हम एनर्जी और इंफॉर्मेशन, ऊर्जा और जानकारी हमारी सेल्स तक पहुंचा रहे हैं, हमें सिर्फ वो चेंज करनी है. और अब हम ये वर्कशॉप में श्रेयांस के थ्रू बहुत कुछ सीख चुके हैं. सो हील होना इज नाउ इज इजी एंड इन योर हैंड्स. तो ऐसा क्यों होता है जब हम जानते हैं हमारे सेल्स रीजेनरेट हो रहे हैं तो हम हील नहीं हो पाते? यही कारण है, क्योंकि हमने हमारी ब्रॉडकास्ट नहीं बदली. We have not changed the energy and information of our cells to heal. I'll give you another example. जैसे आप देखते हैं कोई लोगों को एक्जिमा पैचेस निकलते हैं, बहुत सारे कारण होता है, पर एक कारण होता है लंबी टाइम तक आप स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं. सो इट्स वेरी कॉमन दैट यू गेट एक्जिमा पैचेस. फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको स्टेरॉइड की क्रीम देते हैं, यू अप्लाई द क्रीम एंड द एक्जिमा गोज अवे. बट आफ्टर सम टाइम वो वापस आ जाता है और कहीं निकल जाता है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमने हमारे सेल्स का ब्रॉडकास्ट नहीं बदला, उसकी एनर्जी और इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं बदली. दवा लगाने से इट इज जस्ट वो हमने पैचवर्क किया उसका. पर जैसे ही हम ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका ब्रॉडकास्ट बदलता है, जैसे आप किसी को एक्जिमा है, वो यहाँ आए वर्कशॉप में, उन्होंने यहाँ 4-5 दिन ध्यान किया, अपने बॉडी में बहुत एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस किए, इतनी सारी चीज़ें सीखी, जाके रेगुलरली उन्होंने मेडिटेट किया, तो आप देखेंगे कि उनका एक्जिमा हमेशा के लिए चला जाता है. बिकॉज नाउ ही नोज हाउ टू चेंज द ब्रॉडकास्ट दैट देयर सेल्स रिसीव. सो हीलिंग हैज टू हैपन एट अ सेल्यूलर लेवल. Healing happens at a cellular level. So we are made up of proteins. Our body is made up of proteins. Proteins are our building block. And what makes proteins? Our DNA makes proteins. Good information in the cells will make healthy DNA. Healthy DNA will make healthy proteins. Bad DNA, bad information to the cells will make bad protein. और यही प्रोटीन है जो हमारी बॉडी कैसी होगी, हेल्दी नहीं होगी, प्रोटीन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. तो हम कैसे प्रोटीन बना रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. Now this is a very important slide. हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है हम हमारे सेल्स में हम क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जीन्स को, क्या डिसाइड करते हैं कौन सा जीन्स ऑन होगा, कौन सा जीन्स ऑफ रहेगा. तो ये सारे फैक्टर्स हैं
जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सेल्यूलर वेलबींग को। सबसे सबसे ज्यादा 90% जो इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारा इमोशनल और मेंटल हेल्थ। वो उसका जो पेबैक है वो बाकी सब चीजों से आता है, मैं उस पर वापस लास्ट में आऊंगी। लेट्स गो टू द अदर फैक्टर्स। एनवायरमेंट, आप कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, आप कैसे, इफ यू आर स्टेइंग इन टू मच पोल्यूशन, हाउ मच सनलाइट आर यू टेकिंग, that has its own energy and information that is stored in your cells. Exercise, you're doing yoga, you're doing pranayam, you're producing endorphins, that has a lot of positive effect on your body, versus आप आलसी हैं, तामसिक हैं, आराम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो एनर्जी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में स्टोर हो जाती है। डाइट, अन्न बनाए मन, we've heard that कि खाने का हमारे विचारों पे, हमारे शरीर पे भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो हम कैसा खाना खाते हैं, हमारी चॉइसेस क्या हैं, कितना खाना खाते हैं, किस टाइम पे खाना खाते हैं, खुशी से खाना खाते हैं, गुस्से में खाना खाते हैं, वो सब के जो केमिकल रिकॉर्ड्स हैं that gets stored into our cells. Money, a very important commodity. Again, a very big factor in determining the health of ourselves. तो पैसा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी, पर बहुत आपका रिलेशनशिप पैसे से कैसा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है, सब कुछ होने के बाद भी दे वांट टू बी, उनको कोई रेस लगी रहती है, दे हैव दिस ग्रीड इन देम, दे वांट मोर, दे वांट मोर, सो दैट डिससैटिस्फैक्शन हैज इट्स ओन एनर्जी। और लोग होते हैं जो संतुष्ट होते हैं, जिनके पास है कि भी हमारे को जो भगवान ने दिया हम खुश हैं, वो जो सैटिस्फैक्शन की एनर्जी है वो अलग एनर्जी होती है उसका। सो मनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगेन इट हैज एन इमोशनल पे बैक कि आप कैसे फील करते हैं पैसे से, आपके पैसा कम या ज्यादा से आप कैसे फील करते हैं, तो उसका इमोशनल पे बैक होता है। पीपल, रिलेशनशिप्स, हमें हमारे घर में पार्टनर से, दोस्तों से कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ऑफिस में कैसे रिलेशनशिप्स हैं, वर्क प्लेस में कैसे रिलेशनशिप्स है, बाय नेचर हम कैसे हैं। हम अगर ओवर सेंसिटिव हैं, हमें चीज़ें जल्दी खराब लग जाती है, गुस्सा आ जाता है, हम जज कर लेते हैं, हम वो सारे इमोशंस स्टोर कर लेते हैं, वर्सेस हमें लेट गो करना आता है। हम समझ सकते हैं कि नहीं, उसका भी कोई पर्सपेक्टिव रहा होगा, तो वो हम हमारे रिलेशनशिप्स हम कैसे मेंटेन करते हैं, हमारे रिलेशनशिप में हमारा एटीट्यूड कैसा है, वो भी बहुत जरूरी। आप many times our grudges are against people. Oh, he told me this, she told me this, he didn't give me this, she didn't invite me. All these things होता है, we are all humans, हम लोग सबको होगा, we will feel happy, we'll feel sad, we'll feel angry, we'll feel wronged, but now we know that we don't have to store. The minute we get awareness, we are able to deal with it, because we are doing yourself a favor, you're not doing the other person a favor. By aligning yourself, by taking your energy back, you're just doing yourself a favor. So how your relationships are with people, or how your attitude is in your relationships, that determines your emotional and mental health. Toxins, of course, आप कितना अल्कोहल पीते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स whatever लेते हैं, उसका जो केमिकल क्रिएशन होता है वो आपके सेल्स में स्टोर होता है, उस इंफॉर्मेशन से वापस नए सेल्स बनते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के अलावा सबसे ज्यादा जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है वो हमारा इमोशनल और मेंटल हेल्थ। और ये रेजिंग योर वाइब्रेशंस इज जस्ट अबाउट मेकिंग श्योर दैट यू आर maintaining a healthy emotional state for longer and longer periods of time. It's a journey. We are all growing every day. So ये जो emotional health है हमारा, वो इतनी fast बदलता है एक सेकंड में, right? हमें सिर्फ सोचने की देरी है. You get a thought and you start feeling the emotion of that thought. And that emotion gives you another thought, which again supports the same emotion.
और ये जो सर्किल है वो चलता जाता है, और व्हेन यू आर नॉट अवेयर तो ये सर्किल लंबे पीरियड तक चलता है, और वो केमिकल हम स्टोर कर लेते हैं, उससे नए सेल्स बनते हैं. पर व्हेन यू गेट अवेयर यू आर लाइक, ओ व्हाट एम आई डूइंग, लेट मी चेंज. मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. सपोज किसी को फ्लाइट में बैठने से बहुत डर लगता है, पर उसको कोई ज़रूरी काम से जाना, ही हैज़ अ फ्लाइट टू कैच आफ्टर 2 days. तो पर वो आज से उसको बहुत घबराहट हो रही है कि नहीं मुझे फ्लाइट लेनी है. अरे उसका पसीना छूटने लगता है, उसका बीपी हाई हो जाता है. अरे अभी तक तो उसने बैग भी पैक नहीं किया. बट जस्ट दैट थॉट हैज स्टार्टेड चेंजिंग द केमिकल्स ऑफ हिज बॉडी. The same way, when you are about to meet a friend, go to a nice restaurant where you get your favorite food, तो वो सोच के आप खुश हो जाते हैं, आपके मुंह में पानी आने लगता है. You're already tasting the food, you're excited, you're thinking what you're going to wear. And that positive chemical is already changing your inner chemistry. So our thoughts and emotions are so powerful. Those are the manifestation tools that we have learned, right? How to think. When we think of something, we start feeling, and those elevated emotions raise our vibrations. When we think negative thoughts, we drop our vibrations. So all incoherence where you're not coherent causes disease. Disease is nothing but incoherence in our cellular information, in the broadcast that we are giving. But when, with awareness, with practice, we are able to bring ourselves in coherence, we heal. We can change our broadcast, we can heal. Neelamji today shared her beautiful story, how she partnered with her body, she supported her body, she put out her intent that she wants to heal, and she worked religiously on all these factors, on eating right, exercising, etc., changed her broadcast to heal. So, friends, thank you so much for listening to me. I hope I could explain to you all little science about healing, explain to you all that how powerful and capable we are and responsible of where we are headed, what kind of genetic destiny we are going to write for ourselves. So next time somebody tells you that you're headed for a genetic destiny, you know better. Whether you want to tell them the science or no is up to you, but you know better. So we are the creator, sustainer, and the destroyer of ourselves. So let's be responsible for what we are doing and what we are creating. Thank you. So this is, again, it's a remarkable video. Have a look, then I'll explain. So any discussion regarding this feeling-based prayer, this lost mode of prayer, sometimes seems a little more than academic until we can actually apply it in our lives or see it applied in our lives. It's in the late 1990s that I had the opportunity to do precisely that, when I saw the footage documenting the healing of a life-threatening condition within the body of a living woman using precisely the kinds of techniques that we're speaking about right now. For me, it was this kind of information that took this lost modality of prayer out of the realm of academics and into something that's very real that we can apply in our lives. I had the opportunity during that time to see some video footage of the healing of a 3-inch diameter bladder cancer inside the body of a woman who, by Western medical standards, had been diagnosed inoperable. She had gone, as a last resort, to a medicineless hospital in Beijing, China. It was in this medicineless hospital where they began simply by addressing the life-affirming ways that she could change how she was living her life. They taught her life-affirming ways to breathe and life-affirming ways to nourish her body, gentle movements to stimulate the energy centers in her body. And as she was doing these and strengthening her body, at one point it made sense to undergo a process. Now, I'd like to share this. I'd like to describe it to you.
is a very potent example of how the feeling world inside of our bodies has a direct effect, in this case, a very graphic effect on the world beyond our bodies. So in the video documentation, the film shows a woman lying in a hospital room. She's fully awake. She's fully conscious. She believes in the process that's about to happen. Before her, there is an ultrasound technician who is running an ultrasound wand over her lower abdomen that we can see on a split screen television. And on the left-hand side of the screen, they do a snapshot, a freeze frame of an instant in time for reference, so we can see what her condition looked like in that instant in time. On the right-hand side of the screen, we are able to watch real time as 3 practitioners stand behind her, working with the energy in her body and with the feelings in their bodies. And what they do is they begin to chant a word that to them they've agreed upon, that reinforces the feeling within them that she's already healed. The chant essentially says already healed, already done. And as they begin to have this feeling and to say these words among themselves, on the computer screen, on the television screen, we can watch in real time this cancerous tumor as it disappears in less than 3 minutes real time. It's not like time lapse on a documentary where you see a rose unfold in 30 seconds in something that normally takes days. This literally happens in less than 3 minutes. Her body responded to the feelings of the practitioners who were trained to have the kinds of feelings that they were having. And all they were feeling was the feeling of what it feels like to be in the presence of a woman who is already healed, fully enabled, fully capacitated. They were not seeing her as a woman who was sick, and they weren't saying, bad cancer, you've got to go away. Amazing, right? So what happened in this video? The lady who had the tumor, she prepared herself. She believed that she can heal. She prepared herself to heal. She imagined that she's totally healed. और जो वो hospital non-medicinal के जो practitioners थे, they know how to stay in a very high vibration. And all they believed is that this lady is absolutely, she doesn't have any illness. And they created coherent waves. They created a coherent energy, which she supported as a receiver. She was receiving. She knew I'm receiving. She was at peace. She believed that she's going to heal. So her feelings, their feelings, the energy that they created together, the coherence that they created together, and the intent that they all put together, that made her heal in that moment. And there are many stories like this around the world. But when you hear about these stories, you know it's happening. We all know that we can do it. So yes, today in our healings, I'm sure a lot of you all are going to go back healthier, having dealt with a lot of issues that you all probably have, or at least have learned how you all can deal with it, and over time, you all can overcome yourselves. So thank you so much for listening to me and for the time you all have given me. Thank you very much. It's really been an honor and a privilege to be here. Thank you for the wonderful talk. Okay, we're going to break for lunch now, and we will be back by 3:30 in the hall, in the pyramid. Okay. आव तू नैन झंप तो हेलू ना मैं देखूं और को ना तो है देखण दूं थोड़ा आवाज को
Beautiful session by Abha today on epigenetics, where we learned the information we broadcast in the field becomes us. So now is this time to do the part 2 of Soulcast. I'll invite Shreans sir for the Soulcast session. Thank you, sir. And I will invite Shubhaji for the first quote to be read. Thank you. In the meantime, you can just talk about you, your journey, a little bit about yourself. Just introduce yourself. Hi, I'm Shah. I'm Abha's sister. And obviously, I was introduced to this path because of her, because she was so much into Dr. Joe's work and then Shreans. And I've been wanting to come to this place for I think I don't know how many years. And finally, I'm here, and I'm so excited and happy that I've come here. And I have been amazing morning meditation I didn't tell you about. It was really, really overwhelming and very good. I have been, I went for my first Vipassana at the age of 18, but उस time कच्ची उम्र थी तो इतना सार नहीं लिया, पर I enjoy the guided meditations more than just seeing my breath. I'm not able to yet do that, but with guided meditations, it's been more easy and nice. Thank you so much. Check. Yeah. So just reading one of Shreyans's quote, which is... Just 1 minute. Keshav, can you share the slide? Yeah. Okay. Yeah, you can start. And then we'll see. Life is all about perspective. A bad thing is simply what doesn't align with what we want. A bird sees a predator, a cat sees a meal. What is bad for one is good for another. So who truly decides? Right. Good. No. Let him share the slide. So friends, life is all about perspective. So हमारा देखने का तरीका क्या है उस पर डिसाइड करता है कि वो चीज उसके हिसाब से हम मीनिंग असाइन करते हैं उस चीज को. सिचुएशन कोई भी है फंडामेंटली न्यूट्रल होती है. जैसा हमारा देखने का नजरिया होता है हम उसको मीनिंग असाइन करेंगे. अच्छा है, बुरा है, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, ब्लैक, व्हाइट, राइट. हमें लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव ही सही है, बट सबका देखने का नजरिया अलग होता है, इसलिए सबके नजर से वही एक इंसिडेंट सबके लिए अलग अलग चीज होती है, राइट. सो अ बैड थिंग इज सिंपली व्हाट डजंट अलाइन विथ व्हाट वी वांट. जिससे हम बोलते हैं अरे ये खराब है, ठीक नहीं है. जो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो चीज नहीं हो रही है, हम उसे बोलते हैं नहीं ये गलत है, ये खराब है, राइट. बट एक्चुअली it is only your perspective, right? A bird sees a predator, a cat sees a meal. एक बर्ड का जब छोटा बच्चा होता है
अगर कोई बिल्ली उसे खा लेती है तो बच्चे बर्ड को, वो माँ को उसको अपना बच्चा दिखता है, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है. बिल्ली को उसका खाना दिखता है. हाँ? What from the cat side it is the food. Cat is excited about it, right? So what is bad for one is good for another. So who truly decides? हम लोग इतना जजमेंट रखते हैं कि नहीं यही सही है, right? Anything. My religion is the best religion. My political choice of party is the best party, right? या यही सही है, यही गलत है. For that matter anything. कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, हमें लगता है ओ माय गॉड टेररिस्ट सच इविल पीपल, हम उसको गलत बोल रहे हैं. नाउ फॉर देम दे आर सेलिब्रेटिंग कि अरे हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, और वॉट एवर इज देयर बिलीफ सिस्टम कि हमको जिहाद मिलेगा या वॉट एवर यू नो. So it is all about perspective. From the source, from the eyes of the source, there are only two things, two sections of the people, one who is aligned and one who is not aligned. और कोई different division नहीं. बाकी सब divisions जो हैं वो as a man-made divisions हैं, right? So yeah. The source sees just as aligned and non-alignment. Yeah, source There's is nothing. Exactly. Source is not judging what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Source is only saying, is this person aligned or is this person non-aligned? The source is not judging the action. Either is the action taken out of alignment or non-alignment. No matter it is, even if it's a virtue, right? Like so many times we fight for a cause. We fight for a cause. Oh, war against drugs, war against alcohol, you know, war against, we wage war against so many things. Na? So it is all about so it's not about, and many times when you say war against, when you're against something, you lose your alignment. Like I'll give you one example. Somebody during the Vietnam War, somebody asked Mother Teresa, we want to take out a march against violence. And we want you to lead the march in Calcutta. So she said, sorry, I cannot take part in this march. But she said, if you change the name, rather than saying march against violence, if you say it march for peace, then I'll be the first one to lead it. So what you fight, you strengthen. What you resist, you persist. So when you are saying against, like so many wars has been fought, but only love for peace will bring peace, right? जैसे बोले drugs is bad only, right? Drugs तो खराब ही है. So I know. So I'm not saying what is so, but it comes with a lot of judgments. You know, we don't know who is having a drug. What is the story? What the story behind it? What is the childhood they have gone through? Behind every substance addiction, there's an emotional addiction. And if you went through the same situation, had the same childhood, lived in the same environment, probably you would have been doing exactly what they are doing. See, it's easy to judge who are alcoholic addicts, but actually we are all emotional addicts. Some or the other way, we are all some addiction, right? We are all. So the idea is not to judge others' perspective. You have a right to have your perspective, but and the other perspective may be very different from your perspective, but you honor their perspective, right? How Jainism में भगवान महावीर का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है अनेकांतवाद, है ना?
एक आदमी ने एलिफेंट, 5 अंधे हैं, उन्होंने एक हाथी को देखा, हाँ, तो एक ने पूंछ को पकड़ा, एक अंधे ने पूंछ को पकड़ा, तो बोला हाथी कैसा है, तो बोले नहीं वो तो सांप जैसा है। एक ने कान को पकड़ा, तो बोले हाथी कैसा है, नहीं वो तो कोई थाल जैसा है। एक ने सूंड को पकड़ा, तो हाथी कैसा है, तो बोले कोई लॉग जैसा है। या पाँव को पकड़ा तो बोला कोई लॉग जैसा है, वुड पेड़ जैसा है। सो different perspective depending on their experience. So same way, depending on our conditioning, depending on their experience of life, nobody is right or wrong. Actually, either somebody is asleep, somebody is awake. Somebody is less ignorant, somebody has the understanding and the wisdom. And if you are awake, you will not lose time in judging those who are sleeping. In fact, you see them with more compassion. Like suppose there's a terrorist attack. Now, as a terrorist, now we feel hatred for those terrorists. Now, actually, all terrorism is also a cry for love. Somewhere they feel inferior. Somewhere they feel they have not been taken care of. Somewhere they have bled in the early days of their life. Maybe their father died because of some terrorism or some violence where they were killed, you know, and now they've been conditioned like that. So they are ignorant. Of course, terrorism is a terrible act, but from their side, it is a virtue. They've been conditioned. They've been wired differently. They've been brainwashed differently. तो उनको लग रहा है वो अच्छा काम कर रहे हैं. And so if you don't heal what hurts you, you will bleed on people who did not cut you. तो हमें नहीं मालूम है कि उनकी ट्रेजेडी क्या हुई थी लाइफ में. वो टेररिस्ट बने तो उसके पीछे उनका क्या कारण था. When you understand the need behind it, their past, then you are filled with compassion. You don't hate them. Actually, what they need is not your hatred. What they need is more of your love. In my mind, in my meditation, when I hear about some terrorists, of course my heart goes to those who have suffered and through the family of the victims. But my heart equally goes for the person who is performing the act. Because how much pain he must be inside that he chose this kind of act. How much he was bleeding inside that he chose to bleed others. Right? So they need more of your love and not your judgment, not your condemnation, not your criticism. Yeah? जिस पर आपका नियंत्रण नहीं, उसकी चिंता ही आपको कमजोर करती है. अपने व्यवसक बच्चों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता. उन्हें केवल प्रेम व जागरूकता से प्रकाश में दिखते हुए समझा जा सकता है. कई बार दूर रहकर उन्हें समझाना आसान हो जाता है और ऐसी दूरी नजदीकियां बढ़ाती है. दोस्तों, हमें हमारी जिंदगी में कंट्रोल की आदत हो गई है. एंड सबसे इजी कंट्रोल हमारा रहता है हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि दे आर ऑलवेज द इजी टारगेट. हम सोचते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम एज अ पेरेंट्स, विच वी आर, बट वो करते 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 ये खाओ, वो करो, ये करो, अभी ब्रश किया कि नहीं, अभी होमवर्क किया कि नहीं, हाँ, अभी नहाया कि नहीं, ये सब करते 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 we also don't realize we start controlling them. We start feeling that we own them. वो उसमें भी हमारा ईगो, पेरेंटिंग में भी हमारा ईगो पीछे से घुस जाता है. And we think that we own them. We can control them. But the child grows. Whether you want them or you don't want them, they grows. And जब वो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के हो जाते हैं, all of a sudden you feel कि oh my God, because they realize that oh, I am my sovereign entity. उनका भी ईगो परम सीमा में होता है.
Now they want to acknowledge that I have arrived. I'm in this world. I'm more than just a child of my parents. I have my own identity. I have my own desires, my own inclinations, my own likings, my own aspirations, right? My own hobbies. So they develop their own identity. And that is the time parents hate them. Because they feel threatened. उनको लगता है अब हमारे बच्चों पे कंट्रोल चले गया, अब ये हमारी सुन नहीं रहे, अब ये हमारी सुनते नहीं है, right? But actually the truth is they are growing, they are evolving. हमें तो एज अ पेरेंट उनके लिए खुश होना चाहिए कि अब वो अपनी इंडिपेंडेंस की राह पे चल पड़ रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि वो गलती करेंगे, शायद गिरेंगे तो गिर के सीखेंगे, बट टुडे जनरेशन दे हैव बिकम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, यू नो. एक रोड भी क्रॉस करेगा तो हमको चिंता होती है, बट देन वी आर नॉट मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट मेकिंग देम ग्रो और फियरलेस, you know. So by too much of control, by too much of controlling, we are by too much of dominating them, you know, we are actually retarding their own growth. बच्चा क्या होगा, बच्चा या तो and the response of demand is always either the child will become a rebellion or he'll become submissive, and both are not good for child, right? Yeah. I just saw the movie Michael. I don't know कितने लोग ने देखी है movie Michael, which has just come. Yeah. And his father was a control freak, right? He trained and trained them. He was such a perfectionist, disciplined कि करना ही है, ये note सुर बराबर नहीं लगा तो करना ही है. But that is what made Michael what he was as a musician. He became where he is because of the father being crazy control freak. And of course, it had repercussions. He hated his father for it. But he reached where he was because of the hard work the father did bachpan mein. And we hear these stories, so many about super athletes. All have gone through a tough childhood with their father. So So there's a point in what you're saying, but then there's the opposite side also. When you have a control freak parents, you know, the child start growing up feeling that, and when you are reprimanded for every little thing and you are being beaten and being told what's wrong with you, so they start believing that something is wrong with them. They start believing that they have to become something to prove themselves, that they are not good enough. Now, Michael Jackson was a maverick. You know, he's a legend. I mean, there was no one like him. We all know that. But imagine, in spite of that, deep down, he had a complex. And you'll wonder, how can a person like this can have a complex? That's why he did so many face surgeries, you know, and kept changing his faces. His father hated his nose. He's called him that big nose. Exactly. So he kept on changing his nose all the time. Show the video of Keshav. You have that video of Michael Jackson changing faces. And it's not just that. Now he was so susceptible to people's opinion. Because of that, he became susceptible to people's opinion कि लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, लोग क्या मेरे बारे में कह रहे हैं. Because what happens is, as a child, whatever is your relationship with your parent, as you grow up, becomes your relationship with the world outside. When you grow up feeling that I am not good enough, I need to prove myself to be somebody, then you do the same thing for the world. Right? Right. No, he had all the popularity, but he always felt lonely because he felt that, so that's why he had failed relationships also, because somehow he always felt lonely. Because because the way his father treated, he used to go in the room and cry alone. And pain plus loneliness become the trauma, right? So he sustained that trauma, the psychological trauma, for whole his life. Now, at the peak of his career, when he was charged with child abuse, he completely
lost himself because he was so hurt. He was, how can people think like this about me? How can I be treated like this? So he became emotionally imbalanced because of outside situations, outside validation, seeking outside validation situation. Almost, almost, I think 13, 14 years, he stopped performing. A talent like that stopped performing, imagine. Right? So, see, and sometimes as a parent, they only play a role. We think he did because his parent was like that. But also, it could be, he could have been what he could have anyways, probably. We don't know. Right? And I'm not saying and we are not even judging what went wrong, because maybe that was an opportunity for her growth, for his spiritual growth also. I mean, as such, he was an embodiment of love. But being such a nice person, being such a loving person, but he did not overcome the point of people's behavior, people's judgment. His relationship with the father became the relationship with the world. And that made him suffer. Right? So there's a good side and a bad side. But of course, so I'm not saying we all create our reality. Maybe he chose his parent as a soul to learn these lessons. You know? Yeah, to teach, to learn. So there's no room to blame the parents. It's not about that. But as a parent, we need to be more aware how we should treat the child. Right? तो हमें ज्यादा एज अ पेरेंट हमें जागरूक रहना है कि हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है. क्या हम इसलिए इनसिक्योर और एंजाइटी फील कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा कंट्रोल चले गया उनके ऊपर से. राइट? सो जिस पर आपका नियंत्रण नहीं उसकी चिंता ही आपको कमजोर करती है. अपने व्यस्त बच्चों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता. When the child becomes adult, you cannot control them, no matter how much you try. उन्हें केवल प्रेम व जागरूकता के प्रकाश में देखते हुए समझा जा सकता है. In the light of awareness, from the perspective of love, you can understand them. Right? You cannot control them. Right? You have to understand your child. कई बार दूर रह के उन्हें समझना आसान हो जाता है और ऐसी दूरी नजदीकियां बढ़ाती है. So sometimes distance is good. Sometimes the distance, even whether in a family or whether even with the children, sometimes distance is good because distance you get a perspective, you get a holistic perspective. When you are closer, you are so narrow focused. आप उनकी गलती ढूंढते रहते हो. Right? Distance रहता है तो फिर मन में प्यार भी आता है, नहीं यार, I am missing them. Right? So, and also as a parent, there's less we can teach them by telling, and more we can teach them by being, live by example. बच्चे कानों से नहीं सुनते हैं, बच्चे आंखों से सुनते हैं. Children listen not through the ears, but through their eyes. इसलिए ये चिंता मत करो कि अरे हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं हमारी. चिंता ये करो कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं. So don't worry your children not listening to you. Worry that they are watching you. And the best gift you can give to your child is the gift of your alignment. If the gift of your being fully present when you are with them. हम क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ टाइम तो बिताएंगे, but most of the time goes in condemnation. उनकी बचपन से आदत होगी ना गलती निकालने के लिए. अरे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, you know, उनको 4 गलती बना देते. And so the child wants to run away because he knows psychologically every time I sit with my parent, they will tell me, oh, what is not good enough for me, what is not good in me. And when children grow up, that resentment grows up, right? That anger brews in them, but they can't express because they need you. And if they express, then
then you will not give them love because your love is conditional. Then you will label them, right? So, but they need you. So they rather barter their emotional need rather than being authentic. And when they become inauthentic, because now they have to, in their own house, they have to keep pretending to be happy. And when they are pretending, they lose their connection with their inner being. Because the anxiety of pretension is so much that there's no bigger anxiety than the anxiety to pretend all the time. Right? And that too in your own house. And that's why they lose their connection with their inner being. And when they grow up, we repeat what we don't repair. So that's why they say, na, very often you marry your parents. Because again, you marry a similar spouse who come to teach you the lessons which you have not learned. So as a parent, what is more important is to become the example of alignment, right? To be joyful in their presence, to be excited in their presence, to be fully there. We are there, but we are only with our phones. And when they start using phone, we tell them, "Arey, you can't." Right? So it's about we have to lead by example. Right? They are like mirrors reflecting back to you. See, till the age of 6, children are like sponge. They're absolutely absorbing whatever you're doing. Then till the age of 11, they are completely watching you. Exactly whatever you're doing. And they start having beta brain waves. अब उनको एंगर वगैरह आने लग गया. तब तक के तो वो लो बीटा में था या अल्फा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी में थे. दे कांट इवन एक्सप्रेस एंगर. तो पेरेंट्स लड़ रहे हैं, बच्चा देख रहा है. हमको लगता है क्या है, छोटे बच्चे के सामने लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है. बट द चाइल्ड इज एब्जॉर्बिंग इट लाइक अ वीडियो रिकॉर्डर. इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड हो रहा है. बट आफ्टर द एज ऑफ 11 and 12 द चाइल्ड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. इतने 11 साल 12 साल में उसने जो भी सीखा है, जो भी देखा है, जो भी एब्जॉर्ब किया है, अब वो लाइक अ रिकॉर्डर जो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हुई है, वो रिकॉर्डिंग वापस प्ले करने लगता है. अचानक हमको बच्चों पेरेंट्स को लगता है, हाँ ये अचानक 1 महीने में इतना जवाब कैसे देने लग गया, इतना जवाब साल कैसे करने लग गया. बट now we as a parent we don't like, because the child is only reflecting back to us what we have been with them all these years. As a parent we don't like our our shameful perfections, because deep down it shames us. So then we label them, we'll blame them, and then they feel disconnected. They always feel bad in your presence. They always feel that their energy has been stolen away by the parents. So that's why they become aloof. And then you wonder why your child has become so aloof. Because they need to restore their energy. So they become aloof. They don't like to sit in the dining table with you. And when they grow up, then you wonder why they don't love you anymore. Maya Angelou said, people will forget what you did for them, but they will never forget how you made them feel. So we do so much for our children, but yet we don't make them feel good about themselves. So it's okay to do a little less, but do more to make them feel good about themselves. Yeah. Thank you. The goal is not just to manifest what you want. The real goal is to feel aligned, joyful, and alive moment by moment as life unfolds. After all, life is nothing but coming together of all these moments. Manifestation is only one moment. Life is every moment. It's similar to what I've been talking about, right? So, as I've been talking in the morning also, the goal is not just to manifest what you want. The real goal is to feel aligned, joyful, and alive moment by moment as life unfolds. The goal is, actually the journey is more important than the destination.
the excitement you feel in the joy of creation, in the anticipation of that manifestation. Actually, for me, that is more important. The alignment you feel in the anticipation of that creation, that is important, right? Because that is what life is. Life is not nothing but slices of present moment. All present moment come together, we call it life. And if you're not happy in present moment, you'll never be happy when you achieve your goal, when you reach your destination, right? Because as I've told you before, वो अगर जिंदगी स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस की आदत हो जाती है. You become addicted to the hormones of stress. तो वो कुछ पा भी लिया तो इट इज फॉर मोमेंट्री, देन अचानक माइंड क्रिएट समथिंग न्यू. अब ये होएगा तो विल क्रिएट करेंगे. Because you have always resisted present moment. Because you have lived to live in a waiting room. Life is always living in a waiting room. अच्छे दिन कल आने वाले हैं. कल अच्छे दिन आने वाले हैं. हाँ? अब कल वो हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. So the idea is learn to be happy now. And that's why for me, I feel manifestation is just the hook to get you all here. It's a code word to get you all here. But my ultimate goal is your transformation. Transformation हो गया तो manifestation तो अपने आप ही होगा. And honestly, you'll not even care about manifestation. क्योंकि खुश तो आप हो ही. अब हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा. If good happens, good. Bad happens, still good. Because you are happy anyways. Now, your emotion is not dependent on the condition outside. Now you know that if I can change my condition independent of the outside, if I can change my emotion independent of the outside condition, I know that I'll change the condition outside. So you take full power back to yourself. And that is the real goal. Right? The real goal is self-mastery over your thoughts, emotions. Right? Then manifestation is a byproduct. That will naturally follow. It's a small thing in the puzzle. Right? That's why manifestation is one moment. Life is every moment. Right? Thank you. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shubha. Thank you. दूसरा mic दे दो. So friends, Abha will be doing a presentation on quantum physics, some experiments, some amazing experiments she's going to show us. How our thoughts and emotions create a reality. How it influences in the quantum field. We've been hearing about this. Now we'll show a quantum physics, quantum science experiment which demonstrates us. Now it's no more a belief system. It's no more about meri baat maan lo. Now science proves it, right? Which silence always knew, right? Which our Rishi Munis always knew. Huh? जो Sankhya philosophy, the oldest philosophy in human history, always knew that about Prakriti Purush. How Purush creates, how Prakriti manifests with the help of Purush. So it was always known. But now quantum physics is exactly proving what Sankhya philosophy told us thousands of years back, right? So Abha is going to show some experiments which clearly demonstrates also about mind over matter, how our thoughts are so important, how as human beings we are so powerful creatures. And
Yes, let's go through those experiments and then I'll come back. Yeah. Welcome, Abha. Thank you. Uh, so can we play the first experiment? So these are all scientists of the quantum world who've been putting quantum physics to test. And it's fascinating when you see the results जो इन लोग ने समझा है और समझाया है experiments के द्वारा कि ये science है और ये कितना 100% truth है. तो कहीं भी doubt का room नहीं रह जाता है. चलिए देखते हैं. To welcome you to this very special presentation of Missing Links, the deep truth of our origin, history, destiny, and fate. In our last episode, we identified the science-based discovery of a field of energy, a real-life matrix that functions in 3 very precise ways. This matrix, number 1, it's the container for the universe itself and for all things that can happen in the universe. Number 2, it's the bridge between our inner and our outer worlds. Everything that happens from within, our thoughts, feelings, emotions, and beliefs are conveyed to the world beyond our bodies through this field. Number 3, the mirror. The mirror, this field is a mirror in the world for what we claim.
मैं ये जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा मैं हिंदी में समझाऊंगी। तो हम जहाँ वैक्यूम है, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे भी फोटोन है। फोटोन सबसे सबसे छोटा पार्टिकल है जो सब जगह है। पूरा यूनिवर्स फोटोन से बना हुआ है। हमारा एटम भी फोटोन से बना हुआ है। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक एक जार में वैक्यूम क्रिएट करा। वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ फोटॉन्स है। तो साइंटिस्ट को देखना था जब जहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ फोटॉन्स होते, तो वो फोटॉन्स बिहेव कैसे करते, वो उनका क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि फोटॉन्स रैंडमली सब जगह थे। फिर उन्होंने देखा अगर एज ह्यूमंस हमारा इफेक्ट यूनिवर्स पे क्या है, हम क्या यूनिवर्स को इफेक्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल। तो उन्होंने एक ह्यूमन डीएनए लिया और ह्यूमन डीएनए को उस वैक्यूम फ्लास्क जिसमें फोटॉन्स रैंडमली जा रहे थे उसमें डाल दिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो फोटॉन्स हैं वो डीएनए का पैटर्न लेने लगे। वो डीएनए जो हमारा है वो फोटॉन्स को इन्फ्लुएंस करने लगा। तो अब ये हमें समझ आता है कि हमारा डीएनए, हमारा इनर क्लाइमेट, आउटर क्लाइमेट इस यूनिवर्स में अपने वाइब्रेशंस भेजता है। हमारा इम्पैक्ट यूनिवर्स पे होता है। तो आप देखते हैं लोग करते हैं वॉक फॉर वर्ल्ड पीस। बहुत सारे दुनिया में योगीज बैठ के चांटिंग करते हैं, प्रे करते हैं। तो ये वही साइंस है कि जो हमारे इंडिविजुअल वाइब्रेशंस रेज करते हैं वो यूनिवर्स के फोटॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है और वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में फैलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट वो प्रूव करता है दैट एज मच एज वी इन्फ्लुएंस द यूनिवर्स इन्फ्लुएंस अस एंड वी आर ऑल कनेक्टेड एज वन। We'll go to the second part of the experiment. Traditions have always told us that we are connected
तो आपने अगर समझा जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने देखा कि हमारे जो डीएनए हैं, जो डीएनए हमारे सेल्स में होते हैं, वो एक स्पेसिफिकली एक अलग-अलग तरीके से कॉइल रहते हैं इमोशन के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूबॉर्न बेबी के कॉर्ड में से प्योरेस्ट जो डीएनए होता है, वो डीएनए लिया और उस डीएनए को ये पॉजिटिव इमोशंस के एनवायरनमेंट में रखा। तो उन्होंने देखा जो ये डीएनए है, जब वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में थे, वो इमोशंस के एनवायरनमेंट में थे, तो वो डीएनए उनका कॉइल एकदम ढीला होने लगा। वो एकदम खुल गए, इतने खुल गए कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगे। और जब डीएनए एकदम खुल जाते हैं, अपने आप को बराबर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब उन्होंने वो डीएनए नेगेटिव इमोशंस के पास में रखा, जैसे आपने सुना जेलसी, हेट्रेड, नेगेटिविटी, उसके पास में वो उन्होंने रखा, तो वो डीएनए कॉइल हो गया। जब डीएनए कॉइल हो जाता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। तो ये साइंस, अब ये आपने देखा, ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किया और उन्होंने देखा कि ये एक्चुअली एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जब हम किसी से मिलते हैं, कई बार उनके सिर्फ ऑरा में खड़े होने से हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, और कई बार नहीं तो कोई मिलता है कि नहीं, मुझे इस इंसान की वाइब्रेशन अच्छी नहीं लग रही है। तो वो उनका जो इमोशनल स्टेट है या उनका जो स्टेट है, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। वो हमें, क्योंकि जो क्वांटम फिजिक्स है वो यही समझाता है कि हम कितने कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही मैट्रिक्स के लिंक्स हैं। तो आप एक लिंक में चेंज आएगा तो वो मैट्रिक्स में उसका रिपल इफेक्ट होगा। तो वैसे ही आपने देखा पॉजिटिव इमोशंस का डीएनए पे क्या असर होता है, और डीएनए अल्टीमेटली का असर उसके एनवायरनमेंट में होता है, हमारे पूरे यूनिवर्स में उसका इफेक्ट जाता है। नेगेटिव जब इमोशन होता है तो हमारा डीएनए कॉल्ड अप हो जाता है, उसका वाइब्रेशन भी हम जो, क्योंकि मैट्रिक्स के हम पार्ट हैं इस यूनिवर्स में, हमारा सबका योगदान है, उसका इफेक्ट इस यूनिवर्स में जाता है। So this experiment shows us that we are all just so connected and one. So moving on to the next experiment. या मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ करती हूँ, फिर हम वीडियो देखते हैं। तो you're playing the video, then play the video, no problem. I just wanted the notes. तो ये एक रैंडम मूवमेंट जनरेटर डिवाइस है। ये जो डिवाइस है वो अपने आप रैंडमली कहीं पे भी एक जगह पे छोड़ो तो अपने आप घूमता रहता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। तो ये साइंटिस्ट हैं रेने पियोश, इन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक न्यू बॉर्न चिक को लाके इस ये रैंडम मूवमेंट जो जनरेटर डिवाइस है उसके पास में उसको रख दिया। वो चिक एकदम न्यू बॉर्न है और वो मशीन उसके लिए, वो जो रैंडम मूवमेंट डिवाइस है वो चिक के लिए खाना देती है। तो चिक को क्या लगता है, दिस डिवाइस इज माय मदर। द चिक स्टार्ट्स एसोसिएटिंग विद द डिवाइस कि ये जो डिवाइस है वो मेरी माँ है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको चिक को इस रैंडम मूवमेंट डिवाइस के से सेपरेट कर दिया। फिर जो होता है वो बहुत फैसिनेटिंग है, देखिए।
ये चिक का इंटेंशन है कि she is feeling the separation from her mother. Her intention is, you know what, why can't I be close to my mother? मेरी माँ के मैं पास में क्यों नहीं हूँ? तो chick's intention that I want to be close to the mother is making the device move close to the chick. जो device है, जो पहले randomly, ये जो diagram A है, पहले जो device है, वो randomly आप देख रहे हैं पूरी जगह घूम रहा है, पूरी जगह घूम रहा है, और बाद में जब चिक को उससे सेपरेट किया गया, तो जो चिक का इंटेंशन है, वो जो रैंडम डिवाइस मूवमेंट जनरेटर है, जिसका डिजाइन ही रैंडमली मूव करने के लिए किया गया है, वो सिर्फ उसी जगह में घूमता है जो जगह चिक के पास में है, वो बाकी की जगह जाता ही नहीं है, और वो एक ऑब्जेक्ट है, उसको इन्फ्लुएंस किया है चिक के इंटेंशन ने, चिक के इंटेंशन के मुझे मेरे माँ के पास रहना है, वो रैंडम मूवमेंट जनरेटिंग डिवाइस सिर्फ उतनी जगह में घूमता है। और ये चिक का जो फ्रंटल लोब है, जहाँ से हम क्रिएट करते हैं, हम इंटेंशन सेंड करते हैं, वो हमारे से सिर्फ 1% है। हमारा जो फ्रंटल लोब है हमारे ब्रेन का 40% है। तो अगर चिक ये कर सकती है तो हमारी कैपेबिलिटी कितनी होगी? और ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ये साइंस है। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट श्रेयांश लेंगे। Thank you, Abha. तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज कॉल्ड वेरी फेमस वाटर एक्सपेरिमेंट। काफी लोग, आप लोग तो जानते भी होंगे इसके बारे में, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट है। दिस इज बाय जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमोटो। उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह से वाटर लिया और वाटर को उन्होंने क्रायोजेनिक चेंबर में फ्रीज किया और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर से देखा, राइट। जब उन्होंने एक कोई गंदे नाली का पानी लिया तो इट वाज वेरी डिस्टॉर्टेड, बहुत गंदा उसका क्रिस्टलाइन इमेज था। और वही कोई वाटर को उन्होंने स्प्रिंग से लिया, माउंटेन से लिया, तो इट फॉर्म्ड अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन एनर्जी। तो उन्होंने क्या किया, सेम वाटर, मान लो एक ही गंदे नाली का पानी, उसी वाटर को अगर उन्होंने प्रेयर्स ऑफर किया, ऑफर्ड सम नाइस वर्ड्स, सम वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, तो वही वाटर वापस ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाने लगा, राइट। तो ऐसे उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए। स्लाइड नेक्स्ट। सो जैसे उन्होंने पानी को बोला थैंक यू, उस पर एक लेबल लगा दिया थैंक यू, राइट। सो इट बिकेम ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उन्होंने पानी पे विजडम, ट्रूथ, इटर्नल, ये सब लिखा, एंजल, आई लव यू, पीस। तो इट वाज ऑल शोइंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स। फिर जहां उन्होंने बोला यू फूल, तो देखिए वही पानी का स्ट्रक्चर कैसा हो गया। ही सेड यू मेक मी सिक, तो एकदम डिस्टॉर्टेड, इविल। देन सेम पॉल्यूटेड वाटर बिफोर प्रेयर, सेम पॉल्यूटेड वाटर आफ्टर प्रेयर, राइट, हैड अ डिफरेंट इफेक्ट। तो मतलब हमारे शब्दों का, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का प्रभाव कैसे बाहर की दुनिया में पड़ता है, राइट। एंड दिस प्रूव्स 72% ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर, 70 to 72% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। एंड इसीलिए शायद हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस में था ना, पहले भी जब हम खाना भी खाते थे तो पहले प्रेयर्स दे के खाते थे, बिकॉज वी नेवर थॉट दैट इट्स अ डेड फूड, वी थॉट इट्स अ लिविंग फूड। ये प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा हमारे। तो जैसी भावना से हम खाएंगे, एक कृतज्ञता के भाव से खाएंगे, तो हमें हमारे शरीर को और ऊर्जा देगी और पोषित करेगी, राइट। इट विल नरिश आवर बॉडी मोर। So now there's a scientific proof to all these things, right? इसलिए मैं जब कभी पानी पूरी खाना रहता है
तो पहले मैं उसको प्रेयर करके थैंक यू बोल देता, फिर खाओ, दबाओ जितना दबा रहा है। सो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये भी दिखाता है कि कैसी, कि जिस नजरिए से हम सामने वाली चीजों को देखते हैं, हम अपना नजरिया बदल दें तो नजारा बदल जाएगा, है ना। अगर हमको हमारे बच्चों में कि सबसे ज्यादा, अगर हम हमारे बच्चों की उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो उनकी बढ़ाई करें, उनकी अच्छी चीजों की तारीफ करें, राइट, उनको प्रोत्साहन दें, सो दैट मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्फ। फिर उनमें जितनी भी गुडनेस है आप उसको और उजागर करोगे, राइट। या किसी और में भी कई बार हम बोलते हैं अरे ये तो इसमें ये बुराई, वो बुराई पे पहले नजर चली जाती है, बट अगर वैसा भी है तो उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढो और उसकी तारीफ करने का उसका बहाना ढूंढो। फिर आप पाएंगे कि यार आपके, वो दुनिया के लिए कुछ भी हो पर आपके साथ तो बहुत अच्छा ही है, उसके आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। तो क्योंकि आपके नजरिए से आप उसमें उसकी अच्छाई को उजागर कर रहे हो। सो बाय चेंजिंग योर परसेप्शन you are actually controlling the behavior of others. When you judge people, condemn people, sometimes we don't say it in words. वाइफ ने बोलना चालू किया, इनर क्रिटिसिज्म चालू, ये लो फिर चालू हो गई बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, और अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस चल रहा है। अब ये कब बंद करेगी और कब मैं जवाब दूं कि मैं सही हूं तुम गलत हो, नहीं, राइट, आई एम रेडी टू प्रूव हर रॉन्ग। सो और इन इनर, और अगर मैं मुंह से नहीं भी बोल रहा हूं डर के मारे, तो जो मेरे साथ होता है तो मन ही मन प्रतिरोध चल रहा है, मन ही मन रेजिस्टेंस चल रहा है, मन ही मन गुस्सा आ रहा है, मन ही मन एंगर है, मन ही मन इरिटेशन है। नाउ जो इनर कन्वर्सेशन इज ऑल्सो, हम सोचते हैं ये तो उसको क्या पता चल रहा है, बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ, now we know we are living in a quantum world. Everything is energy, frequency and vibration. आपकी एनर्जी उसको बता रही है कि आप इरिटेटेड हो, और आपका इरिटेशन उसको और इरिटेट कर रही है, राइट। सो others only echo what you whisper to them in secret, है ना। दूसरे तो आप उसी का, जो आपके अंदर चल रहा है, आपको उसी की गूंज दुनिया में देखने को मिलेगी, दुनिया से सुनने को मिलेगी, आपके संबंधों में मिलेगी। That is only reflecting. That is only the reflection. So when you change the way you look at things, the things you look at change. है ना? यथा दृष्टि तथा सृष्टि. Right? The experiment which Abha showed, कि how human DNA is influencing the photon, right? The world around us. क्या हमारे अंदर चल रहा है और वो कैसे पूरी सृष्टि को इन्फ्लुएंस कर रहा है. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना. As is the microcosm, so is the macrocosm. As above, so below. As within, so without. Right? So, जैसी गति, जैसी मति, वैसी गति. Yad bhavam, tad bhavti. So, the outer world and inner world, our ancient rishis, they knew this very well. They have told us all in such small, simple things, but we never understood it, we never applied it. But now science is proving the same thing. It's exactly telling us what that profound wisdom was already there in our Upanishads, in our Vedas, right? In our stories, in Ramayana, Mahabharata, it was all there. So
So this is about the water experiment. Kisha, we can go on the healing topic. We have many experiments actually, so I'm not going much into experiments. We are short of time. So I'll just come back to the healing topic. So right now, we'll take a tea break after some time. And after the tea break, we'll have awesome music concert, Kabir sing songs by Shabnam Virmani ji. She's a very, very amazing and a very senior Kabir in the circle of Kabir singers. She's one of the most senior, most topmost, and a lovely voice. And the person who lives what she teaches. Come back here, and then we'll all come back in white clothes, right? We'll all come back in white clothes. It will be a beautiful energy of healing, and it's it's an amazing experience. It's such a miraculous experience. The whole healing and little bit. We've seen that video of healing, right? We saw the video of the Chinese school of medicineless hospital where those people were giving the healing. Now, what we saw that they didn't say poor patient or poor cancer get healed. In their mind, in their thought, they didn't see the person as a patient. The healers didn't see the patient as a patient. They saw them as an empowered being, as if they're fully hard coherence. उसके बाद हम सेल्फ हीलिंग करेंगे, हम अपने आप को हील करेंगे, हम अपने आप को हील करेंगे, right? Only when we feel healed can we heal others. एक बीमार दूसरे बीमार को क्या ठीक करेगा, है ना? So only when we feel healed, we are actually now we are in a right state of being to heal others. And they are also working on themselves. So because they are working on themselves, that's why they are now you are giving with all your love and compassion, you are giving the energetic support because they are also working on themselves. A lot of time people ask me कि oh my mother is suffering, मैं वो वर्कशॉप तो अटेंड नहीं करना चाहती है, बट सिर्फ हीलिंग सेशन के लिए मैं उनके लिए लेके आ जाऊं क्या? तो आई टेल देम नो, इवन इफ दे आर माय क्लोजेस्ट रिलेटिव्स और क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर, क्योंकि दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. You know, those people last 5 days, they didn't come for healing, right? We don't even market it कि come here for healing. But they have worked on themselves. They're sitting for long meditations, listening to the whole knowledge, understanding. They are changing their belief system. They are breaking their patterns. And now they are working to heal themselves. Now, in this setup, we are giving an energetic support with all our love and compassion. Right? तो इसीलिए हम उन्हें अपनी एनर्जेटिक सपोर्ट दे रहे हैं. तो third step is self healing. Then fourth step में I'll tell you to open your eyes. Right? Now what I'll tell you to open your eyes and start giving them healing. Now you become the channel for healing. Now how to heal themselves? How to heal them? We will use our light as an instrument of light. Use our hands as the instruments of light. Our hands, we think it's an ordinary hand. But actually, these are the hands of light. These are the hands of healing. How do we make that into a healing hand? I want you all to rub your hands like this. Yeah, close your eyes and rub your hands. A little strongly. Can you feel the warmth? Now slowly, with eyes closed only, or eyes open, whatever,
Slowly observe the energy flow between the hands. Try to make the hands in and out. हाथ को अंदर बाहर करें. Can you feel the energy flowing between your hands? Right? Rest. You can give your hands rest. You don't need to keep it all the time like this. You can just put it hands on your elbows or on your thighs. Give them rest, directing towards the person. Right? Now, when you are directing towards the person, आप ये नहीं कर रहे हो, आप उसको पेशेंट के रूप में नहीं देख रहे हो. There's a God sitting in front of you. You as gods, supporting another God. They look at them as already healed. मानो वो already healed हो गए, वो हंस रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं. They are running, they are walking, they are climbing. They're doing everything what a perfect healthy person can do. Right? Actually, we don't even know the illness of the person sitting in between. And we don't even want to know. Right? Because once we know, फिर mind will start judging. Mind will focus on illness and not on wellness. So our focus is on wellness, not on illness. What you focus on expands. है ना? तो हम उनको as if वो पूरी तरह स्वस्थ है, हम उनको वैसे स्वस्थ देख रहे हैं. Right? Then after some time I'll take you to now take your hands back to your heart and again give some guidance, and then we'll end the meditation, and then I'll tell you to open your eyes. ठीक है? So total duration 1 घंटा 20 मिनट का रहेगा, and the whole duration of the full session will be 1 hour 20 minutes. And now the thing is, not everybody will get the chance to become the healer, right? But honestly, I have seen so many cases that the person healing also got healed. Because what is your vibration is of healing. Your vibration is of healing, of love, of compassion. That is the vibration. And the energy is flowing through. You are the conduit of energy. Energy is not directly going through that. You are the channel for the cosmic energy flowing through you. You are the medium. तो वो पहले तो आपको हील करते हुए वहां जा रही है एनर्जी. राइट? So don't think I didn't get the chance to be in between. Right? You are lucky to actually heal others. That is more luckier than getting the healing. The joy of giving is much more than the joy of receiving. Right? You will experience it. You will feel that joy at the end of the session or during the session. The hands, Rumi said, the hands that give gathers. जो बांटता है वही बटोरता है ना? तो डोंट थिंक, क्योंकि जब आप दे रहे हो तो आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि मैं भी पाने का पात्र हूं, मैं पाने का पात्र हूं. आई एम वर्दी. व्हेन यू आर गिविंग, यू आर टेलिंग द यूनिवर्स आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग. राइट? इसलिए जो बांटता है ना वो कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि वो जितना बांटता है यूनिवर्स उसकी झोली में उससे ज्यादा भर देता है. वो और प्रेशर में आ जाता है, अरे यार और बांटना पड़ेगा. वो फिर उतना बांटता है, फिर उससे ज्यादा आ जाता है, बट बांटने का, जो देने का मजा है वो पाने का नहीं है. एंड वही तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होता है. आप शुरू में मैनिफेस्ट करते हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट जैसे जैसे आप में रूपांतरण होने लगता है, जैसे जैसे आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, अब आप मैनिफेस्ट भी कि मेरे कारण कैसे मैं दूसरों की भलाई कर सकूं. नाउ आई वांट टू. पहले आप सोचते थे नहीं मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे रिलेशनशिप हो जाए, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, बिजनेस आ जाए. अब ऐसा लगता है मैं कैसे दूसरों की सेवा करूं. हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्स, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड.
क्योंकि जब आपका कप भरने लग गया, जब आपको वो होलनेस फील होने लगा, तो फिर अब अब ऐसा लगता है मांगना क्या है, मैं तो संपूर्ण महसूस कर ही रहा हूं. अब बांटने का मन करता है, राइट? देन यू वांट टू गिव, देन यू नो, फिर आप जान जाते हो कि मैं, लाइफ इज नॉट फॉर मी, माई लाइफ इज थ्रू मी. लाइफ इज नॉट व्हाट हैपेंस फॉर मी, लाइफ इज व्हाट हैपेंस थ्रू मी. और उसका मजा आता है. वो देन बुद्ध को जब एनलाइटेंड हुआ तो वो एक जगह जाके कोने में बैठ नहीं गए. अगर वो बैठ जाते तो बहुत बेचैन महसूस करते. अब उनको दूसरों को बुद्ध बनाने में मजा आ रहा है कि कैसे जो उन्होंने ज्ञान पाया है, जो जो उन्होंने नॉलेज पाया, वो कैसे दूसरों को बताए. अब वो ही उसी में उनको आने लगा. जब पत्री सर got enlightened, then he was restless कि how can I teach others, how can I, क्योंकि अब वो करने में ही उनको आनंद आने लगा, राइट? और Rumi said that before death takes away, what has been given to you, before that takes away what has been given to you, give what you have to give. हम कितना ही बटोर के रख लें, हाँ, एक दिन जो भी आपके पास था, मौत जब आएगी तो ये सब चीज आपसे छूट जाने वाली है, छिन जाने वाली है. चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो, राइट? तो एक दिन तो वो सब छूटने ही वाली है. तो जब तक कि आप जीवित हैं, तो जब जो चीज है तो देने का मजा अपने हाथ से ले लो. Why not enjoy the joy of giving, right? So the idea is to live full, die empty. हम जिंदगी भर स्केसिटी में जीते हैं, लैक में जीते हैं, और चाहिए और चाहिए. मरते हैं फुल in terms of bank balance, property. But actually फिर एक झटके में सब छूट गया, सब छिन गया. But true richness is emotional. तो live full means पूरे जो है अपने पास, जो भी अपनी संपन्नता है, जो भी है, उसको शेयर करो. The joy of sharing. That is the true abundance. उसमें सबसे बड़ा आनंद आता है, right? ये अगर मैं बोलूं ये पिरामिड वैली है और इसको मैं अपनी ओन इंडिविजुअल फैमिली का रिसोर्ट बना दूं, तो ठीक है, 2, 5, 4 लोग उसका आनंद ले लेंगे. पर आज जब लाखों लोग आज उसका आनंद लेते हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं, तो उसका जॉय, तो दैट जॉय, दैट फुलफिलमेंट इज फार ग्रेटर देन योर ओन हाउस, योर ओन रिसोर्ट, राइट? सो डोंट थिंक, अगर आपको हीलर बनने का मौका मिला तो रिजॉइस इक्वली that you have been given an opportunity to give, right? To share, to love, to feel, to heal. ठीक है? So now it is not about कि आज ये healing exercise हो गई, जो भी बीच में थे हिली. It is also more about how they take more responsible for their life. देखिए, आज आप ये सब वर्कशॉप में हैं, ये it's a pool of energy. Everybody is vibrating at that frequency. It's easy to be that in that fifth dimensional reality, in that higher, vibrating at such a higher frequency here. But when you go back to the world, all of a sudden, immediately, overnight, your world has not changed. You will go back to the same world, which is vibrating at same three-dimensional frequency. You will go back to the same matrix. The real challenge starts there.
Now, how do I maintain my alignment? How do I maintain my higher vibration? In spite of the matrix, the world is in a lower vibration. In spite of whatever the situations around me, the circumstances around me, right? तब आपको सब ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, तब आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, राइट? बट उसके बावजूद भी हमें अपने वाइब्रेशन हायर रखना है, राइट? No, same way when you are looking for physically, for healing yourself, so miracles may happen here. You may heal yourself here, but if you don't go back and change your way of living, your style of living, your patterns, your belief systems, your emotions, the disease will come back. So when you are taking healing, you have to go with more responsibility. That yes, I have gotten such an amazing energetic support from such beautiful souls. So I'll be more responsible to work on my thoughts, my emotions, my actions, my behavior, my belief systems, my patterns, right? To go back more responsibly. Okay? Then the healing will continue. Then the magic will continue. Then you'll see many more miracles happening in your life. Because जब एक चमत्कार हम कहीं भी एक चमत्कार देखते हैं तो ये हम सबका बिलीफ सिस्टम बदल देता है, राइट? So you'll see small miracles, then it changes your belief system. Now you are ready to see bigger miracles. कि बाद में ऐसे चमत्कार इतने होने लगते हैं कि अब वो नॉर्मल ही लगने लगता है, right? I'll show you one video of one lady came last time on a wheelchair, and she took again same group of people healed her, and she started walking. This woman had been struggling to walk for years. At the retreat, something extraordinary happened during our healing session. तो मेरी मम्मी चल नहीं पा रही है। कल तो मेरे को सुबह मेडिटेशन से Start from beginning. This woman had been struggling to walk for years. At the retreat, something extraordinary happened during our healing circle meditation. मैं आई तो थी यहाँ मम्मी को मदद करने के लिए, तो मेरी मम्मी चल नहीं पा रही है। कल तो मेरे को सुबह मेडिटेशन से ही मेरे को लगने लग गया था कि मेरे से अंदर से जैसे आवाज आ रही थी, तुम चलो तुम चल पाओगी। उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप खड़े हो जाओ, और मैं फट से खड़ी हो गई बिना किसी सपोर्ट के, और चलने भी लगी। कल हीलिंग के बाद वो अपने आप सारी सीढ़ियाँ उतरी है। आज सुबह जब हम वापस मेडिटेशन के लिए गई हैं, वो खुद सीढ़ियाँ चढ़कर गई हैं। यहाँ आने से माइंड चेंज होता है और सब कुछ पॉजिटिव होता है, और बहुत खुश हूँ मैं यहाँ के। इररिस्पेक्टिव आपके हेल्थ के कोई भी इश्यूज हो, प्लीज आए और इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस ले। Join us for the upcoming retreat. So you see this image? जैसे जो 6 लोग बीच में एक जन लेटेगा, just share the static slide, and yeah, exactly. So बीच में एक जन लेटेगा और then 4 लोग या 6 लोग हीलिंग देंगे, है ना? The volunteers will guide you. आपको चुपचाप आके अपने चेयर पे बैठना है। एक स्लिप रहेगी, उसमें हीली अपना नाम लिखेगा और दूसरे साइड में हीलर्स अपने नाम लिखेंगे, ठीक है? हीली सबसे पहले उनका नाम लिखा हुआ रहेगा, वो पहले आके बैठेंगे। बाद में हम हीलर्स को बुलाएंगे, देन हीलर्स वो सर्कल में अपना नाम लिखेंगे और अपना फोन नंबर लिखेंगे, जो हम हीली को हैंड ओवर कर देंगे बाद में। Sometimes they like to be connected. They feel so grateful. They like to, express their gratitude. And
And also later on you can form your own healing circle, own healing group and heal your family, your friends. उनकी चिंता करने के बजाय उनको भी ये मेडिटेशन लगा दो, बोलो आप भी अपने आप को हील करो, हम भी कर रहे हैं और साथ में आपको भी हील करेंगे. That is the right way, rather than worrying about them. वही 1 घंटा आप हीलिंग में कर देंगे तो वही दिन भर चिंता करने के बजाय वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे. And then you feel empowered. You feel नहीं मैंने कुछ किया. They feel empowered. Yes, we did something. Rather than feeling disempowered. अब डॉक्टर ये बोल रहा है, अब यहाँ चक्कर काट रहे हैं, वो चक्कर काट रहे हैं, अब ये रिपोर्ट, ये ऐसी रिपोर्ट. Why feel like that? I'm not saying कि वो सब मत करें, but साथ में you have the power. You love your parents, you love your family members, you love your relatives, your friends, जो भी है. Take time out, make a group healing circle and heal. And you just have to play the meditation recording and just follow the guidance. So easy, right? And even you can do it remotely. अगर आप physically नहीं भी कर पा रहे हैं, तो उनकी फोटो ग्रुप में शेयर कर दो और फोटो को हील करो और अलग अलग लोकेशन से भी 4 लोग 6 लोग बैठ के एक जन को हील कर सकते हैं. आपस में तय कर लें कि who is the healer and who are the healers, और एक दूसरे को हम हील कर सकते हैं. ठीक है ना? So this is the way. Now, another thing is, we are in this sacred pyramid. Pyramid itself, because of the sacred geometry, promotes healing. Because it is filled with cosmic energy. Because of its sacred geometry, 51 degree, 50 minutes, it is the most sacred geometry for planet Earth. So it's full of cosmic energy. And the healing, pyramid के अंदर वैसे ही healing होती है. उसमें भी आप मेडिटेट कर रहे हैं और उसमें भी फिर आप हीलिंग दे रहे हैं और हीलिंग ले रहे हैं. तो इमेजिन हाउ पावरफुल द हीलिंग इज, एंड दैट टू इन अ ग्रुप, राइट? सो देयर इज नो बेटर टाइम, देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस नाउ. सो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द हीलर एंड द हीली. सो वी विल बोथ गिव आवर बेस्ट, राइट? We'll do it with all our sincerity and we'll give our best. We are responsible. As a healer, we are responsible, right? This is a chance to give life to another life. है ना? तो पूरी जवाबदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ हम करेंगे ये. ठीक है? Any questions? Yes. This last question, we are getting late. We'll take a break then. सर, एज यू टोल्ड कि घर पे हम ये हीलिंग सेशंस कर सकते हैं, तो मैंने कई बार ट्राई किया. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि मैंने खुद अपने आप को हील्ड महसूस किया. तो मैंने घर पे अपने हस्बैंड को बहुत मतलब मैंने कोशिश की. तो 2 इश्यूज हैं सर. एक पहले अच्छी बात तो ये है कि माई मैनिफेस्टेशन केम ट्रू कि ही इज हियर विद मी in spite of all the resistances. तो one of my manifestation, मैंने बहुत, वो हमेशा से कहता था I don't believe in this, I don't believe in this, but believe नहीं करते करते भी he is with me. तो this is my greatest gratitude to him. अभी वो रूम पे ही है. तो शाम को मैंने उससे कहा कि तुम्हें जरूर आना है. तो one manifestation came true. So second is कि अगर किसी को ट्रस्ट नहीं होता ना, तो उसको हील करने में थोड़ा रेजिस्टेंस आता है. फिर हम लोग भी पीछे हट जाते हैं कि यार तू रहने दे, तू अपने हाल पे रह. See, it's about not forcing anybody. This is a mutual thing. And you are helping them. Even God helps those who help themselves. अगर वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते, तो आप उनके ऊपर मदद थोपना भी नहीं है. क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फिर उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा. अगर वो खुद अपने पैटर्न्स को बदलना नहीं चाहेंगे, वो खुद अपनी जवाबदारी नहीं लेंगे, फिर इन दैट केस आपकी हीलिंग विल बी काउंटर प्रोडक्टिव टू देम. क्योंकि आप उनको उनके लेसन सीखने का मौका नहीं दे रहे हो. आप बैसाखी बन के उनको आप और अपाइज कंटिन्यू रहने में ही मदद कर रहे हो, राइट? सो वी हैव टू हेल्प समबडी हु इज रेडी टू हेल्प देमसेल्व्स. You know, कोई चलते चलते कोई गड्ढे में गिर गया, राइट? एंड वो अपना हाथ मांग रहा है, वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है कि भाई मुझे निकालो. तो आप अपना हाथ देके उसे बाहर निकाल रहे हैं. पर वो बोले नहीं, मैं तो गड्ढे में रहना चाहता हूं, मैं निकलना ही नहीं चाहता. तो आप कैसे निकालोगे? लोगों की ईगो बहुत है आजकल. So it's not about that. It's honoring their choice. They are not wrong. It's not about right or wrong. They are what they are.
and we honor their choice. We honor their level of consciousness. ये सोचना कि लोगों की बहुत ईगो है, ये आपका ईगो है. ठीक है ना? यस सर. सर पर वो मैनिफेस्ट ही किया मैंने, तो कम से कम वो पूरी हो गई. No comments. Silence is the speech of the spiritual seeker. All right, friends. So thank you so much. We'll take a break and we meet here at 6 o'clock. Okay? All right. See you then. Thank you. It's a tea break and we'll come back at 6. Thank you. Beautiful. Hello. Hello. Oh, is it? I'm so happy.
ये जो नाम दिए हैं, I would invite Aisha to announce those names and she will give you the instructions कि आपको कैसे prepared रहना है. Okay? Hi everyone. So I'll announce the names of the healies. These are the people who will be in the middle of the circle receiving the healing. Just raise your hand if you're here, please. Suman Golecha, Sushila Bandari, Garima Dhanuka, Jyoti Nayak, Khushbu Saras, Prashant Chaudhary, Kanchan Daga, Rima Biswas, Raj Aryan, Gunjan Mahajan, Nalini Kamal, Shailesh Pandey, Kajal Harya, Swati Kulkarni, Mohit Agrawal. If you all know any of these people, just pass on the message to them. Rasika Boja, Renu Patra, Kalpana Bhoja, Ashmit Sahani, Prachi Sethia, Indranil Deshmukh, Rajesh Divete, Sonia Sureka, Beena, Dr. Padmakar. Can you change the setting? Rajiv Renewal, Neelam Mehta, Shubha Shah, Rajni Gupta, Ashok Karnani, and Aditya Singh. So once we are back from dinner, we'll all form a line outside, and the names that I called out, the healies will first walk in. The volunteers will help you. Shreans will give you a small briefing over here, and then we call in the rest of the healers. And everyone gets covered as the healers, so don't worry whether you're the healy or healy. It will be beneficial to all of you. Thank you. Generally, keeping it without the name display is a good idea. Like this, so it covers the whole thing. Yeah. Oh. Better. Let's be with our breath till we stop.
Welcome back, friends. Let's join our hands together to welcome Shabnam, Virmani ji and Shri Parna. It's with immense joy and privilege, it's our privilege to welcome these three truly gifted artists whose voice has touched countless hearts and souls. Many of us have had the good fortune of experiencing Shabnam Virmani ji's mesmerizing performances during several retreats here at Pyramid Valley. And each time she has left us deeply moved, inspired, and connected to something sacred within. Shabnam ji is a renowned singer, filmmaker, and seeker whose work beautifully carries the timeless wisdom of Kabir. Through her soulful renditions of Kabir bhajans, she bridges the worlds of devotion, spirituality, and self-inquiry, inviting us into a space of reflection, love, and inner awakening. The Kabir project journeys were initiated by her in the year 2002. She has been exploring the philosophy of Kabir, Shah Latif, and other mystic poets through a deep engagement with their oral folk traditions for over 2 decades now. Her music is not merely heard, it is experienced. It gently dissolves boundaries and reminds us of the oneness that Kabir so passionately sang about. Her inspiration in this poetry has taken the shape of 4 award-winning documentary films on Kabir, a digital archive called Ajab Sheher, writing books, organizing urban festivals and rural yatras, singing and performing herself, and influencing students with the challenge of mystic poetry. She has worked on 2 books, I Saw Myself and Journeys with Shah Abdul Latif Bhidai, and Burn Down Your House, Provocations from Kabir. Currently, she is building a school program called Shabad Shala to take folk singers to classrooms and bring the power of Kabir's poetry to children through the embodied pedagogy of song. Today, she is accompanied by Shri Parna on her right. Shri Parna has been learning folk music, poetry, and lessons from our oral mystic traditions with Shabnam Virmani ji since 2018. Alongside work in communications and design, they want to spend more time reading, writing, singing in solidarity with people's movement and imagining more collective futures. Please join me in welcoming warmly once more with a loud cheer and claps Shabnam Virmani ji for one more such much awaited evening of soulful Kabir bhajans, which promises to be another unforgettable and enriching experience for all of us. Thank you so much, Shabnam Virmani ji. I'm so looking much forward. Thank you. for this very warm welcome, all of you. It's a privilege to be here again. मैं हिंदी में बात करूं कि अंग्रेजी में? दोनों में? दोनों में चलेगी. मतलब अंग्रेजी की जरूरत नहीं है तो फिर I'll drop the अंग्रेजी. अंग्रेजी चाहिए किसी को? बहुत जरूरी है क्या अंग्रेजी? सिर्फ हिंदी चलेगी ना? Okay, I saw. थोड़ी सी तड़के की दाल अगर लग जाएगी अंग्रेजी की तो शायद उनको टेस्ट ज्यादा आएगा. Okay, no, I did see a couple of hands, so. Yes. मेरे ख्याल से
श्रीपर्णा और मैं बहुत उत्साह के साथ यहाँ स्टेज पे आए हैं। काफ़ी एक अंतर्मुखी दौर चल रहा है। मैं बहुत कम कॉन्सर्ट्स कर रही हूँ आजकल, और चूँकि बैंगलोर में रहती हूँ और यहाँ से आमंत्रण इतना आत्मीय था तो चली आई। और इस मंथन में जो हीरे हमने मौखिक परंपरा से पाए हैं, कबीर के, सूफियों के, उनमें से कुछ 10-15 हीरे आपके साथ हम बांटेंगे। और हीरों की खासियत ये है कि हम उसको कई तरफों से देख सकते हैं, उसमें से किस तरह से रोशनी खिलती है। तो ये हर एक कलाम जो आपके समक्ष अब हम पेश कर रहे हैं, लेट अस these are timeless words of the masters, and we are very graced to be able to receive them in this body and share them with you. तो शुरुआत राजस्थान की परंपरा से महेशाराम जी से सुना सीखा ये भजन कहता है, चालत चालत जुग भया कौन बतावे धाम जी। सदियां बीत गईं, आपको चलते चलते चलते, यू आर ऑल सीकर्स, सीकिंग, कभी इस दर पे कभी उस दर पे, कि कहीं आशियाना मिल जाए, कहीं दिल में सुकून मिल जाए। चलते चलते जुग भया कौन बतावे धाम, कौन बताएगा तुम्हें। बिना भेदूरे भाला कहीं फेरे, बिना भेद के ओ मेरे भाले, भाले यानी माय डियर वन, कहीं फेरे, क्यों फिर रहे हो पाँव को उस पर धाम जी। आपका जो डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल है, वो आपके पाँव के तले है, दूर नहीं है। जहां आप खड़े हैं वहीं आपकी डेस्टिनेशन है। मन तू समझ के लाद लदनिया, पीना हो तो यहाँ पी ले, आगे देश निपणिया। ऐ मेरे मन इतना बोझ मत लाद अपने पे, अगर तुम्हें प्यास है तो यहाँ ही पी लो इसी पल में, क्योंकि आगे देश निपणिया है, उसमें पानी नहीं है, पानी केवल इस पल में है। तुम मन तू रे मन तू, हाँ हाँ मन तू समझ के लाद लदनिया, सौदा हो तो यहाँ कर ले, आगे हाट न बनिया। If you have to strike a bargain, then do so now. Because आगे चल के don't, वो आस लेके मत चलते चलो कि आगे पानी मिलेगा, आगे हाट मिलेगी, बनिया मिलेगा, तब मैं सौदा करूंगी। मन तू समझ के लाद लदनिया, मिलना हो तो यहाँ मिल ले, आगे तो बिछड़ना। हम सब जो जो रिश्तों में बंधे हुए हैं, उनको दिल खोल के हाथ लंबे हाथ पसार के मिल लो, गले लगा लो, क्योंकि बहुत जल्दी देखते देखते आपको बिछड़ना तो है।
सो चालत चालत जुग भया कौन बतावे धाम, बिना भेदू रे भाला कहीं फेरे, यही है तुम्हारा धाम। कौन मटकी कौन झेरना, कौन बिलोवन हार, तन मटकी मन झेरना, सुरत बिलोवन हार। गांव में जो वो बिलोने का काम करती हैं, दूध घी निकालने के लिए, दही, थैंक यू। तो वो रूपक है, दैट्स द मेटाफर हियर। व्हाट इज द पॉट, व्हाट इज द स्टिक, एंड हु इज डूइंग द चर्निंग? एंड द आंसर कम्स, आपका तन ये मटकी है, आपका मन ये डंडा है, इसमें बिलोवना, और आपकी सुरता, योर अवेयरनेस, आपकी चेतना, ये बिलोवने का काम करेगी ताकि कुछ घी निकले। घृत कबीरा संत पी गया, छाछ पिए संसार जी। घृत पिया तो क्या हुआ, भेड़ धनी के पास जी। सूली के ऊपर घर हमारा, ओथ पायो विश्राम जी। My house is on the tip of a thorn, that's where I find my ease, says Kabir. Sant Kabira rami rayo, आठों पहर होशियार जी। हर पल सजग, सुई की नोक के ऊपर अपना घर बनाइए, ये है चुनौती कबीर की हमारी ओर। जी कबीरा बिना भेदू रे वाला
माइक आपने अभी तक बढ़ाई नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से नहीं चलना चाहिए, बेफिजूल दर दर भटकते, गोल गोल नश्वर चीजों को खोजते, उनसे बिछड़ते, फिर जन्म लेते, फिर मरते। तो कैसे चलना चाहिए? कबीर कहते हैं, दुनिया की हौड़ में कोई कोई अकेले चलने की कुव्वत रखता है, अपने दिल की आवाज सुनने की कुव्वत रखता है। वो कहते हैं, लालन की नहीं बोरियां, हंसन के नहीं पात, सिंहन के नहीं लहड़े, और साधु ना चले जमात। लालन की नहीं बोरियां, वो जो हीरे होते हैं लाल रंग के, रूबीज, यू डोंट गेट देम इन सैकफुल्स, एक एक मिलता है। हंसन के नहीं पात, द हंस ऑलवेज फ्लाइज अलोन, doesn't fly in flocks. सिंहन के नहीं लहड़े, have you seen lions roam about in big flocks? No. Like that, a true seeker walks alone. वो जमात में नहीं चलता। जमात में जाके हम बिगड़ते हैं। The mob corrupts the mind. So, हस्तीरी चाल चलो रे मन मेरा, हाथी की तरह चलो, जगत कुकरी ने भसवा दे। जो दुनियादारी है, लोग क्या कहेंगे, उनको जैसे कुत्ता भौंकता है जब हाथी चलता है, उस तरह भसवा दे, भौंकने दे। यो तो संसार भाईला बेलड़ी को तान तन, संसार का नियम है कि वो आपके पाँव में जैसे बेल उलझ जाती है, इस तरह से वो आपको उलझाते रहेंगे। संसार की हर चीज आपको उलझाने की कोशिश करेगी। उलझ पड़ने वाने पड़वा दे। If the whole world is following the path of grand entanglements, you don't have to follow in their wake, says Kabir. राजा लड़े हैं राज रे कारण। All these, ये जो दंगे फसाद और wars and differences, नफरत घोलना, ये पॉलिटिकल खेल हैं। कबीर कह रहे हैं, भूप लड़ने वाने लड़वा दे। Let them fight their battles. Why do you add your energy to them? रामानंद जी का भनेरे कबीरा, गुरु चरणा में चित्त लगवा दे। Kabir says, with the grace of my Guru Ramanand, I say to you, अपना चित्त गुरु के इस ज्ञान के हवाले कर दो। लालन की नहीं बोरियां और हंसन के नहीं पात, सिंहन के नहीं लहड़े, और साधु न चले जमात। हस्तीरी चाल चलो रे मन मेरा, हस्तीरी चाल चलो रे मन मेरा, जगत को करीन भसवा दे, जगत को करीन भसवा दे रे मनवा राम ने सिमर जुगने हसवा दे, मनवा राम ने सिमर जुगने हसवा
रामानंद जी का भणेर कबीरा, रामानंद जी का भणेर कबीरा, गुरु चरणा में चित लगवा दे, गुरु चरणा में चित लगवा दे रे मनवा राम ने सिमर जुगने हंसवा दे, मनवा राम ने सिमर जुगने हंसवा दे। हस्ती चाल चलो रे मना मेरा, हाथी चाल चलो रे मना मेरा, जगत को करीने भसवा दे, जगत को करीने भसवा दे रे मनवा राम ने सिमर जुगने हंसवा दे, मनवा राम ने सिमर जुगने हंसवा दे। मत बांधो गांठड़ी अपयश की, करनी करे तो क्यों डरे और कर ही क्यों पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से खाए। You did what you did. Now why repent? You sow a thorny babul tree. Why expect to eat mangoes? मत बांधो गंठड़ी अपयश की। अक्सर अपयश के साथ ये जेस्चर होता है, मैं, ये है अपयश, मेरा, ये है अपयश। Be sure that anything you do जिसके साथ ये भाव जुड़ा है और ये नहीं, मान लीजिए कि आप अपने कुकर्म के खाते में एक और एंट्री कर रहे हैं, मत बांधो गंठड़िया अपयश की। ये माया बादल की छाया, व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज। बादल की छाया कैसी होती है, आपको एहसास हुआ और वो गई। तो ये जो चीजें हम इस तरह से पकड़ के बैठते हैं, चाहे वो धन दौलत हो या रिश्ते हो या आइडियाज हो या एटीट्यूड्स हो या ओपिनियंस हो, ये बादल की छाया है।
ये माया बादल की छाया, कर लो कमाई बंदा हरी रस की। इन सब की तुलना में कबीर हरि या राम का नाम लेंगे, वो हिंदू अर्थ में बिल्कुल नहीं ले रहे। उनके लिए राम और हरि प्रतीक हैं आत्मचिंतन का। यहां जो सत्य बसता है उसके लिए। धन जौबन थारा थिर नहीं रहना, बाली उमरिया तेरे दिन 10 की। यूथ एंड वेल्थ थारा थिर नहीं रहना, ये मारवाड़ी बीकानेरी भाषा। तुम्हारे ये स्थिर नहीं रहेंगे। बाली उमरिया दिन 10 की, बस दिन 10 की। लेकिन हमें कितना कष्ट होता है बूढ़े होते हुए। बाल जब सफेद हो जाते हैं तब हम उनको डाई करते हैं। There is so much denial linked with aging. We all know it, whether we are 30 or 40 or 70. है कि नहीं? Just yesterday I was listening to a talk by Pema Chodron. तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात की। She said, फूल खिलता है और कुमला जाता है, ये तो कुदरत का नियम है। Why take it so personally? हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं हर चीज। मैं बूढ़ी हो रही हूं, मेरे बाल, मैं हर जगह सेल्फ चेरिशिंग। जम के दूध पकड़ ले जावे, खबर लेवे तेरे नस नस की। दिस इज द बिगेस्ट गुरु फॉर कबीर। जम, इम्परमानेंस, ये आपको सब चीजें सिखा देता है। कहत कबीर, यदि आप सीखने के लिए राजी हो तो, नहीं तो वापस वही चक्कर चक्कर। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, तब तेरे बात वहां नहीं तेरे बस की बात। So it's very simple, beautiful, deceptively simple lyrics with such profound meanings. मुझे बनारस में एक पान वाला मिला था मेरे रिसर्च के दौर में, जिसने कहा कबीर ने तो गागर में सागर भरा है। एक छोटे से गागर में, एक दोहे के आकार में, 2 वाक्यों में उन्होंने एक पूरा सागर भर दिया। So these seem like very simple, obvious truths. Of course we are going to die, but let it hit you. Let its import touch you. एक और मुझे कबीर पंथी मिले थे जो कह रहे थे कि आजकल लोग चोट प्रूफ हैं। उनको चोट ही नहीं लगती, तो हम थोड़े चोट काबिल, खाने के काबिल हो जाएं। सदगुरु चढ़े शिकार पे, हाथ में लाल कबाड़, मूरख मूरख बच गए, कोई मारा संत सुजान। कोई संत था, कोई सुजन बंदी जो चोट खाने के काबिल था, उसको वो सतगुरु की का तीर लगा। मत बांधो गांठड़िया अपयश की, ये माया बादल की छाया, ये माया बादल की छाया। कर लो कमाई बंदा हरी रस की रे, मत बांधो मत बांधो गांठड़िया अपयश की रे, मत बांधो गांठड़ी अपयश की। ये माया बादल की छाया,
जौबन थारा थिर नहीं रहना जौबन थारा थिर नहीं रहना धन जौबन थारा थिर नहीं रहना धन जौबन थारा थिर नहीं रहना बाली उमरिया दिन दस खीर मत बांधो मत बांधो मत बांधो गाठड़िया अपयश खीर मत बांधो गाठड़ी अपयश की ये माया ये माया बादल की छाया ये माया बादल की छाया कर लो कमाई बंदा हरी रस खीर मत बांधो गाठड़िया अपयश खीर मत बांधो गाठड़ी अपयश की You can join in. It's a very simple song. Folk songs are meant to be joined in on. मत बांधो गाठड़िया अपयश खीर मत बांधो गाठड़ी अपयश की जम के दूत पकड़ ले जावे जम के दूत पकड़ ले जावे जम के दूत पकड़ ले जावे खबर ले मेरे तेरे नस नस खीर मत बांधो गाठड़िया अपयश खीर मत बांधो गाठड़ी अपयश की ये माया बादल की छाया ये माया बादल की छाया ये माया बादल की छाया कर लो कमाई बंदा हरी रस खीर मत बांधो गाठड़िया अपयश खीर मत बांधो गाठड़ी अपयश की कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कहे कबीर कहे कबीर सुनो रे मेरे साधो कहे कबीर सुनो रे भाई साधो कहे कबीर सुनो रे मेरे साधो सुन लो यार तब तेरे बात नहीं बस खीर मत बांधो गाठड़िया अपयश खीर मत बांधो गाठड़ी अपयश की ये माया बादल की छाया 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 कर लो कमाई बंदा हरी रस
ये अगला भजन कच्छ में जागरिया मंडली से सुना सीखा। हंसा चालो सतगुरु जीना देश मां, हम सब हंस, क्योंकि हम सबको उड़ना है अकेले। हम सब हंस, क्योंकि हम में वो काबिलियत है कि हम इस सब पछड़े से दूर चीजों को एक दृष्टा भाव के साथ देख सकते हैं। हम कर सकते हैं वो। हम हंस हैं, हम मेंढक नहीं हैं। हम में उड़ान भरने की ताकत है। तो वो दृष्टा भाव हंस जो लाता है, बर्ड्स आई व्यू। हंसा चालो सतगुरु जी ना देश मां, जिया काग पलटी ने हंस होए। उस सतगुरु के देश में जहां इस प्रकार की ज्ञान की बातें होती हैं, जैसे यहां हो रही हैं आपके लिए 5 दिन से, हम में वो जो कागापन है, कौवा, वैसे कौवा बेचारा, उसका कोई दोष तो नहीं है, लेकिन रूपक के तौर पर कबीर कौवा और हंस की तुलना कर रहे हैं। कभी कभी वो बगुले और हंस की तुलना करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि इस ज्ञान की ताकत है कि आप में वो जो कौवा है उसको बदल के आपको हंस बना सकता है। हंसा बिजलियारी झलमल हुई रहा, तिया मेहुलिया वर्षे रे अखंड धार। बहुत सुंदर रूपक है ये। जैसे अभी बाहर मौसम हो रहा था, वैसी ही बात है इसमें। सतगुरु के देश में बिजली झलमल झलक रही है। There's a light, lightning, crackling, और मेघ बादल अखंड बरस रहे हैं। हंसा पियो रे पियाला, हरि रे नाम रा। आवागमन मट जाए, ये जुड़ना बिछड़ना ये सब खत्म हो जाता है। हंसा पियो रे पियाला, निर्भय नाम रा। अगर चंदन केरा हलवले, तेमा वाव्यो मोतीड़ा नो बीज। अब पूरा रूपक इस भजन में है खेती का, जो कि हम सब बिछड़े हुए हैं। यहाँ कितने खेडूत हैं इस ऑडियंस में, शायद एक भी ना हो। कोई करता है गार्डनिंग यहाँ? तो आप जानते हैं ये पूरा इमेज जो खड़ा होने वाला है, वो कह रहे हैं कि हल चल रहा है चंदन का, और उसमें मोती के बीज आप डालिए। मोती उगेगा किसका? आपकी फसल किसकी होगी? हरि के नाम की। शील संतों सिंचनहार। शील संत जो लोग होते हैं वो ऐसी फसल, a फसल of meditation, a फसल of contemplation, a फसल of हरि नाम, इसके मोतियों की फसल को पानी वो देते हैं जो आप यहाँ 4 दिन से दे रहे हैं इस फसल को पानी। हंसा मोतीड़ा पड़ियो रे मैदान मां। ये मोती, कौन सा मोती? सांस का मोती मैदान में पड़ा है, खलक उलांघ्या जाए। लेकिन इसका कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। कोई आप सोशल फंक्शन में आप जाते हैं, किसी वेडिंग में, कहीं और, तो लोग पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, है ना? आपका मूल्य वो आपके बंगले, आपके गाड़ी, आपके एड्रेस से आंकेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके हीरे जो श्वास हैं उसकी परख है आपको, वो धन की परख है आपको, तो आप धनवान हैं। Nobody has any value for this wealth that we have, जो हम बिखेरते जाते हैं। So he says, खलक उलांघ्या जाए, ज्यारे आवे हीरा नो पारखूं,
तब हीरला वेचाए मोंगे मोल। जब इसकी परख आएगी, आपके श्वास की परख, इस हीरे की परख, तब आप इसका सही मोल कर पाएंगे और you will transact a bargain with every breath. काया रे नगर में, इस काया के नगर में देखो उलट सुलट बाजार है। क्या है ये बाजार? ब्रेथ का बाजार। उलट सुलट, उलट सुलट। आप सौदागर होई रहा, वनज हीरा मोती लाल। जब आप खुद अपने हीरों के सौदागर बन जाएंगे, उसका मोल जान जाएंगे, तब तो द ट्रेड इज गोइंग टू double, triple. Your business will prosper. You will consider yourself the most blessed and fortunate and wealthy person. आवंत जावंत हरि ने ओढ़ो, ये है कबीर का हरि। आवंत जावंत हरि ने ओढ़ो, जो आ रहा है, जो जा रहा है, उस हरि को पहचानो। तेमा वार ना फेर लगा, इसमें देरी मत करो। हंसा देव डूंगरपुरी बोलिया, जा जन धन घड़ी ने धन भाग। जिन लोगों ने इस घड़ी का धन पहचान लिया, उनके भाग धन्य हो गए। गला मुझे कुछ तकलीफ दे रहा है, तो इस वक्त भी मुझे याद करना चाहिए कि कबीर कहते हैं, कहें कबीर, हरि कैसा है? जब जैसा है तब वैसा है। तो इस पल की ये सच्चाई है, यही है मेरे लिए हरि। हंसा चालो सतगुरु जी ना देश माची। हंसा चालो सतगुरु जी ना देश माची। दिया भाग पलटी ने हंस
की जय माँ आभा का मन माटी जाय रे हंसा पियो रे पियाला निर्भय नाम राजी। ये अगला भजन आपको ताजुब होगा, हमने लाहौर में सुना। लाहौर में हम एक कबीर फेस्टिवल के लिए इनवाइटेड थे, हमारी पूरी टीम गई थी 2014 में। अब तो ये बातें नामुमकिन हो गई हैं। और वहां कबीर पंथियों की एक मंडली आई थी चोलिस्तान से, और उनके मुख से हमने ये भजन सुना। ओढ़ ले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो तेरो नाम आदिरो। हम बहुत 16 सिंगार करते हैं, हम ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं, हम तिलक लगाते हैं। देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी क्रिएट आउटर मार्कर्स फॉर हु वी आर। कबीर एक अलग किस्म के 16 सिंगार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुहागन बनना है यदि उस तत्व के साथ मिलना है आपको। सुहागन यानी वो जो मिल जाती है अपने पिया से। तो ज्ञान का गजरा ओढ़ लो और अपना नाम धरो आदि, आदि नाम। ये नाम नहीं कि अय्यर या अयंगर या खान या राम, ये तो बहुत सतही बातें हैं तुम्हारे अस्तित्व के लिए। तुम्हारा आदि नाम क्या है, उसको खोजो, उसको धारण करो। पैर ले सुहागन ज्ञान गजरो, इकतारा हार दयारी कर पीठी। अब सजावट कैसे हो रही है इस सुहागन की? आपके रूह की एकता का हार। सब में वही तत्व है, कोई भेदभाव ना करें यहां से उठ के जाकर प्लीज। तब हम काबिल बनते हैं कबीर के सत्संग के लिए। एकता का हार दयारी कर पीठी, पीठी करुणा की, हर बंदे के लिए करुणा। जो हीलिंग के लिए राजी भी ना हो, जैसे श्रेयांस भाई ने कहा, उसके लिए भी करुणा। That's where he is or she is. सुरत नुरत रो सार गाजरो। आपकी चेतना, आपके ध्यान, आपके अटेंशन से अपने आप को सजाओ। They look so beautiful, those people who have a ठहराव about them, है ना? उनके चेहरे पे नूर होता है। साधारी संगत कर ले, हरि रीतु भक्ति कर ले, तब मिले रे तने साहिब नजरो। तुम्हारे दूल्हा साहिब, इस सत्य की एक झलक तुम्हें तब मिलेगी। प्रेम पलीतारी भाई ओढ़ ले चुनरिया, प्रेम की चुनर ओढ़ ले। आप रे साहिब रो कर मुजरो, और फिर तुम मुजरा करो अपने साहिब के लिए। ऐसे सज धज के प्रेम, करुणा, ज्ञान आदि नाम से सज के फिर मुजरा करो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, वर पायो मैं करतार आदिरो। The doer, not these doers, you, me, I did this, you did that. The doer. That truth, वो रित जिसमें हम खेल रहे हैं,
उस करतार को मैंने वर बना लिया आज, कबीर कह रहे हैं। ओढ़ले सुहागन ज्ञान गजरो, पहरले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो रे तेरो नाम दिरो, पहरले सुहागन ज्ञान गजरो। ओढ़ले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो रे तेरो नाम दिरो, पहरले सुहागन ज्ञान गजरो। एक तारा हार तैयारी कर पीठी, आहा ओ, एक तारा हार तैयारी कर पीठी, आहा सूरत नूरत रोदार गाजरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो रे तेरो नाम दिरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो। साधारी संगत कर ले, हरि ऋतु भक्ति कर ले, आहा ओ, साधारी संगत कर ले, हरि ऋतु भक्ति कर ले, आहा जब मिले है तने साहिब नजरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो रे तेरो नाम दिरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो। प्रेम पलीता रे भाई ओढ़ने चुनरिया, आहा ओ, प्रेम पलीता रे भाई ओढ़ले चुनरिया, आहा अपने साहिब रो कर मुजरो, ओढ़ले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो रे तेरो नाम दिरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो। कहिया कबीरा रे भाई सुनो मेरे साथ हो, आहा ओ, कहिया कबीरा रे भाई सुनो मेरे साथ हो, आहा बड़ पायो रे कर तार याद रो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो रे तेरो नाम दिरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो, ज्ञान गजरो रे तेरो नाम दिरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो, पैरले सुहागन ज्ञान गजरो, ओढ़ले सुहागन ज्ञान गजरो।
we sunaओ you. How many Bengalis in the audience here? Chalo, then I'm safe. Shriparna is a Bengali, but I'm not. I'm not a native Bengali speaker. But मुझे पार्वती बाउल के साथ सोबत मिली कुछ वर्ष और उनसे मैंने कुछ बाउल सॉन्ग, बाउल गान सीखे. तो let's do kitchen. I want to relate to what I heard. मैं 10-15 मिनट पहले यहाँ आई, आप सबसे श्रेयांश भाई बात कर रहे थे. And he was saying, डॉक्टरों के चक्कर खाने के बजाय, इधर उधर भटकने के बजाय इस शक्ति को साध लो जो आपके अंदर है. This Baul poet says something similar. चिंता रोगेर औषध किछु. चिंता का जो रोग है, the malaise, the disease of worry, इसका कोई इलाज है क्या? सवाल पूछ रहा है. तोरा बोले दे आमारे, बता दो मुझे, क्या इसका कोई इलाज है? प्रभाते निशीते चिंता, चिंता दी प्रहरे. सुबह उठती हूं तो चिंता, रात सोने जाती हूं तो चिंता, दोपहर को चिंता. चिंता रे छाड़ ले अमाए, चिंता तो ना छाड़े. मैं चिंता को छोड़ भी दूं तो चिंता मुझे नहीं छोड़ती. Are we relating to this? चिंता होइते चिता भालो. चिंता से तो चिता अच्छी. मोड़ा मानुष पूड़े. चिता मरे हुए मनुष्य को जलाती है. जीवनते जलाई हमारे, लेकिन चिंता ऐसी हरामी चीज है कि वो जीते हुए को जला डालती है. आपका सारा पोटेंशियल, ऑल योर एनर्जी इज फ्रिटर्ड इन चिंता. सखी औषध किछु, बार बार सवाल आएगा, औषध कोई इलाज है? बताओ. शरत is the Baul's poet's name. शरत बोले चिंता छाड़ा के हो नौए संसारे. वो कह रहे हैं कि एक भी बंदा नहीं है इस दुनिया में जो चिंता रहित हो. जारे चिंती ले जाए भवो चिंता, तुमी चिंता करो तारे गो. अब वो हीरा देते हैं आपको अंत में एक संदेश कि तुम उसका चिंतन करो जिससे सब भव की चिंता मिट जाए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. चिंता और चिंतन दोनों रिलेटेड वर्ड्स हैं, और अंग्रेजी में भी ये सही बात है, क्योंकि हम कहते हैं आई एम वरिड, आई वरी, और वो जो जपमाला है उसको अंग्रेजी में वरी बीड्स कहते हैं. तो आप अपनी एनर्जी कहाँ डाल रहे हैं? चिंता में या चिंतन में? उस चिंता में, चिंतन में जो आपकी सारी चिंताओं को दूर कर सकती है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम. चिंता का रोग. औषध किछु आशेनी संसारे, तोरा बोले दे आमारे, तोरा बोले दे
Asheni সংসারে তোরা বলে দে আমারে তোরা বলে দে আমারে চিন্তা রোগে হইতে চিতা ভালো চিন্তা মোড়া মানুষ পুড়ে জিয়ন্তে জ্বালাই আমারে সখীরা
तोरा बोले हमारे चिंता रोगेर औषध কিছু আসেনি সংসারে সখী তোরা বলে দে আমারে তোরা বলে দে আমারে I'm going to take you into the world of Shah Latif with a Sindhi song. Any Sindhis in the audience here? Okay. आपने शाह लतीफ का नाम सुना है? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई. He is considered one of the greatest Sufi poets of the Sindhi language. शाह लतीफ अपना कलाम लव लेजेंड्स के आधार पर लिखते थे. आप सबने हीर रांझा का नाम तो सुना होगा. यस. आप में से कितनों ने सोहिनी महिवाल का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ सस्सी पुन्नू? How many of you have heard of मारुई उमर? तो मैं आपको उमर मारुई की दास्तान पहले थोड़ा सुनाऊंगी और फिर हम ये शाह लतीफ का कलाम गाएंगे. मारुई एक रबाड़ी लड़की थी, गांव में रहती थी, जिसका नाम था मलीर. उसका वतन पास के एक राजा उमर ने उसकी खूबसूरती देख के उसको कहा कि तुम मेरे महल आ जाओ, मेरी रानी बनो. तो उसने कहा नहीं, मैं यहाँ ठीक हूं. तो वो उसको किडनैप करके ले गया अपने कोर्ट, अपने फोर्ट में कैद कर दिया उसको और कई साल तक उसको वहीं कैद रखा. रोज उसको कोई लालच देता कि मैं तुम्हें मेरी सबसे पटरानी बनाऊंगा, या धमकाता उसको. लेकिन मारुई तस से मस नहीं हुई और 10, 15, 20 साल के बाद उस कोर्ट में कैद में जीवन बिता के आखिर में
उमर ने उसको उसकी मक्कमता को देख के सिर झुकाया और उसको वापस मलीर ले गया। कहानी बहुत साधारण सी है, लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरह से इसको शाह लतीफ एक रूपक बनाते हैं। मलीर क्या है, मारुई कौन है, ये कोट, ये फोर्ट्रेस क्या है, उमर कौन है, ये एक बहुत गहरा राज है। राज तो नहीं, सूफियों को जैसे कहते हैं, एक तो जाहिर बात होती है, दूसरी बातिन। बातिन उसका छिपा रहस्य होता है। साधारण तौर पे ये एक पेट्रियोटिक टेल है और वतन की याद की कहानी के रूप में इसको याद किया जाता है। सिंधी कौम इसको बहुत याद करती है। आपको मलीर सोसाइटी कहीं जगह, कई कई जगह में मिलेगी जहां से सिंधी सेटल्ड आफ्टर पार्टीशन। बट फॉर शाह लतीफ, मारुई इज द रूह। आपका सोल जो यहां आया, वो मारुई वो रूह है। जो कैद में वो है, वो ये शरीर है, ये फोर्ट्रेस। और इस फोर्ट्रेस का राजा उमर, उसकी नफ्स, उसका अपना ईगो, स्मॉल सेल्फ, उसका अपना छोटापन, जो उसको ललचाता रहता है, धमकाता रहता है, keeps throwing her into self-doubt or keeps enticing her into entanglements in the world. Okay? ये है उमर। और मलीर वो वतन, वो जगह जहां आप सिंपल हो जाते हो, आप सिंप्लीफाई हो जाते हो। बहुत साधारण सी जगह, stripped of all your complexities, your possessions and your possessions which become burdens, right? Then you need to protect them. Your identity, which is another burden because you have to protect your identity then. Stripped of all that, living in utter simplicity in Malir is your soul. तो देखिए कितनी लेयर्ड कहानी है ये। और आप शाह लतीफ का कलाम सुनेंगे तो आपको कोई अंदेशा नहीं होगा कि इसका इतना गहरा मीनिंग है। सो इसमें मारुई याद कर रही है अपने वतन को और कह रही है कि ये मेरा शरीर गिर जाएगा तो उसको उमर ले जाना वापस मेरे माड़ुओं के बीच, मेरे वतन के लोगों के बीच। जिन ने वतन विसारियो, जिन विसारियो हैफ्तिनी के खोए। जिन लोगों ने अपना वतन, वो सिंप्लिसिटी, दैट आदि नाम जिसकी बात पहले हो रही थी, उसको भुला दिया, विसार दिया। लानत हो उस पे, हैफ्तिनी के होए। मिट्टी खो मलीर जी मन मथे में होए। उस जगह की जो रगेड सिंप्लिसिटी है, उसके कुएं की मिट्टी मेरे सिर में मैं डालूं, वो मेरे लिए इतना प्रिय है। मारुन माड़ू मोकलियो काल ना आयो कोई। शी इज yearning because she is in samsara, right? But a part of her is yearning to go home, yearning to be simple, simplified. So she says, they sent someone to call for me, but no one has come. लाल हूँ लाल लतीफ चवें उत्ते सदा सावन होए. He says, Latif says, जो कई बार लाल हो चुके वो लतीफ कहते हैं. लाल हो जाना यानी उस रत्ता हो जाना. लाल हूँ लाल लतीफ चवें, उस जगह में, मेरे वतन में जहां से मैं, मेरी रूह आती है, वहां सदा सावन होए. ऐसी एक मिन्नत करते हैं.
लडे विंदै लोए जिते मोइजा माडू. लोई इज शरीर. जिते मुझा माड़ू, जहां मेरे लोग बसते हैं वहां ले जाना इस शरीर को. लडे विंदै लोए जिते मुझा माड़ू. ही लडे विंदै लोए जिते मुझा माड़ू. जिते मुझा माड़ूड़ा जिते मुझा सांगे. जिते मुझा
Yes. Lal, Lal has so many meanings. It's such a layered word. Kabir कहते हैं, and I hear you, Jhule Lal has a very specific meaning for the Sindhis. पर लाल होना यानी क्या? लाल हो गए शाह लतीफ. उसका अर्थ. Let's catch the deeper meaning. That's very important. Another Sindhi song. Very simple. Very simple.
नकी जन्नत नकी दोज़ख नकी हूर खफन यूसुफ नकी जन्नत नकी दोज़ख नकी हूर खफन यूसुफ असां जो इश्क जैसा है वो रहमान ता चाहियो नकी झेड़ा नकी जंगू नकी शैतान ता चाहियो असां सूफी आयो माण्हू असां सिंधी आए माण्हू अमन अमान ता चाहियो नकी झेड़ा नकी जंगू नकी शैतान ता चाहियो असां सूफी आयो माण्हू असां सिंधी आए माण्हू अमन अमान ता चाहियो नकी झेड़ा नकी जंगू नकी शैतान ता चाहियो नकी शैतान ता चाहियो नकी शैतान ता चाहियो क्या बात है, क्या बात है, जय हो. What? I'm going to sing a Gujarati song. How many Gujaratis here? Okay. काफी आप में से कई लोगों ने ये फरमाइश की कि ध्रुव दादा की ओचिंतु कोई मने. So we will do that song now. And this will be our last song. So please join in. It's a very beautiful, simple song. आप में से कितनों ने सुना है ओचिंतु? Okay, so I'll give the context. ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે અને ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે તો આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. So Dhruv Dada is a very popular poet and writer of Gujarat. और वो कहते हैं कि ये गाना जो really has it's a very very popular song in Gujarat. बहुत लोग जानते हैं इसको. वो कहते हैं कि ये गाना उनको आया, आज भी कहते हैं मैंने लिखा नहीं, ये आ गया. और कैसे आया? एक दिन वो अपने शोध के लिए शोध यात्रा करते थे, पद यात्रा. तो वो चल के जा रहे थे एक
आदिवासी क्षेत्र में, गुजरात में, जहाँ बहुत गरीबी थी और बहुत सिर पर सूरज तप रहा था, गर्मी के दिन थे और वो चल के जा रहे थे खेत के नज़दीक, और दूर से उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे हाल बड़ी मुश्किल से हल जोतने की कोशिश कर रहा है खेत में। तो उनके दिल में दया आ गई, तो बूढ़े आदमी के पास से गुजरे तो कहा उन्होंने, दादा केम छे? और उस आदमी ने पलट के ऐसी खिलखिलाती हंसी के साथ जवाब दिया, हे हमें हेकला, हमें बरोबर, और इतनी 100 वॉट स्माइल के साथ। तो ध्रुव दादा कहते हैं कि वो थोड़ा चौंक गए, क्योंकि उनका अनुमान कुछ अलग था कि ये पीड़ित बंदा है, इसको दया की जरूरत है, लेकिन उसमें उन्होंने एक आनंद देखा, झलका, जिसको व्यक्त करने के लिए ये गीत रचा उन्होंने। तो इसमें गुजराती में कह रहे हैं कि अचानक से कोई अगर मुझे रास्ते मिले और पूछे कि तुम कैसे हो, तो मैं कहूँगा कि मैं तो दरिया की मौजों की तरह लहरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सर पर कुदरत का हाथ है। फाटेला खिस्सानी आड़मा मुकी छे हमें छलकाती मलकाती मौज। इस फटे हुए पॉकेट खिस्सा में मैंने छिपाए हैं बहुत सारे छलकते मलकते दरिया की लहरें, मौज की लहरें, आनंद की लहरें। मेरे ख्याल से ये भी हिंट दे रहा है कि अब बस तो कहाँ मैं थी? એકલો ઊભું ને તોય મેળામાં હોઉં એવું लाग्या करे छे मने रोज। मैं भले अकेले हूं, लेकिन हरदम मुझे लगता है मैं तो मेले में हूं, अपनी मौज में मस्त। आंखों में पानी तो आवे ने जाए, नथी भीतर भीनाश धती ओछी। आंखों में पानी भले आएगा और फिर चला भी जाएगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो भीनाश है, जो सीलापन है, वो कभी कम नहीं होता। वध घट ना कांठाओ राखे हिसाब। ये उड़ती और गिरती जो टाइड्स होती हैं, वध और घट, गुड फॉर्च्यून बैड फॉर्च्यून, भले भाग बुरे भाग, इन सब का भले कांठा, कांठा यानी शोर, उसका हिसाब तो शोर रखेगा ना। समुंदर को उसकी परवाह नहीं होती। वध घट ना कांठाओ राखे हिसाब, नथी परवाह समंदर ने होती। ओचिंतु कोई मने रस्ते मळे अने धीरेथी पूछे कि केम छे, तो आपणे तो कहिए कि दरियासी मौजमा उपरथी कुदरतनी साथ में गाइएगा। ओचिंतु कोई मने रस्ते मळे ने कदी धीरे थी पूछे कि केम छे, तो आपने तो कहिए के दरिया सी मौज मां ने ऊपर थी कुदरत नी रहम छे। चिंतु कोई मने रस्ते मड़े ने कदी धीरे थी पूछे के केम छे, आपने तो कहिए के दरिया सी मौज मां ने ऊपर थी कुदरत नी रहम छे। फाटेला खिस्सानी आड़मा मुकी छे हमें छलकाती मलकाती मौज। फाटेला खिस्सानी आड़मा मुकी छे हमें छलकाती मलकाती मौज। एकलो
થી કુદરતની રેમ છે ઓચિંતો કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાની મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે ये बात सब लोग याद रखना मैं बहुत याद रखती हूँ इस बात को क्योंकि मैं रोती भी बहुत हूँ आंखों में पानी तो आवे ने जाए नदी भीतर भी नाश थती ओछी आंखों में पानी तो आवे ने जाए नदी भीतर भी नाश थती ओछी वध घटना काठा हो राखे हिसाब नथी परवा समंदर ने होती सूरज तो उगे अने आठमी जाए मारी ऊपर आकाश एम नेम छे आपने तो कहिए के दरिया सी मौज में ऊपर थी कुदरत नी रेम छे चिंतु कोई मने रस्ते मने ने कदी धीरेથી પૂછે કે કેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે ઓ ચિંતુ કોઈ મને રસ્તે મળે ને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ને ઉપરથી કુદરતની રેમ છે Okay, how many Punjabis in the audience? Okay, one last song. Let's do Jhom, okay? Okay. Whatever you say. ਪੀੜਾਂ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਐ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੂੰ ਝੂਮ 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 ਤੂੰ ਝੂਮ 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 ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣੀ ਛਾਵਾਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਐ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬਸ में कुछ भी नहीं है दिल ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੂੰ ਝੂਮ 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 झूम 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 मैं राजी अपनी जात तू मैं उसे अपनी औकात तू
दुनिया फिक्र नहीं मेरी मैं निकल गई घर माना तू मैं दीवानी कुछ नहीं जाना मस्त होके गावा दुनिया राजी कर भी लई है फिर भी चैन नहीं आना सारी खुशियां मिल जा बढ़ते पीछे की रह जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नुए समझावा तू झूम 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 शर्माना दुनिया राजी कर भी लई है फिर भी चैन नहीं आना जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नुए समझावा तू झूम 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 भीड़नु में सीने लावा ते मैं हंसदी जावा धुप्पने नल लड़ लड़ के मैं लबिया अपनी छावा सुख भी अपने सुख भी अपने मैं तो बस है जाना तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नुए समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 Thank you. This is really difficult to even play now. Marathi. Antari Jyoti. The one that Jyoti. There's some regional diversity. I know. थैंक यू सो मच बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच थैंक यू सो मच थैंक यू Okay. Yeah. Okay, sure.
um, आपको ये बानी, ये कलाम, ये धुनें अगर छू गई तो जिन गुरुओं से मैंने सुना है और सीखा है उनको हमारे अजब शहर वेब आर्काइव पर जाकर सुने. Such outstanding artists. I have had the privilege to, and I shouldn't really call them artists, they have been my gurus. So many of them. Malwa, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Kutch, Sindh. And they are all archived in this website and YouTube channel called Ajab Sheher. Yes, and if you want to listen to me, I have my own YouTube channel. But we do a lot of work with the living traditions of Sufi Bhakti poetry and music. और आजकल हम स्कूलों में इन musicians को ले जाने का काम कर रहे हैं in a schools program called Shabad Shala. And we are now in 46 schools. And that curriculum will soon go live on our website. It's a completely open source curriculum to inspire people to sitting anywhere in the world to take it into classrooms and group situations. So browse our websites, enjoy this music, let it nourish your soul, and let's bring this into our lives. Let's work for peace in the times we live in. It's really important. Your website. What's your app? YouTube channel? My name, Shabnam Virmani. जरूर. Just give him the mic. Pull it. किता करा तेरा शुक्रिया दाता तेरे एहसान दा किता करा तेरा शुक्रिया दाता तेरे एहसान दा तू बख्शिए मैनू जिंदगी मैं क्यों न करा तेरी बंदगी तू बीमार नू राजी किता जिते नुस्खा न चलिया लुकमान दा किता करा तेरा शुक्रिया. थैंक यू. I request Abha and Shubha to please come on the stage to facilitate Shabnam ji and her colleague. What's your name? Shriparna. Yeah. Abha and Shubha, please come. Please come. Okay. All right, so Chetna, you can come to felicitate her. आप भी आइए, come.
Thank you. Thank you, Shabnam ji. We had such an amazing time, such a soulful time. Thank you. Thank you. So friends, we'll meet again at 9:30. 9:30 we'll meet below the pyramid. Once the volunteers will tell you when to enter the pyramid. Right? First the healies will come in, and later on, after some time, then the healers will come in. So once you are here, once you gather down the pyramid, please maintain absolute silence. Right? Try to be in your zone, try to be in your meditative state in complete silence. Okay? Yeah. See you then soon. Thank you. Thank you. सबका डिनर सभी प्लान्स का A to E सबका कैफेटेरिया में वी विल प्रोसीड टू कैफेटेरिया फॉर डिनर एम्फी थिएटर यस एम्फी थिएटर नॉट कैफेटेरिया एम्फी थिएटर में हमारा सभी का डिनर है सभी प्लान्स का ABCDE ठीक है और उसके बाद वी आर मीटिंग एट 9:30 वी आर मीटिंग हियर फ्रेंड्स वन मोर रिक्वेस्ट फ्रेंड्स जिन्होंने हेडफोन्स लिए हैं अपने यूज करने के लिए मेडिटेशंस के लिए प्लीज बिना भूले जरूर से कल वो सबमिट कर दीजिएगा आप जैसे निकले उससे जस्ट पहले जैसे ही मेडिटेशन लास्ट होता है हमारा उसको सबमिट करना जरूरी है याद रखिएगा प्लीज थैंक यू या आज रात को आपको वो हेडफोन्स चाहिए जिनको जो लोग भी यूज कर रहे हैं ना आज रात को जरूरी लेके आइएगा कल फिर उसको सबमिट करना है मॉर्निंग के जो हाँ तो साउंड हीलिंग ओके ठीक है तो कल सुबह भी हमारा लगेगा उसके बाद फिर जैसे जैसे आप लोग मूव आउट करते जाएंगे अपना सबमिट करके जाइएगा प्लीज थैंक यू सो मच
welcome all the Heelys. So friends, just some little bit brief. So I want you all to lie down with a feeling of complete gratitude and surrender. Right? Today we are grateful for this opportunity that we are getting energetic support in a pyramid like this with a powerful group of people. But again, we have to understand that we are healing ourselves, right? Our body heals ourselves. They are only giving an energetic support to change the energy and frequency of information of your body. But eventually, it's more about you. You'll be more receptive when you are working on yourself. So today, as you're also going to heal yourself, first we'll start with brain coherence, heart coherence, and then you will heal yourself. And then you'll be open to receive the support, the energy flowing through your body, through the hands of all these healers. But also we take it with the responsibility that going forward, as we go back in our day-to-day life, we will make a change in our lives. Most of the disease or health issues are psychosomatic. So we will work on our root cause, on our thoughts, on our emotions, on our behaviors, on our patterns, on our belief systems, and maybe meditate regularly to work on that. So just do that commitment, and wish you all the best. Happy healing. Thank you. Thank you all. Right, so let's begin. Let's start. We can allow all the healers to come in now. Keshav, we can start the fans also. Yeah. You can increase the music volume and start the fan. Hope all the Heelys have written their name on the card. Name and number. You may just write your name because anyways the card is with you. Yeah, better to write name and number. Yeah, name and number on the card. All the healers, just be mindful of the little pyramids on the ground. All the healers can greet the Heelys. Heelys can greet all the healers as and when healers join you. Keshav? Keshav, increase the volume.
music one. All the healers may greet the healies. The healies may greet all the healers. Aisha.
healers who are more than a group of 6. If there are any circles next to you which is empty, you can please move there. So at least there's a circle of 6 in each group. Please cooperate. Two from here can move here. Excuse me. Settle down. We're going to start in 2 minutes. Friends, we'll start with brain coherence, then we'll go into heart coherence, then self-healing, and then we'll open our eyes, rub our hands, activate our hands, and then direct our hands towards the healing. After some time, you may again close your eyes, bring your hands back, and with the feeling of gratitude, we'll end the healing session. All right, now as you settle down, I want you all to gently take a comfortable position, clasp your hands, cross your legs, and gently close your eyes. Those who are doing in Hindi can put on their headsets. जो लोग हिंदी में कर रहे हैं कृपया अपने हेडसेट्स पहन लें। आइए शुरू करें। आंखें बंद, हाथों में हाथ, पाँव में पाँव।
invite you to gently shift your awareness to your nostrils. Take one deep breath in through your nostrils, and as you breathe out, allow yourself to relax. And one more slow, steady breath in, and as you exhale, let your entire body relax. Gently shift your awareness from the world around you to the world inside you. At this moment in time, nothing else exists except your breath. Just be with your breath. Allow your breathing to be normal, natural, simple, and effortless. With every inhalation and every exhalation, feel yourself becoming more and more relaxed. Feel a gentle wave of relaxation sweeping through your entire body. Right here, in this present moment. Slowly begin to drop your identity, your personality self, your ego. Allow the analytical mind, the constant thinker, the doer, to rest now. There is nothing it needs to solve, nothing it needs to manage. Simply allow yourself to become pure awareness. Withdraw your attention from all people, places, things, and time, and rest gently with your in-breath and out-breath. Feeling your whole body sink into the present moment. As you observe each breath entering and leaving your nostrils, begin to sense the subtle temperature of the air moving in and out of your nostrils.
Notice the sensation of the cool air as it flows in and the warmer, softer air as it flows out. Each and every breath is precious. Let not a single breath slip by without your awareness. If any time your attention drifts to thoughts, gently bring it back to the breath, back to the nostrils. With every breath, feel yourself going deeper and deeper and deeper within. Drift inwards, sink deeper into stillness. And now, allow yourself to become nobody. No one, no thing, no place, and no time. Become pure consciousness. Aware that you are aware, resting in this vast, endless field. Allow any remaining sense of self to dissolve into the space. For in order to create from nothing, you must first become nothing. Lose yourself in nothing to become everything.
And now, gently shift your awareness towards the area of your heart center. Allow your breath to move in and out of this creative center. Breathing in more deeply, more fully, and more completely. As you breathe from this creative center, bring your attention to the feelings within your heart. Feel it. Sense it. Notice it. With every breath, you add more life to your heart through your awareness. Energy always follows intention. Where your awareness goes, light naturally flows. With each breath, you activate the center. With each breath, you open your heart. You awaken your heart. As you sense the expansion in this area, allow it to feel limitless. Tune in to a field of pure positive energy. Feel your connection to the source energy. Know that your source is the ultimate resource. Breathe. Feel and gently move into a new state of being. As you rest your attention in the heart, breathe deeply and allow feelings of joy, gratitude, and love to arise naturally.
Be thankful for all that you have. When you're thankful for what you have, the universe will give you more of what you can be thankful for. Feel appreciation blooming within your heart. What you appreciate appreciates. What you feel is what you signal. What you embody, you invite. Allow yourself to feel satisfaction, contentment, and fulfillment. As you drop all resistance, enter the state of acceptance and allowance, and let this energy gently radiate beyond your body into the field. Remember this feeling in your heart. Remember it by heart. And now I invite you to gently shift your attention to any part of the body that requires healing. As you bring your awareness to that space, breathe in and breathe out through it. If there is no specific area calling your attention, simply remain aware of the body as a whole. With every breath, pour more life and energy into this space with your awareness. It is time to return to your natural state of well-being. Breathe in and breathe out. Do not focus on pain or illness.
Focus on wellness. Focus on light, on harmony. Focus on divine perfection, expressing itself through you. Breathe in, breathe out. Your body is composed of trillions of intelligent cells, each one constantly seeking alignment and balance. Every second, old cells are replaced by new ones. Your body is continuously regenerating itself. Your body is the best healing machine. Your body is the greatest healing intelligence there is. The most advanced pharmacy ever created. With every breath, you are activating and rejuvenating every cell in your body. Breathe in and breathe out. With every breath, gently release any resistance your body is holding. Release old unwanted thought patterns, old beliefs, and emotional imprints that no longer serve you. Allow them to dissolve, to release, to move out of your body, your mind, and your life. Breathe in and breathe out. Know that your natural state is one of absolute well-being. And in the absence of resistance, the body naturally thrives. Remember, healing is not about forcing, it is about trusting. Energy responds to love, not effort. Breathe in and breathe out. Release any fear, any hurt, release any anger, guilt, or shame. Release any anxiety,
or any sense of insecurity held within your body. Let it all go. Let it go. Let go. Breathe in. Breathe out. Now, gently shift your attention to wellness. Ask yourself, how would you feel if you were already healed? Feel it. Sense it. Notice it. Allow this vitality, this youthfulness, this sense of ease to become familiar. As your body aligns with source energy, your cells naturally find balance. Breathe in and breathe out. Allow unwanted conditions to dissolve gradually as well-being becomes your dominant state. By releasing resistance a little more every day, you will feel the power flowing through you and the pleasure and comfort of this alignment. Your physical body will respond very quickly to the absence of resistance that you're feeling now. Breathe in and breathe out. There is no physical body, no matter what the condition is, that cannot return to its natural state of well-being. Tune in to the frequency of well-being. And from this place of vibrational alignment, beneficial behavior will be inspired and wonderful things will unfold with great ease. The more ease you feel, the less resistance you hold. Feel ease washing through each and every cell. Breathe in and breathe out. Know that you are a vibrational match to well-being, and your body reflects that alignment. With this new state of being, what choices would you make? How would you live? How would you feel? Breathe in and breathe out. Every muscle,
every nerve, every gland, every bone, every cell, every organ is now in perfect balance, nourished, supported, and infused with love. Remember this feeling. The longer you remain here, the more this state becomes your new normal. Live this future now. Feel the appreciation of what is and feel the eagerness of what is coming. There is great love coming for you. Your beautiful heart has an immense capacity to love yourself and to love other people. It's easy for you to receive love and to give love. The more you give, the more you receive. The more you receive, the more you give. You are filled and nourished by that loving energy that heals you. Breathe in and breathe out. And now, finally, surrender this creation to the greater intelligence, trusting it to unfold in perfect order for your highest good. Breathe in and breathe out. And now, slowly, gently begin to return to the space around you. Take your time. And whenever you're ready, softly open your eyes.
And now, gently lift your palms and start to rub them together. Feel the warmth rising. Feel the current awakening. As your palms heat up, you are activating the pure light of Source within you. Now, slowly separate your palms facing each other and hold them a few inches apart. Feel the space between your palms as you move them closer and further away from each other. Feel the energy flowing between your palms. The dormant energy is now alive, activated, present. You can't see it, but you can feel it. And now, whenever you're ready, direct your hands of light towards the Healy, the beloved soul sitting in the center of the circle. Once your hands are gently positioned, you are welcome to softly close your eyes or keep them open, whichever feels most natural to you. Today, we breathe as one mind, one heart, one consciousness. We feel as one. We heal as one. We love as one. Your hands are portals of light that mirror your vibration. Focus with love and you transmit life. Feel the energy moving, expanding, coming alive. Take a moment to be grateful for becoming a channel for this loving source energy. With every breath, enter deeper into the field of infinite intelligence. With every breath, surrender your mind to the wisdom of your heart, your soul. Let your mind soften. Let your heart lead. Let your soul guide you. Remember, you are not just a body.
your energy vibrating in perfect harmony with the universe. The intelligence that made your body is also healing it now. You are the channel through which healing flows, the sacred bridge between the divine and the human. When your heart is open and activated, and your intention is pure, the divine moves through you. Now, as you hold your hands of light towards the Healy, know this truth deeply. Energy follows your awareness with precision. Let your awareness be love. Let your awareness be compassion. Let that energy wrap them in a gentle embrace of light. These are not just hands. These are instruments of the divine. They are alive with the ancient intelligence that moves through all things. Tune in to the energy of miracles. Feel the miraculous current that flows effortlessly through you. You are a bridge. You are a vessel. You are a reminder that divine light chooses to move through human hands. Tune in to your infinite healing power. Together, we create a current, a wave of healing for the beloved soul sitting in the center. Every cell in their body is now awakening to its original divine blueprint. Old patterns are dissolving. New patterns of health are being installed. Their nervous system is rewiring. Their body is regenerating. Their immune system is radiant, alive, intelligent. Now, visualize in the quantum field that this healing has already happened. Come on, see it.
sense it, feel it. They are already whole, already free, already renewed. Let your hands give life to another life. As you give life to another, your own heart expands. The love you offer is the love you receive. The healing you witness is the healing you allow. There is no separation here, only connection, only coherence, only love. Love knows no limitations. It only amplifies as we give. Time bends to the intention of love. Their future self is present now, smiling through this moment of power. Peace, love, gratitude, compassion, joy. Feel all of it. Trust the unseen. Believe in their becoming. Believe in possibilities. Believe in potentials. Believe in miracles. If you can believe it, you will see it. Hold this state. Hold this love. Hold this energy. Let it move through you. Let it lift you. Let it expand you. And let it move all around you into this room, into the collective field. One coherent moment changing many lives. This is how the world heals.
with an attitude of gratitude. Feel grateful for this divine healing. A grateful heart is a magnet for miracles. The more grateful you feel, the more you broadcast the emotional signature that the healing has already happened. Gratitude is the ultimate state of receivership. Give thanks again for this healing already completed in the field of creation. It is done. It is done. It is done. Feel blessed for the energetic support from all the divine masters, beings of light, spirit guides, your ancestors assisting you in this sacred process. Give thanks for the privilege to give life to another life. Give thanks for this new energy unfolding within you, consuming you, moving all around you. Feel the vitality of this new life. Feel the lightness, the freedom, the carefreeness. Now, stay in the stillness for a few more moments. Allow the space to remain soft, open, gentle. Let the silence integrate everything that you just unfolded. Without words, without any rush. Now, bring your awareness back to your heart, your sacred heart. Place your hands there again.
and feel the gentle pulse of life. Steady, anchored, present. Let yourself take time. Feel the shift. Just breathe. Now, silently whisper from your heart to the person in the center. You are loved. You are whole. You are healed. Feel the love you generated still moving through you. As a living presence, as energy that knows no end. And now, to the Healy, the beloved soul in the center. Your body has heard you. Your cells remember. Your field has been repatterned to a new vibration of wholeness. And to everyone around, this energy you felt, this love you created, is not just for one. It ripples through time and space, touching everyone connected to you, seen and unseen. Now, let's all take one final collective breath together. Inhale, exhale. Be grateful to each other for this divine opportunity. How would you feel if your body is fully healed, fully enabled, fully capacitated? Come on, feel the wholeness. How would you feel if all your dreams come true? Feel it. Sense it. Feel the dream alive in your heart. And when you feel this feeling, you connect your dreams with your heart. How would you walk if it has already happened? How would you breathe? How would you love? Be inspired. Be lifted.
Feel invincible. And radiate your love into life. Breathe. Feel. Smile. And receive the love from all of life. Today, together, we give thanks for this healing already done. Together, we surrender to the higher power, to the higher intelligence. Know this truth. The hand that gives, receives. The heart that gives, receives. Together, we allow, we trust, we receive. And now, whenever you are ready, slowly bring your awareness back to your new body in a whole new world, in a whole new time. Today, you didn't just participate in a healing, you became the frequency of healing. Carry this state with you. In every word, every gesture, every thought. Remember, where your attention goes, energy flows. Where your energy flows, the universe shows. And now, whenever you're ready, you may gently rub both your palms together again.
and gently place them on your beautiful eyes. Now, take a deep breath in, and as you exhale, open your eyes softly. You may gently open your eyes now. You may greet the person in the center with love. Bow to them. Bow to yourself. Bow to your healing circle. Take your time. You may also hug each other. Be grateful for all the divine masters, guides, this pyramid of light, beings of light who all supported this healing circle. This healing circle is now complete. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Take your time. Thank you, thank you, thank you all. Let the healies take time, no rush. This healing may continue throughout the night or through many days and nights. So take your time. Tomorrow morning, we'll meet again inside the pyramid at 7 o'clock for a breathwork session. Along with breathwork, we'll also do the sound healing bath. It's a combined session for total 1 hour, 10 minutes or so. Yeah. So we'll meet again tomorrow at 7 a.m. You may gently maintain the same state, and whenever you're ready, you can leave, or you can communicate with each other. Take your time, and whenever you're ready, you can leave. Thank you. Thank you. Thank you. Friends, if possible, tomorrow, if possible, please be dressed in whites or light color clothings and comfortable clothings, since we are going to have breathwork ke saath sound hi baat ka bhi experience tomorrow. So please take care of that. And अपने headphones जिनके जिनके पास हैं जरूर लेके आइएगा. तो हिंदी में जिनको भी मेडिटेशन करना है कल, तो जिन्होंने जिन्होंने हेडफोन्स लिए हैं ना, नहीं आप तो ऐसे ही करेंगे. ओके, या तो हेडफोन्स की ज़रूरत एक्चुअली नहीं है, तो बस अपने कपड़ों का ध्यान रखिएगा कि कंफर्टेबल कपड़े ज़रूर होने चाहिए, और पॉसिबल हो तो लाइट कलर क्लोथिंग्स या वाइट कलर में. Are healthy.
My body, mind, and spirit are healthy. My body, mind, and spirit